The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. All right, and good morning. It's 11:01, which adds up to 3, which is one of my luckiest numbers. It's day 2 of the IDT crash course. We're going to begin in just about 2 minutes. So wake yourself up. If you have any questions, let me know right away. What's in store for today? I'll tell you all about it in just about 2 minutes from now when we begin. So wake yourself up, get your pen and paper, get your notes out there. You don't need any new notes. You can use the notes you've been using, and we will do this really, really well in about 2 minutes from now. All right, guys, I will upload it to handouts. There are two handouts which are uploaded. You can actually download them. They have continued from yesterday, so in case you were there yesterday, great. But these session plans and this MCQs maybe has some modifications. So I would suggest download these right now in case you're on a laptop or on a phone. Download them and keep it. Of course, you'll be able to see them on the screen in just about 2 minutes. All right, first things first, I've unmuted all of y'all. So in case anyone has a question, you all can shoot it out and I will get the question. So in case you have any doubts, any questions, you can always and always reach out. You can start your audio stream. You can start your mic and talk to me about it. We should begin right now and I'll tell you on the screen, which is going to be visible right now. Guys, on the screen are the chapters that are going to be done today and what is in plan for today. So we are looking at indirect taxes, and that is 40 marks, which is divided into 12 MCQs and 28 descriptive questions. We started off with introduction, which is basically a theoretical chapter. Then we read supply, which basically had some definitions and had 7, 1A, B, C, schedule 1, 2, 3, composite and mixed supply. Then we did charge of GST, you charge your phone when you're at 9% battery. So this was 7 and 8 section. This was section 9, and this had reverse charge. Some lawyers met RBI that entire sentence. Of course, after that, we also did registrations yesterday. Besides registrations, we also tried to do, I think we tried to do value of supply. You realize the value of life when you turn 15. That's what something that we did yesterday. Today, the agenda right now is ITC.
Guys, very important practical concept was practical numerical, both for both of them. ITC, I can guarantee you one question from ITC is definitely there in your paper. The moment we complete ITC is when we do the other chapters. That first important is time of supply, which some people find it very confusing. At about 12 o'clock or at about 1 o'clock, we should be starting time of supply. Important. Why 12 and 1? Because the sections are involved is 12 and 13. 12 and 13 sections here are involved. And then we do things like invoices. One second. I'm not audible. I hope I'm audible now. Pooja, let me know if I'm audible now. All right. So guys, then is invoices plus payment of tax plus returns, which are small chapters. They're not really the biggest chapters, but very, very important and have good amount of marks dedicated. And then we will go to the exemption chapter under section 11. My suggestion is to exemption is don't do the entire exemptions together. Every morning, just do one exemption. From today till let's say the 20th of this month or the next month, every day do one exemption and you'll be sorted. Don't try and plug in all exemption together, or let's say two exemptions every day and you'll be sorted. That's the plan for the day. I'm going to start off with IDT right now. All right, guys. I think I'm having some problem with my internet connection. I hope it's audible now. All right, everyone, just one second. My voice is lagging. Yes, there was an audio issue. You'll be able to hear me now. Guys, just one request. Today's link is a new link. So in case anyone is reaching out to you, please tell them and please share the new link with them as well. All right. Let's begin. Let's begin the new day with a new chapter. Same routine, guys. Same routine. We will do the chapter. We will have a look at some questions and we'll see what else is new. All right. We're looking at a very, very important chapter, which is called ITC. If you have your books open, open them to ITC. Doesn't matter which book you're referring to, doesn't matter at all which book you're referring to. You don't have to change your notes. Everything will be done here itself. So guys, all eyes and all attention on ITC. Lots of shortcuts in this chapter as well. Very, very important chapter, ITC. All right. Guys, I've unmuted all of y'all. So in case you have any questions, y'all can feel free and unmute yourself and ask me that question. All right. Perfect. All right, guys, this chapter called ITC. What is ITC? Input plus tax plus credit. Let's begin, guys. Let's begin. Let's make it a very, very good day. Input plus tax plus credit. ये तीन वर्ड से बनता है ITC. And ITC के लिए we are going to take the company called ITC. Guys, there's a company called ITC. They make cigarettes. Plus they have a hotel. So we'll consider this as an example for this entire chapter called ITC. And please be with me. Guys, when I go and buy a laptop, for my personal use, I went to Vijay Sales. I bought a laptop from Vijay Sales. Vijay Sales gave me an invoice of 1 lakh rupees plus let's say 12,000 GST. I paid 1 lakh 12,000 to Vijay Sales. This is the payment I made. But this laptop was bought by me for personal use. And when Vijay Sales gave me this bill, it was of no use to me because I could not take a credit of this 12,000. This is the tax that I've paid, but because I am taking it for personal use, I could not take a credit of this. On the other hand, for my office, which is registered, let's take we buy a laptop from Vijay Sales, same laptop, same amount, and same amount paid also to Vijay Sales. But now this GST, this tax paid, can be used by my office because it is an input. Because this laptop is going to be used for my business, so it's an input for my business. The tax paid, that is 12,000 I paid, I will get a credit of it.
So for personal purposes, you don't get a credit only and only if you're using it for business purposes, or if you're partly using it for business, partly using it for personal, you get a credit. Now let's understand how this credit will go. Vijay Sales will collect 1,12,000 and pay to the government the 12,000. And because both Vijay Sales and I am in Maharashtra, it's an intra-state sale. So intra-state पे guys क्या लगता है? CGST, SGST. So CGST and SGST. IGST इस पे नहीं लगेगा, so I'm not putting it here. They will deposit 6,000 rupees. 6,000 rupees will be deposited. 1 second. All right, guys, I've shut my video so that the audio quality is better. Let me know if you guys can hear me well. All right, I hope I'm audible better. Perfect. So I'm going to keep my video off and I'm going to put the screen on just like this. All good, guys. Let's begin. All good. So Vijay Sales is going to pay to the government 12,000. Just 1 second. All right, guys. Okay. So this is 6,000 rupees and this is 6,000 rupees, which is paid to the government. Guys, who's bearing this burden? My office is bearing this burden. So against my GST number, they will pay 6,000, 6,000. So in my credit ledger, in my electronic credit ledger, it will reflect that 6,000 rupees has already been paid. See 6,000 for GST and 6,000 for SGST. This will reflect in my ledger. All right. This is just a practical example of how this works. Let's move ahead. Let's move ahead. So we're talking about ITC company and we'll take the ITC company example. We'll not take my example or my company's example. We'll take ITC company example. How do you take input cut tax cut credit? This is basically an advantage. Guys, this is an advantage. I'll tell you how this is an advantage. Let's say CGST and SGST, 6,000, 6,000 was paid. And this is an advantage because ultimately when ITC company, when it will sell goods, let's say it sells goods for 2 lakh rupees, and on that it has to pay let's say GST at the rate of 5%. So 5% of 2 lakh is 10,000. So it has to pay 5,000, 5,000. But it already has 6,000, 6,000. So it can adjust, I can take credit of the 6,000 already paid. So please remember, whenever you pay GST, whenever ITC pays GST, ITC is a hotel, it's a cigarette company. When they pay GST, when you and I pay GST, we can take a credit, and this chapter is all about that input tax credit. Input tax credit section चालू होता है section 16(1) से, and 16(1) tells you only a simple thing that this credit will be given to you only if it is used for the business purpose. Plus, you should be registered. Guys, if today I can see one name here is Stuti Jain. If Stuti Jain, you go buy a laptop, you cannot take credit of that because you're not registered and also because you're not using it for the purpose of business. But if guys if ITC company buys a laptop and they're using it for the purpose of business and they're also registered, so they can take a credit of this. So 16(1) is very simple. You should use the input for business and you should be registered. All right. Let's make ITC company buy some goods. Guys, ITC has a factory. This is ITC's factory where they make cigarettes. This is ITC company where they make cigarettes. So when they supply, this is their outward supply. And this is their inward supply. This is their input. Input में क्या क्या ले रहे हैं? वो लोग raw material खरीदते हैं. Let's say raw material खरीदा. They also buy some finished goods, cigarettes बनाने के लिए. Plus to transport the cigarettes, they also buy a truck. And they take services of a CA. तो 4 inputs लिए उन्होंने guys, 4 inputs लिए हैं, and ये चारों inputs पे ITC company guys, ये चारों inputs पे ITC company ने GST भरा होगा. And is it for the purpose of business? Yes.
Is ITC registered? Yes, ITC is registered because both of them are happening. Whatever tax ITC pays on these four inputs, it can take a credit. It can take a credit for all these four taxes or all these four inputs. It can take a credit. So one section down, section 16(1) only tells that you can take ITC if you are using the products for your business. Yes, I'm using it for the business. Plus, if you are registered, only then can you take a credit. All right. First point done. Second point. There are four conditions. There are four conditions to be met, and only when this is a very important point. There are four conditions to be met. अगर ये चार conditions prove होते हैं तभी आपको ITC का credit मिलेगा. Guys, ये advantage है. ये पूरा chapter is like a gift to you from the GST law because इससे आपको advantage मिलता है. इससे आपका liability जो आपको pay करनी है वो कम हो जाती है because you can take a credit of the inputs. ये credit करने के लिए आपको चार conditions fulfill करनी पड़ती है. गाइस, चार कंडीशन का एक्रोनिम है टू रूड गेट रूम. ITC also has a hotel and होटल के ऊपर रूम है. सो योर टू रूड गेट अ रूम. जस्ट रैंडम सेंटेंस बनाया है. टू रूड गेट रूम. टू रूड गेट रूम. ऑलराइट, लेट्स टेक वन बाय वन. फर्स्ट, आपके पास एक टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए. मतलब गाइस, whenever ITC is buying the raw materials or finished goods or the truck or the CA services, उसको एक इनवॉइस मिलना चाहिए. अगर वो इंपोर्ट कर रहा है तो बिल ऑफ एंट्री मिलनी चाहिए. और अगर गाइस उसने RCM में पे किया है, रिमेंबर अगर लॉयर का सर्विसेज है, अगर RCM में पे किया है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा. यहां पर भी बेनिफिट मिलेगा. तो बट उसके लिए डॉक्यूमेंट अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं पेमेंट वाउचर. वो होना चाहिए. मतलब कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए गाइस. अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, सॉरी, यू विल नॉट बी एबल टू टेक क्रेडिट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यू बॉट सम गुड्स बट द इनवॉइस इज मिसिंग. इफ द इनवॉइस इज मिसिंग, सॉरी, यू विल नॉट बी एबल टू टेक क्रेडिट. सो देयर आर फोर कंडीशंस. द फर्स्ट कंडीशन इज टू रूड टू गेट रूम. टू इज टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट. एंड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट क्या होता है? जब रॉ मटेरियल खरीदा आपको इनवॉइस मिला. जब फिनिश गुड्स आपने इंपोर्ट किया आपको बिल ऑफ एंट्री मिला. जब लॉयर ने सर्विसेज दी आपको तो एक आपने पेमेंट वाउचर उसको इशू किया. सो ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपके पास होने चाहिए. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. नेक्स्ट इज आर. The next condition is R, guys. Next condition बोलता है कि the goods should have been received. Goods and services should have been received. आपने raw materials मंगाए हैं, but आपने raw materials मंगाए 100 kgs के, only 60 kgs have been received by you. Guys, you cannot take the ITC credit on the remaining 40 kgs. So आपको रिसीव होने चाहिए. बिफोर यू टेक द क्रेडिट आपको रिसीव होने चाहिए. लेट्स से टुडे इज द September 29. You should have got 100 kgs of raw material today, but today you got only 60 kgs और next 40 kgs next month मिला है, तो next 40 kgs का आपको क्रेडिट next month मिलेगा. So you should have received the goods. अगर गुड लॉट्स में आ रहे हैं गाइस, 5 लॉट्स में गुड आने वाले थे 20 20 20 20 kgs, you can take a credit only if all the lots have been received, because एक ही इनवॉइस पे 5 लॉट्स है तो पांचों लॉट्स आपको मिलने चाहिए. But sometimes, guys, I tell the raw material guy that listen, I'm placing the order, but मुझे सामान मत दो, किसी और को सामान दे. उसको बोलते हैं bill to ship model. I'm placing an order with you, but don't give me the raw material, give it to someone else, and that is called bill to ship model. उसमें आप रिसीव नहीं करोगे, कोई और थर्ड पार्टी रिसीव करेगी, but that's also okay. So bill to ship model also is covered here. Please remember, guys, these two conditions are very very important. First condition is tax paying document होना चाहिए. Second condition is आपको goods received होने चाहिए. Receive मतलब आपके पास आ जाने चाहिए. अगर lots में तो सारे lots आ जाने चाहिए. But unless आपने अगर third party को भेजे हैं वो goods in bill to ship model. Bill to ship model क्या होता है? ITC ने order दिया raw materials के लिए, but ITC ने बोला don't give it to me, give it to someone else. तो भी रिसीव हो गया है because bill to ship में कोई और रिसीव करता है तो भी रिसीव हो जाता है. Next condition. गाइस, गवर्नमेंट आपको क्रेडिट तब देगी जब गवर्नमेंट के पास पैसा जमा हो जाएगा. सो द गवर्नमेंट शुड हैव रिसीव्ड द टैक्स. ये कौन सा टैक्स हुआ? जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा, जो फिनिश गुड्स खरीदा, जो ट्रक खरीदा, जो सीए सर्विसेज ली आपने, उसके ऊपर आपने जीएसटी भरा होगा और ये जीएसटी गवर्नमेंट को जमा हो जाना चाहिए. अगर गवर्नमेंट को जमा नहीं होता है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. एंड लास्ट इज आर. जो रिटर्न आपको फाइल करना है वो आपने फाइल कर देना चाहिए. I'm looking at the question. All right. Guys, I hope I'm audible now. ये returns आपके फाइल हो जाने चाहिए. मतलब एक सेक्शन है, सेक्शन 39.
सेक्शन 39 बोलता है यू हैव टू फाइल सम रिटर्न्स, मंथली रिटर्न होते हैं वो आपके फाइल हो जाने चाहिए तभी आपको क्रेडिट मिलेगा. सो देयर आर 4 कंडीशंस गाइस, ये ऑल कंडीशंस आपको मेंटेन करनी है. अगर एक भी कंडीशन मेंटेन नहीं हुई तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. आईटीसी इज लाइक अ क्रेडिट. इट्स लाइक आपने पेटीएम में पैसा जमा कर दिया एंड यू कैन यूज दैट मनी, दैट्स अ क्रेडिट. जस्ट वन सेकंड गाइस, जस्ट वन सेकंड. All right, guys, I'm getting calls from people who are unable to join because they have yesterday's link. Please pass it around that today has a new link. All right. So guys, ये ITC है. ITC 16.1 में एक कंडीशन थी कि बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए and you should be registered. 16.1 में ये कंडीशंस थी. 16.2 में टू रूट गेट रूम. टू इज टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए. गाइस, अगर इनवॉइस मिसिंग है, सॉरी आईटीसी नहीं मिलेगा. अगर इनवॉइस आया ही नहीं है, सॉरी आईटीसी नहीं मिलेगा. इस पे एक चीज है, विल क्लैरिफाई इन 2 minutes फ्रॉम नाउ. नेक्स्ट आर इज आपको कुछ रिसीव्ड हो जाने चाहिए. Guys, just one second, just one second. All right. Okay, so guys, there are 4 conditions. The 4 questions. yes, please. Tax paying document. You should have a tax paying document. मिसिंग नहीं होना चाहिए गाइस. गुड्स रिसीव्ड हो जाने चाहिए आपके पास या जिसको आपने डिलीवर करवाया है उसके पास बिल टू शिप मॉडल में. द गवर्नमेंट शुड हैव गॉट द टैक्स बिकॉज इफ द गवर्नमेंट डज नॉट गेट द टैक्स, हाउ विल दे गिव यू एडवांटेज और क्रेडिट ऑफ इट. एंड ये रिटर्न फाइल हो जाने चाहिए. यू शुड बी फाइलिंग योर रिटर्न्स. इफ दीस 4 कंडीशंस आर मेट इन द एग्जाम, द फर्स्ट 2 कंडीशंस आर मोर फोकस्ड ऑन. इनवॉइस नहीं आया, क्रेडिट नहीं मिलेगा. रिसीव गुड्स नहीं हुए, 5 लॉट में गुड्स मिलने थे, 4 लॉट आ गए, सॉरी. इवन इफ द 5th लॉट इज नॉट कम, you cannot take a credit. And these are the conditions under section 16.2. So guys, I'm just keeping the acronym here. It's also in your sheet. It's also there in your sheet that you downloaded. To root to be true, tax paying document, goods received, government को मिल जाना चाहिए, and R is आपकी return file हो जानी चाहिए. Let's say ITC ने सब कुछ condition fulfill कर दिया. ITC is using this for the purpose of business. ITC is also registered. ITC has a tax paying document that is an invoice or either a bill of entry or either अगर RCM में है तो उन्होंने payment voucher दिया होगा. उसने गुड्स भी रिसीव कर लिए, उसने गवर्नमेंट को भी टैक्स मिल गया एंड रिटर्न भी फाइल हो गया. अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल्ड है देन कांग्रेचुलेशंस आईटीसी, यू कैन टेक अ क्रेडिट. यू कैन टेक अ क्रेडिट. क्रेडिट मंथली होता है. इस सितंबर में जो भी आपको गुड्स मिले हैं उसका आप क्रेडिट ले सकते हो. सो व्हाटएवर यू हैव टू पे उसका क्रेडिट ले सकते हो. ऑलराइट, आई गिव यू अ शॉर्टकट गाइस. ऑल द परचेजेस पे क्रेडिट मिलता है आपको. आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, फिनिश गुड्स परचेज किया, ट्रक परचेज किया, सीए सर्विस परचेज किया, उस पर आपको क्रेडिट मिलता है. एंड ऑल द सेल्स पे आपको पे करना पड़ता है. मतलब आपने जब सेल किया सिगरेट्स, उस पे जो जीएसटी चार्ज होती है वो आपको पे करनी है क्योंकि आपको कलेक्ट करना है और पे करना है. एंड इसका एडजस्टमेंट होता है विच वी कॉल आईटीसी. You have to pay, and let's say you have to pay 10 lakh rupees, but you have a credit of 7 lakh rupees. So ultimately you'll have to only pay 3 lakh rupees. That's what I want to give you a shortcut. The shortcut is on most purchases on which you paid GST, you'll get a credit. On most sales, if you charge GST, you'll have to pay, and वो netting off करने के बाद you have to pay. That is called ITC, input tax credit. All right, moving ahead. 16.1 done, 16.2 done. Next, guys, ITC ने एक ट्रक खरीदा. वो ट्रक खरीदा 15 लाख रुपीस का और उस पे लेट्स से 1,30,000 जीएसटी था. डोंट टेल मी व्हाई आई गॉट 1,30,000, इट्स जस्ट अ रैंडम फिगर. तो टोटली हो गया 16,30,000. अगेन आई रिपीट गाइस, ट्रक का कॉस्ट था 15 लाख, उस पे जीएसटी लगा 1,30,000, तो टोटल ट्रक का कॉस्ट हो गया 6,30,000. नाउ इफ आईटीसी कंपनी claims depreciation, let's say on this entire amount, 16,30,000 पे depreciation for the first year, let's say, I know depreciation should be 15%, but let's say 10% लेते हैं, तो 1,63,000 का अगर depreciation ले लिया,
मतलब उसने जीएसटी पे भी डेप्रिसिएशन ले लिया। अगर ये जीएसटी पे डेप्रिसिएशन ले लिया तो आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। या फिर आप डायरेक्ट टैक्स में एडवांटेज ले सकते हो, या फिर आप इस सेक्शन में एडवांटेज ले सकते हो। दोनों जगह एडवांटेज नहीं ले सकते। आई रिपीट दिस वन लास्ट टाइम गाइस, व्हेन यू आर बाइंग कैपिटल एसेट्स व्हिच आर डेप्रिसिएबल, you will pay GST and you will have a cost. If you depreciated on the entire 16 lakh 30, that means every year you depreciate whatever on the cost of 16 lakh 30, then I'm sorry, you already taken the advantage under DT. You can't take the advantage under IDT of credit. बट नो, आईटीसी ने इस पे नहीं लिया क्रेडिट। आईटीसी ने डेप्रिसिएशन जब लिया वो लिया 15 लाख पे, तो नो प्रॉब्लम, ये 1 लाख 30 का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज द नेक्स्ट सेक्शन। द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 16(3). एंड जो ट्रक्स आप खरीदते हो, जो कैपिटल गुड्स आप खरीदते हो, उस पे अगर आप डेप्रिसिएशन जो है गाइस, डेप्रिसिएशन अगर जीएसटी का एडवांटेज ले लिया आपने डेप्रिसिएशन में, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो द वाइजर थिंग, द स्मार्टर थिंग टू डू इज डेप्रिसिएशन तो धीरे धीरे मिलेगा, आईटीसी तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। गाइस डेप्रिसिएशन तो धीरे धीरे मिलेगा। ऑन 16 लाख 30 एवरी ईयर यू विल गेट 15% डेप्रिसिएशन। ऑन द अदर हैंड, टेक डेप्रिसिएशन ऑन 15 lakhs and on the remaining 1 lakh 30,000 take a credit of ITC immediately. That's a smarter thing to do. So section 16(3) only tells you one thing, that if you've already taken the depreciation on the entire amount, तो ITC नहीं मिलेगा. That is section 16(3). Everyone, section 16(3) talks about this. All right. Let me know guys if any other doubts on this. 16(1) talks about business के लिए use किया है ITC ने, and ITC registered है. Yes. 4 conditions to be met to root get room. टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा मिल जाना चाहिए, एंड आपने रिटर्न भर देना चाहिए। ये अगर 4 कंडीशंस हो गई है तो गुड फॉर यू, यू कैन टेक द क्रेडिट। बट प्लीज सी ऑन कैपिटल गुड्स कि आपने डेप्रिसिएशन लिया ऑन द एंटायर वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी, तो आपको 2 एडवांटेज नहीं मिलेगा। बट अगर आपने डेप्रिसिएशन ओनली ऑन द कॉस्ट लिया है, जीएसटी पे नहीं लिया है, तो आपको आईटीसी मिल सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। आईटीसी की एक कंडीशन है रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 16(3). All right guys, this is the month of September. सितंबर में इनपुट्स आए, अक्टूबर में भी इनपुट्स आए, नवंबर में भी इनपुट्स आए। इसका क्रेडिट मैं कब तक ले सकता हूँ गाइस? ये दिसंबर में भी इनपुट्स आए, मैं तो सिगरेट बनाता हूँ, तो एवरी मंथ आई हैव सो मेनी इनपुट्स। एवरी मंथ आई बाय रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, ड्रग्स एंड सीए सर्विसेज। सो एवरी मंथ अगर मेरे को इनपुट्स मिलते हैं, इसका क्रेडिट मैं कब तक ले सकता हूँ? सो योर ईयर इज फाइनेंशियल ईयर 1920। पूरा साल का क्रेडिट्स आपका एक्सपायर कब होता है? दिस इज द फाइनेंशियल ईयर, नो प्रॉब्लम, यू कैन कीप टेकिंग क्रेडिट्स, बट ये एक्सपायर तब होगा या फिर सितंबर का रिटर्न का ड्यू डेट या फिर एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट। कब एक्सपायर होगा? whichever is earlier. Of course government doesn't want to give you a longer due date, so whichever is earlier में क्या है? सितंबर रिटर्न, सितंबर मंथ का रिटर्न गाइस अपन आगे रिटर्न चैप्टर में देखेंगे, बट आई जस्ट टेल यू वन थिंग, जो मंथली रिटर्न जाता है वो द नेक्स्ट मंथ के 20th तक जाता है। तो सितंबर मंथ का जो रिटर्न है वो 20th अक्टूबर तक जाएगा, मतलब ये ईयर खत्म हो गया, ये ईयर खत्म हो गया। आई एम पुटिंग अ टाइमलाइन गाइस हियर। फाइनेंशियल ईयर 1920 खत्म हो गया, यहाँ चालू हुआ था, यहाँ खत्म हो गया, दिस इज 31 मार्च 20। उसके बाद जो 20th अक्टूबर आता है, इधर दैट और द रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट, व्हिचएवर इज अर्लियर। रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट इज 31 दिसंबर। इतना लंबा टाइम मिलता है आपको रिटर्न फाइल करने के लिए। बट लेट्स से मैंने रिटर्न फाइल कर दिया अगस्त में, guys, if I so basically they say that whenever you file your return, either that date, whenever you file your annual return, either that date or the 20th October, whichever is earlier. So let's take an example. For this year I was very proactive, मैंने रिटर्न फाइल कर दिया अगस्त में, 10th अगस्त। तो आपका आईटीसी कब तक ले सकते हो? 10th अगस्त तक। मैं आई वाज स्लो, मैंने रिटर्न फाइल किया 20th नवंबर को, तो आप आईटीसी कब तक ले सकते हो? 20th अक्टूबर तक। मतलब कैन आई से आईटीसी का लास्ट डेट ऑफ अवेलमेंट इज 20th अक्टूबर। उसके अगर पहले रिटर्न फाइल किया तो डेट पहले चली जाएगी, अगर उसके बाद रिटर्न फाइल कर दिया तो मैक्सिमम 20th अक्टूबर तक ले लो, नहीं तो इस साल के जो आईटीसी है, इस साल का जो आईटीसी है वो लैप्स हो जाएगा इफ यू डोंट टेक इट बाय 20th अक्टूबर। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस गाइस। वेरी सिंपल है, आपको इमीडिएटली नहीं लेना है। आपका फाइनेंशियल ईयर का जो आईटीसी है, जरूरत नहीं है आपको इमीडिएटली उसका क्रेडिट लेने की। आप उसको टाइम मिलता है, आपको कब तक टाइम मिलता है? ईयर खत्म हो जाने दो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद
इधर बाय 20th अक्टूबर. वाई 20th अक्टूबर? बिकॉज सितंबर का रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट. और बाय द टाइम यू फाइल द एनुअल रिटर्न, कब तक एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हो? 31st दिसंबर. लेट्स से आपने 31st दिसंबर को एनुअल रिटर्न फाइल किया, दे विल नॉट वेट फॉर टिल दैट टाइम, व्हिचएवर इज अर्लियर. तो 20th अक्टूबर इज द लास्ट डे टेक्निकली. बट लेट्स से मैंने रिटर्न जल्दी फाइल कर दिया, 20th जुलाई को ही फाइल कर दिया, तो एक्सपायर हो जाएगा 20th जुलाई. सो कब तक यूज कर सकते हैं? दैट इज गिवन इन अ सेक्शन कॉल्ड सेक्शन 16(4). 16(4) बताता है कि आईटीसी कब एक्सपायर होता है या आईटीसी का कब तक आप क्रेडिट ले सकते हो. डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि सितंबर मंथ का क्रेडिट आपको नेक्स्ट मंथ लेना ही है. नो, यू हैव द एंटायर ईयर प्लस यू हैव टाइम टिल द सितंबर ड्यू डेट का, सितंबर रिटर्न का ड्यू डेट दैट इज 20th अक्टूबर, और द रिटर्न फाइलिंग डेट व्हिचएवर इज अर्लियर, तब तक आपको टाइम. Guys, 4 sections done, amazing job. If you understood these 4 sections, you are almost done with the first part of ITC. आईटीसी कब ले सकते हैं? जब आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, रजिस्टर्ड हो, आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास गुड्स रिसीव्ड हो जाने चाहिए, आपको गवर्नमेंट को टैक्स भर देना, गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाना चाहिए, एंड गाइस आपको रिटर्न फाइल कर देने चाहिए आपके. इफ दीज कंडीशंस आर मेट, 4 कंडीशंस, ऑल 4 आर इंपॉर्टेंट, एंड इफ दीज कंडीशन आर मेट, यू गुड टू गो. नेक्स्ट, अगर आपने डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे लिया, अगर कॉस्ट पे लिया है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, बट अगर जीएसटी पे भी डेप्रिसिएशन ले लिया है तो आपको डबल एडवांटेज नहीं मिलेगा. प्लीज रिमेंबर दिस 16(3). एंड 16(4) बोलता है कब तक आईटीसी एक्सपायर होता है. डोंट वरी, एवरी मंथ आईटीसी एक्सपायर नहीं होता है. आपका फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सितंबर का रिटर्न का ड्यू डेट दैट इज 20th अक्टूबर को, या फिर रिटर्न फाइलिंग का डेट व्हिचएवर इज अर्लियर में एक्सपायर होगा, तो तब तक आप आईटीसी बिंदास ले सकते हो. ऑलराइट, so let's take an example here, guys. These 4 sections I hope are on your mind. I'm going to put some numbers here, guys. I'm going to put some numbers here. इस चीज को निकाल के मैं थोड़े नंबर्स डालने वाला हूं. रॉ मटेरियल पे आईटीसी ने जीएसटी भरा 10 करोड़ का, ये जीएसटी अमाउंट है. फिनिश गुड्स पे भी 10 करोड़ का, ट्रक पे लेट्स से 1 करोड़ का, और सीए सर्विसेज पे 9 करोड़ का. तो टोटली 10 plus 10 20, 20 plus 10 30 करोड़ का they can take an ITC. guys, 30 करोड़ का they can take an ITC. that will come in their electronic credit ledger में आ जाएगा 30 करोड़, and this 30 करोड़ का they can take an advantage whenever they want to take a credit. till the credits don't expire, they can take advantage of this. All right, looking at the sections, guys. Input plus tax plus credit. Guys, I hope this is visible to you all. I hope this is visible. 1 second. Yes, it is. This first sentence is done. Section 16 we're doing right now. Input tax credit. Input tax credit is basically all the inputs of goods, raw material, finished goods, CA services, as well as RCM, as well as imports. आपने जो भी लिया, आपने जो भी GST भरा, उस पे आपको क्रेडिट मिल जाएगा. 16(1) बोलता है should be used for the purpose of business. Guys, use मतलब intended to use also is used. And person should be registered under GST. That's the reason when you go buy a mobile phone, you can't take a credit. But when my office, when we buy a mobile phone, we can take a credit. Conditions for availing: to root, get room. To root, get room. All right. Tax paying document. Goods and services should be received. Lots का ध्यान रखना guys, and build to ship model ध्यान रखना. गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाना चाहिए एंड रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए. इन 4 केस में अगर है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा. All right. Now let's understand the next bit. In case of non-payment, let's try and understand this. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आईटीसी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं. ये आईटीसी है. आईटीसी के मैनेजर को एक लैपटॉप चाहिए था, सो उन्होंने विजय सेल्स को बोला आई वांट अ लैपटॉप. गाइस, लैपटॉप मिल गया 1 लाख रुपीस में. उसके ऊपर 18,000 वाज द जीएसटी, सो 1,18,000 का टोटल लैपटॉप पड़ा. ये आज लेट्स से 1 नवंबर को ये लैपटॉप खरीद लिया था. 1 नवंबर 2020 को ये लैपटॉप खरीद लिया था. ऑलराइट. Can ITC take a credit of this? Let's see. Can ITC take a credit of this because ये लैपटॉप खरीदा है? Okay. First, आपके पास टैक्स इनवॉइस है? Yes, टैक्स इनवॉइस है. सेकंड, क्या आपके पास रिसीव हो गया? Yes, ये लैपटॉप रिसीव हो गया है. थर्ड, क्या गवर्नमेंट को ये पैसा जमा हो गया? Yes, गवर्नमेंट को विजय सेल्स ने 18,000 भर दिया होगा. 18,000 विजय सेल्स ने भर दिया होगा गवर्नमेंट को. ओके, क्या आपने रिटर्न फाइल कर दिया? यस, मैं रिटर्न फाइल कर दिया है. अगर ये 4 हो गए पूरे, तो यू कैन टेक अ क्रेडिट. कितने का क्रेडिट लोगे गाइस? 18,000 का क्रेडिट ले लोगे, क्योंकि 18,000 आपने भरे हैं. यू विल टेक अ क्रेडिट ऑफ 18,000. बट गाइस, ये पेमेंट का कहीं टॉपिक ही नहीं आया है.
What if I've not paid? Even if you've not paid, guys, even if you've not paid this amount, you can still take a credit. So they allow you to take a credit even if you've not paid the amount, which is very good, right? आपने पैसे ही नहीं भरे, 1,18,000 के आपने पेमेंट कर दिया 1 नवंबर को, नो नो मैं तो आईटीसी कंपनी हूँ, आई विल पे आफ्टर वाइल, नो प्रॉब्लम, आई विल वेट. Guys, the next part which we're talking about is ये 18,000 का क्रेडिट आप ले सकते हो even if you don't pay, even if you pay, even if you pay advance payment, तीनों केस में आप ले सकते हो 18,000 का. अपन ने एडवांस भी पे नहीं किया, अपन ने पेमेंट भी नहीं किया, अपन रुके हैं, we will pay after some time, and the government says this payment should be made within 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. आज का इनवॉइस है, 1 नवंबर का इनवॉइस है, विद इन 180 डेज आपको पे करना है. गाइस अगर आप पे करोगे तभी ये क्रेडिट आपको कंटिन्यू होगा. लेट्स से 180 डेज रफली मतलब 6 मंथ्स. 6 मंथ्स मतलब फ्रॉम 1 नवंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल. बाय अप्रैल यू शुड मेक द पेमेंट. अगर आपने अप्रैल तक पेमेंट नहीं किया, गाइस अगर आपने अप्रैल तक पेमेंट कर दिया, नो प्रॉब्लम, चैप्टर ओवर, बिकॉज 18,000 का आपको क्रेडिट मिलना था, आपने क्रेडिट ले लिया, आपने पेमेंट भी कर दिया, नो प्रॉब्लम. बट इफ 180 डेज में यू डोंट पे, इफ 180 डेज में यू डोंट पे, दे विल से सॉरी बिकॉज यू हैवंट पेड विद इन 180 डेज, वट एवर एडवांटेज यू गॉट, 18,000 का एडवांटेज मिला था आपको, ये आपके लायबिलिटी में आ जाएगा. दिस यू विल हैव टू पे अलोंग विद इंटरेस्ट. कब से? जब से आपने क्रेडिट लिया है तब से इंटरेस्ट चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 18%. अगेन आई विल रिपीट दिस. जब आपने लैपटॉप खरीदा 1 नवंबर को, आपने स्ट्रेट अवे नवंबर में क्रेडिट ले लिया है, तो दिसंबर का जो आपने रिटर्न फाइल किया उसमें आपने क्रेडिट ले लिया 18,000 का, बिकॉज आपका इनवॉइस था, ये लैपटॉप आपको मिल गया था, गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया था बिकॉज विजय सेल्स ने पे कर दिया होगा, एंड रिटर्न भी आपने फाइल कर दिया था फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, सो यू टेक अ क्रेडिट. क्रेडिट 18,000 का ले गया, बट गाइस द कंडीशन इज यू शुड हैव मेड द पेमेंट विद इन 180 डेज. अगर आपने 180 डेज में पेमेंट कर दिया तो नो प्रॉब्लम, वी विल फॉरगेट इट. बट अगर आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, देन सॉरी, दिस एडवांटेज यू विल नॉट गेट एंड यू विल हैव टू पे व्हाटएवर यू टुक अ क्रेडिट ऑफ along with interest at the rate of 18%. एंड इंटरेस्ट तब से जब से आपने ये एडवांटेज लिया, जब से आपने ये क्रेडिट लिया है, तब से आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%. बी विद मी, बी विद मी, इट्स नॉट ओवर. बट मुझे तो पे करना ही नहीं था. क्यों मुझे पे नहीं करना था? बिकॉज ये सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन थी. अगर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है तो आप पे क्यों करोगे? सेकंड, ये लैपटॉप नहीं था, ये लॉयर का फीस था. तो आरसीएम में अगर है तो देन दे डोंट केयर अबाउट पेमेंट. एंड थर्ड, गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, ये सप्लाई पे मुझे पे करना ही नहीं था. इफ आई डोंट हैव टू पे, ये लैपटॉप पे मुझे पे करना ही नहीं था, या जो भी सप्लाई है अगर उस पर पे करना ही नहीं था तो नो प्रॉब्लम. ये आरसीएम में है. आरसीएम में हाउ डू यू केयर? आरसीएम में इफ आई डोंट पे द लॉयर, एनीवेज आई एम सपोज्ड टू पे यू द टैक्स, आई एम पेइंग यू द टैक्स. आरसीएम है, रेसिपिएंट, आई एम द रेसिपिएंट, आई एम सपोज्ड टू पे यू द टैक्स. तो व्हाई यू कंसर्न अबाउट उसको पैसा मिला है कि नहीं मिला? ओके, नो प्रॉब्लम. एंड लास्ट, मैंने पे कर दिया लेकिन थर्ड पार्टी को पे कर दिया है. विजय सेल्स ने बोला मुझे डोंट पे मी, पे टू समवन एल्स, मैंने पे कर दिया थर्ड पार्टी को. तो इन तीन केसेस में नो प्रॉब्लम, इवन इफ 180 डेज में यू नॉट पेड विजय सेल्स, नो प्रॉब्लम. कौन से 3 केसेस है? एक तो विजय सेल्स ने लैपटॉप मुझे फ्री में दिया, देयर इज नो सप्लाई पे कंसिडरेशन. कौन सा सेक्शन आता है गाइस? सेक्शन 71C. कंसिडरेशन ही नहीं था. कंसिडरेशन नहीं है तो मैं पे क्यों करूंगा? नेक्स्ट, आरसीएम में है. तुमको क्या मतलब है? गवर्नमेंट, व्हाई आर यू कंसर्न अबाउट द मनी? आई एम सपोज्ड टू पे यू टैक्सेस, आई एम गोइंग टू पे यू टैक्सेस, व्हाई आर यू कंसर्न वेदर आई एम पेइंग दैट गाय और नॉट? ओके, आई एम नॉट कंसर्न. और आई हैव मेड द पेमेंट टू थर्ड पार्टी, विजय सेल ने बोला थर्ड पार्टी को पे करो, मैंने पे कर दिया. सो नाउ व्हाई आर यू कंसर्न? सो इन दीस 3 केसेस वी विल नॉट चेक दिस 180 डे रिक्वायरमेंट. Otherwise, we will check this 180 day requirement, guys. 180 days mein you got to pay. Should we learn the definitions given in the start of ITC or even other chapters like supply? Supply mein you definition by heart nahi karna hai. Let's say goods. Goods ka definition, all movable property except IMS, immovable property, money and securities. Other than that, services, everything other than GIMS. So like that you'll have to give. So can you once again explain the 3 cases in short? Yes, I will explain, Roshni. Just give me a second. Guys, someone has raised their hand. Please feel free to unmute yourself and ask your question. All right, repeating the three things again. Guys, I have to make a payment within 180 days. Otherwise, मेरा जो credit लिया है मैंने 18,000 का, I am ITC, I have taken a credit of 18,000, वो reverse हो जाएगा, and I have to pay interest also because they say you unfairly took the credit. बट मैंने बोला मुझे पे करना ही नहीं था बिकॉज ये सप्लाई वाज विदाउट कंसिडरेशन. क्या है ना, सप्लाई भी विदाउट कंसिडरेशन. यस, 71C सेक्शन में देखा था कल अपन ने कि सी में 71C में सप्लाई वाज विदाउट कंसिडरेशन, तो भी सप्लाई थी.
तो मेरे को पे करना ही नहीं था, व्हाई शुड आई पे? ओके, देन वी वोंट चेक पेमेंट. सेकेंड, मुझे ये लैपटॉप नहीं मिला, लेट्स अज्यूम समथिंग एल्स, मुझे लॉयर सर्विसेज मिली थी. लॉयर सर्विसेज गाइस आर चार्जेबल अंडर आरसीएम. मतलब लॉयर ने मुझे सर्विस प्रोवाइड किया, ही इज अ सप्लायर, he will doesn't have to pay tax, I have to pay the tax. And if I have to pay the tax, why are you concerned whether I'm paying the lawyer or not? So whether it's an RC, guys, they tell about payment, they talk about payment, because only when you pay with Vijay Sales we have the money to pay the GST. See, Vijay Sales ने GST पे कर लिया है, बट आपको भी तो विजय सेल्स को पे करना है, अदरवाइज ये पूरा मिक्स हो जाएगा, ये पूरा हिल जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज विजय सेल्स ने ऑलरेडी 18,000 पे कर लिया है, आपने उसका क्रेडिट भी ले लिया है, बट फॉर दैट यू शुड हैव पेड हिम विद इन 180 डेज. बट अगर उस पर पे करना ही नहीं है, फर्स्ट कंडीशन, या हाउ आर यू कंसर्न, बिकॉज विजय सेल्स को पैसा मिले या ना मिले, लॉयर को पैसा मिले ना मिले, अगर आरसीएम में ट्रांजैक्शन है तो आई एम सपोज टू बी पेइंग टैक्स टू यू, मेरे पास पैसा है, आई एम गोना पे टैक्स टू यू, डोंट वरी, इस कंडीशन में. एंड थर्ड, मुझे विजय सेल्स को नहीं पे करना था, विजय सेल्स ने मुझे बोला कि उसके ब्रदर को पे करना है और मैंने उसके ब्रदर को पे कर लिया है, तो इन दीज थ्री केसेस यू विल नॉट चेक पेमेंट मेड टू विजय सेल्स. ऑलराइट, सो गाइस मुझे 1 नवंबर का पेमेंट लेट्स से 30th अप्रैल तक करना था, बट मैंने 30th अप्रैल तक नहीं किया, तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब मेरे लायबिलिटी में आ जाएगा 18,000 प्लस आई हैव टू पे इंटरेस्ट आल्सो एट 18%. बट गाइस मैंने नेक्स्ट ईयर मई में पेमेंट कर दिया, मैंने ये जो 1,18,000 का पेमेंट है नेक्स्ट ईयर मई में कर दिया. अगर आपने नेक्स्ट ईयर पेमेंट कर दिया है, डोंट वरी, अगेन ये 18,000 का आपको री अवेलमेंट मिल जाएगा क्रेडिट का. सी, पहले आपने क्रेडिट लिया, फिर मैंने डिनाई कर दिया वो क्रेडिट, एज अ गवर्नमेंट आई रिवर्स दिस. पहले आपने ये क्रेडिट ले लिया, फिर मैंने, बिकॉज यू डिडंट पे इट विद इन 180 डेज, आई रिवर्स दिस क्रेडिट, आई विल गिव इट अगेन इफ यू शो मी दैट यू मेड अ पेमेंट लेटर ऑन. मतलब ये परमानेंट रिवर्सल नहीं है, ये जब तक आप पे नहीं करते हो तब तक रिवर्सल है, उसके बाद आपको रीअवेल कर लोगे, बट इंटरेस्ट तो चला गया आपके हाथ से, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा. All right, that is the next point, guys. Next point says that my credit is not my ITC is dependent on my payment. I don't have to pay today, I can pay today, I don't pay today, no problem, I can take the ITC, doesn't matter. One second. So what if during the 180 days period I avail the ITC with respect to an outward supply? Priyank, yes, I am assuming you've used the ITC. अगर ITC यूज कर लिया तभी तो रिवर्स कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये आईटीसी आपने यूज कर लिया है, इसीलिए मैं रिवर्स कर रहा हूं यहां पर विद इंटरेस्ट. सो यू हैव टू पे 18,000 विद इंटरेस्ट बिकॉज यू यूज समथिंग दैट यू डिडंट बिलोंग टू यू, बिकॉज you didn't pay within 180 days. I hope that question is answered. So because you used it, this is a credit taken. Because you've used this, one second. All right, perfect. Because you've used this credit, ITC का आपने जो क्रेडिट ले लिया, बट 180 डेज में पे नहीं किया, तो मैं वापस रिवर्स करूंगा. तो रिवर्स मतलब आपको ये 18,000 आपके जेब से भरने पड़ेंगे प्लस इंटरेस्ट भी भरना. यू आर क्राइंग बट डोंट क्राई, व्हेनेवर यू मेक दिस पेमेंट टू विजय सेल्स लेटर ऑन ऑफ 1,18,000 मई में भरा, तो मई के इसमें मंथ में आपको ये क्रेडिट वापस मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा. तो पहले क्रेडिट लिया, फिर क्रेडिट को डिनाई कर दिया मैंने, फिर आपको वापस क्रेडिट दे दिया, यू कैन रीअवेल दिस क्रेडिट लेटर ऑन ऑल्सो. और इसके लिए वो नेक्स्ट ईयर का 20th अक्टूबर और रिटर्न फाइलिंग डेट का डेडलाइन नहीं लगता है. गाइस, रीअवेलमेंट के केस में नेक्स्ट ईयर का जो डेडलाइन है, बोलते हैं ना आईटीसी एक्सपायर्स ऑन द 20th of अक्टूबर, वो नहीं लगेगा इन केस ऑफ रीअवेलमेंट. तो रीअवेलमेंट आप नेक्स्ट ईयर कभी भी ले सकते हो, नेक्स्ट ईयर भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, उसके लिए वो डेडलाइन नहीं है, इट वोंट एक्सपायर. सो रीअवेलमेंट वोंट एक्सपायर इन द नेक्स्ट ईयर. ऑलराइट. But Vijay Sales will have to report us this to the government that we haven't paid. No, in fact, Amaya, we have to report to the government that we haven't paid. The responsibility is on us to report to the government that we haven't paid. All right, guys, this part from the book. I'm just taking you through the book. Recredit in case of non-payment. Just looking at the questions. One second. Alright, perfect. Okay, guys, क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट. यहाँ पे क्या लिखा है? अगर इनवर्ट सप्लाई है आपकी, आपने लैपटॉप लिया, उसका पेमेंट 180 डेज में करना है. अगर आपने नहीं किया तो जो आपने क्रेडिट लिया है उसको रिवर्स कर देंगे. अगर मैंने क्रेडिट लिया ही नहीं है तो इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, बट आपने अगर क्रेडिट ले लिया है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट. ओके, बट गाइस डोंट वरी, अगर आप वापस पे कर देते हो तो आपका रीअवेल भी कर सकते हो, और रीअवेल के लिए डेडलाइन नहीं है. ऑलराइट, दैट मींस गाइस दे डोंट टेल यू दैट ऑलवेज मेक एडवांस पेमेंट. No, don't make advance payment, no problem. Even don't make payment right now, no problem. आप फिर भी ITC ले सकते हो, but please ensure कि 180 दिन में आप पे कर दो.
180 दिन में प्लीज पे कर दो, अदरवाइज आपका जो भी आपने क्रेडिट लिया है वो आपका क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा, आपको आउटपुट लाइबिलिटी में आ जाएगा, आपको पे करना पड़ेगा, एंड दैट टू विद इंटरेस्ट। 3 केसेस में अप्लाई नहीं होता है, व्हेन अगर मेरे को पे करना ही नहीं है, द सप्लाई इज विदाउट कंसिडरेशन, और या फिर मैंने थर्ड पार्टी को पे कर दिया है तो मेरा पेमेंट खत्म हो गया है, या आप क्यों वरी कर रहे हो, यू आर वरीड दैट आई विल पे टू विजय सेल्स सो दैट दे हैव द मनी टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, तो वो बैलेंस बना रहे, बट डोंट वरी, मुझे आपको टैक्स भरना है, सो व्हाई यू कंसर्न व्हेदर आई एम पेइंग विजय सेल्स और नॉट। सो गाइस आरसीएम में they are not bothered whether you made the payment or not, supply without consideration है नहीं, so they are not bothered, and third party को पे कर दिया आपने, so they are not bothered whether you paid विजय सेल्स or not, that is recredit in case of non payment, important है, important है। Alright. नेक्स्ट सेक्शन 16(3) वो आपने देख लिया है, आईटीसी आपको नहीं मिलेगा अगर आपने डेप्रिसिएशन ले लिया, मतलब डीटी अगर बेनिफिट ले लिया तो आईडीटी में बेनिफिट नहीं मिलेगा, दोनों जगह आप बेनिफिट नहीं ले सकते हो। व्हाट इज द टाइम लिमिट, सेक्शन 16(4) यहाँ बोलता है 20th अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, 20th अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर आपके लिए चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपका फाइनेंशियल ईयर इज 1920, आपके लिए चेंज हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 1920 का 20th अक्टूबर 2020, और रिटर्न फाइलिंग डेट विच एवर इज अर्लियर। ऑलराइट, बट गाइस ये रीअवेलमेंट के केस में टाइम लिमिट नहीं लगती है, आपने एक बार रिटर्न फाइल कर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, एंड गाइस नॉट जस्ट द इनवॉइस, द डेबिट नोट्स एक्सेट्रा लिंक टू द इनवॉइस वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट दैट, लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट दैट। डेबिट नोट्स इनवॉइस चैप्टर में देखेंगे, बट एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। गाइस फटाफट एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। योर आईटीसी, यू बॉट सम रॉ मटेरियल्स, लेट्स से आपने रॉ मटेरियल खरीदे, आपने बिकॉज यूर अ बिग कंपनी, लेट्स टेक सम बिग नंबर्स, 100 करोड़ के रॉ मटेरियल्स खरीदे, उस पे 18 करोड़ का जीएसटी भर दिया आपने, तो टोटल 118 करोड़ रुपीस का। 4 कंडीशंस, टैक्स इनवॉइस आया है, यस आया है, आपको गुड्स रिसीव हुए, यस रिसीव हुए, गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया है, यस इसने गवर्नमेंट को 18 करोड़ भर दिए हैं, yes, and आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, yes, conditions met, can I take the ITC, yes, doesn't matter, even if you've not paid, you have 180 days to pay, I can take a credit of 18 crores, that all we understand guys, I hope we understand this, okay, now ये 118 crores जो है ये इनवॉइस के ऊपर अमाउंट है, और now this raw material supplier he calls you up one day, मतलब लेट्स से ये 1 नवंबर को खत्म हो गया, उसने आपको रॉ मटेरियल दे दिया, आपने क्रेडिट भी ले लिया, बट गाइस उसका फोन आया एंड यू आस्क्ड हिम दैट व्हाई आर यू ट्रबलिंग मी, व्हाई आर यू ट्रबलिंग मी वापस। गाइस रॉ मटेरियल वाले का आपको फोन आता है, दिस इज द फोन, he calls you up and he says listen I want to talk to you very urgently, एक मिस्टेक हो गई है, तो यू टेल व्हाई, क्यों आर यू ट्रबलिंग मी वापस। he tells you that या फिर क्वांटिटी कम आ गई है, या फिर टैक्स रेट जो 18% चार्ज किया 28% चार्ज करना था, या फिर वैल्यू मैंने कम लिख ली। गाइस या फिर क्वांटिटी कम है, या फिर जो टैक्स उन्होंने चार्ज किया, उन्होंने 18% चार्ज किया है वो कम चार्ज किया, करना चाहिए था 28%, या वैल्यू उन्होंने वो रॉ मटेरियल कम डाली है। इन दीज केसेस व्हेन थिंग्स आर डाउन डाउन डाउन, मतलब he has put in the invoice something which is lower, he will issue a debit note to you. I repeat again, debit note we will see in invoice chapter, but यहाँ पे कर लेते हैं, no problem guys। he called you again after the giving you the invoice, he gave you the invoice of 118 crores, then he called you again, you told him क्यों मुझे ट्रबल कर रहे हो, वो क्यों ट्रबलिंग मी वापस, क्यों इस क्वांटिटी कम आ गई, टी इस टैक्स कम आ गया है, या वी वैल्यू मैंने कम लिख ली है, उसने बोला मेरे से मिस्टेक हो गई है, मैंने या फिर क्वांटिटी कम लिख दी है, एंड बिकॉज ये कम हो गई है डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। सो डेबिट नोट से क्या होगा गाइस, या क्वांटिटी बढ़ जाएगी, या टैक्स बढ़ जाएगा, या वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब ओवरऑल गाइस इनवॉइस का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो जीएसटी बढ़ जाएगा, तो यू हैव टू पे अ लिटिल मोर, एंड आपको क्रेडिट भी और मिलेगा। अगेन आई रिपीट दिस वन लास्ट टाइम, ही टेल्स मी कि क्वांटिटी या फिर मैंने कम डाल दी है, या टैक्स मैंने 18% पर डाल दिया, मुझे 28% देना चाहिए था, या वैल्यू मैंने कम डाल दी है, एंड हेंस आई एम ट्रबलिंग यू बिकॉज नाउ आई हैव टू इशू अ डेबिट नोट टू यू। दिस डेबिट नोट when he issues to me, it will be issued with the same reference of this invoice number, let's say इसका invoice number है 108, तो बोलेगा reference of invoice number 108 I have to issue a debit note to you,
डेबिट नोट में ही विल ईदर इंक्रीज द क्वांटिटी, बिकॉज जो करेक्ट क्वांटिटी वो डाल देगा, या जो करेक्ट टैक्स है वो डाल देगा, या जो करेक्ट वैल्यू है वो डाल देगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस वो इनवॉइस का वैल्यू बढ़ जाएगा। गाइस आपने लिए 100 लैपटॉप्स, बट उसने इनवॉइस में डाल दिया ओनली 80 लैपटॉप्स, तो क्वांटिटी बढ़ा देगा वो। या टैक्स में आपको चार्ज किया ओनली 18% चार्ज करना था, 28%, तो टैक्स बढ़ा देगा। या वैल्यू बढ़ा देगा, लैपटॉप का चार्ज किया उसने 1 लाख, बट एक्चुअली चार्ज होना चाहिए था 2 लाख। तो तीनों में से कुछ बढ़ाएगा या तीनों बढ़ाएगा, तो उसके वजह से ओवरऑल इनवॉइस का वैल्यू बढ़ जाएगा। एंड अगर ओवरऑल इनवॉइस का वैल्यू बढ़ जाएगा तो जीएसटी भी बढ़ जाएगा, because higher the value, higher be the GST, and so you'll have to pay more. ITC company will have to pay more, and pay more मतलब more credit, तो सब बढ़ जाएगा because of debit note. I hope you understood, guys. Debit note will increase the value of the invoice, will increase the GST, will increase your payment to him, and will also increase the credit that you can take. Same thing, it can also happen for credit note, but credit note में opposite होगा, guys. Credit note में opposite होगा. Now please tell me, ये invoice issue हुआ 1 November, ये इनवॉइस इशू हुआ, आई एम जस्ट रिमूविंग क्यू ट्रैवलिंग वापस, ये इनवॉइस इशू हुआ 1 नवंबर, एंड इसके ऊपर डेबिट नोट जो इशू हुआ वो इशू हुआ 5 नवंबर को। तो इन दोनों की एक्सपायरी क्या है, या फिर 20 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ऑफ द आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, या रिटर्न जो आपने फाइल किया है, रिटर्न फाइलिंग डेट, नो प्रॉब्लम, दिस इज नो प्रॉब्लम। बट गाइस लेट्स से डेबिट नोट उसने अभी इशू ही नहीं किया, उसने डेबिट नोट 5 मई को इशू किया, ईयर खत्म होने के बाद इशू किया, तो इसका ड्यू डेट क्या सेम रहेगा? अगेन आई रिपीट, इनवॉइस का डेट इज 1 नवंबर, बट जो डेबिट नोट उसने इशू किया वो उसको बहुत टाइम बाद क्लिक हुआ, तो उसने 5 मई को इशू किया, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है, ये फाइनेंशियल ईयर 1920 है, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 है, तो इसका ड्यू डेट तो मेरे को मालूम है 20 अक्टूबर और रिटर्न फाइलिंग whichever is early, but इसका ड्यू डेट क्या होगा, that I'm asking you. Is this debit note linked to the invoice? If this debit note is linked to the invoice, उसका ड्यू डेट भी सेम होगा 20 अक्टूबर और रिटर्न फाइलिंग। सो प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, डेबिट नोट क्या होता है वो अपन ने समझा है, डेबिट नोट का पीरियड क्या होता है वो भी अपन ने समझा है। डेबिट नोट आप नेक्स्ट ईयर में भी इशू करो या आफ्टर फ्यू डेज इशू करो, नो प्रॉब्लम, उसका डेडलाइन विल वर्क विद द इनवॉइस करेक्ट। Alright, so that is debit note. क्यू ट्रबलिंग वापस, क्यू ट्रबलिंग वापस, क्वांटिटी या फिर कम हो गई है लिख ली इनवॉइस में, या टैक्स कम लिख लिया इनवॉइस में, या वैल्यू कम लिख ली इनवॉइस में, तो ही विल रिवाइज द इनवॉइस। बट हाउ डू यू रिवाइज द इनवॉइस? यू कैन चेंज द इनवॉइस, यू विल इशू अ डेबिट नोट। ऑलराइट, ये इनवॉइस चैप्टर का एक पार्ट है, अपन ने अभी कर लिया, नो प्रॉब्लम, दैट्स अ गुड थिंग। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट, सेक्शन 16 हो गया है, सेक्शन 16 हो गया है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। एंड गाइस जो सम आएगा वो आपको दोनों मिला के आएगा। दे विल टेल यू रॉ मटेरियल है क्या आईटीसी मिलेगा, फिनिश गुड्स है क्या आईटीसी मिलेगा, ट्रक है क्या आईटीसी मिलेगा, ये सब एक पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में अपन जाते हैं। सेकंड पार्ट इज कॉल्ड ब्लॉक क्रेडिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पार्ट इज ब्लॉक क्रेडिट्स। ब्लॉक क्रेडिट्स का नाम ही, ब्लॉक क्रेडिट्स का नाम ही है वो चीज जिसपे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। ब्लॉक कर दिया मतलब वो चीज जिसपे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। Guys, आप बिजनेस में हो, आप रजिस्टर्ड हो, आप आईटीसी हो, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, बट देयर आर सम थिंग्स ऑन व्हिच यू विल नॉट गेट क्रेडिट, एंड दैट इज कवर्ड इन ब्लॉक क्रेडिट। Let's understand what is there in block credit. This is one of the most important chapters of ITC. You got to be listening to this chapter really well. What is block credit? आपको definitely a question. I can tell you today that you will get a question on your exam day from this. दोनों मिला के देंगे, दे विल गिव यू 5-6 ट्रांजैक्शंस, किस पे क्रेडिट मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा, किस पे ब्लॉक है, किस पे अलाउड है, वो आपको देखना है। We'll do a couple of sums also, excellent ones from this. First, VAM, vessels, automobiles, sorry, vessels, aircrafts and motor cars. Vessels, automobiles and motor car. इन पे क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, लेट्स डिस्कस दैट गाइस। क्विकली देखेंगे। वेसल्स मतलब आपकी जो शिप होती है, यॉट होती है। एयरक्राफ्ट मतलब प्लेन, प्राइवेट प्लेन, बड़ी प्लेन, छोटी प्लेन। एंड मोटर कार मतलब राइट फ्रॉम अ कार टू अ बस टू अ ट्रक, ऑल दीज आर मोटर कार्स। ये सी पे चलती है, ये एयर में चलती है, ये रोड पे चलती है। इन पे आपको क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
ओके गाइस, आपके जो भी वेसल या जो भी एयरक्राफ्ट या जो भी मोटर कार, उस पे अगर ये नंबर प्लेट है GST प्लीज, अगर आपने ये लिख दिया नो, अगर आपने ये लिख दिया मतलब आपको क्रेडिट मिलेगा. इट्स अ वे ऑफ रिमेम्बरिंग इट, प्लीज बी विद मी. क्या आपको व्हीकल, एयरक्राफ्ट, मोटर बाइक, मोटर कार पे आपको क्रेडिट मिलेगा? मिलेगा अगर आपके नंबर प्लेट पे आपने लिखवा दिया, यू नो दे राइट, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, या हॉर्न ओके प्लीज, आपको GST प्लीज लिखना है. अगर आपने GST प्लीज लिखा है तो आपको क्रेडिट मिलेगा. व्हाट इज दिस GST प्लीज? GST प्लीज. जी मतलब ये चीज आपके गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए है, तो मिल जाएगा आपको क्रेडिट, नो प्रॉब्लम. आपने वेसल खरीदा, उस पर GST भरा. आपने एयरक्राफ्ट खरीदा, उस पर GST भरा. आपने ट्रक खरीदा, उस पर GST भरा. वो मिल जाएगा इफ इट्स फॉर गुड्स. जी इज फॉर गुड्स. या वन सेकेंड. So there was an amendment to Rule 36(4). Is that to be considered for CA final? We'll look at that amendment. Give me 2 minutes. Ishan, give me 2 minutes. All right. नहीं नहीं, वो अमेंडमेंट है, वो अपने लिए यूजफुल है, बट गिव मी 2 minutes, विल टॉक अबाउट दैट अमेंडमेंट. आई जस्ट राइट इट हियर. ऑलराइट गाइस, वैम के ऊपर अगर नंबर प्लेट है GST प्लीज, जी मतलब वो अगर आप गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हो तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा. नेक्स्ट, अगर आप उसको सेल कर रहे हो, मतलब you bought a vessel so you can sell it, or you bought an aircraft so you can sell it, you bought a motor car so you can sell it. Basically you are Maruti Suzuki, you buy it to sell it. You sell aircraft, you buy an aircraft and sell aircraft. अगर आपने सेलिंग के लिए लिया है तो आपको मिल जाए. आप सेकेंड हैंड कार्स में डील करते हो, आपने मोटर कार खरीदी, क्यों खरीदी? क्यों सेल अहेड, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा उसका. नेक्स्ट इज टी, आप ट्रेनिंग दे रहे हो. व्हाट इज ट्रेनिंग? या फिर वेसल को कैसे नेविगेट करते हैं, एयरक्राफ्ट को कैसे फ्लाई करते हैं, या मोटर कार को कैसे चलाते हैं, उसकी आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा. एंड लास्ट इज पी, इफ यू आर कैरिंग पैसेंजर्स ऑन हायर. मतलब ये जो मोटर कार है उसको आप उबर में यूज करने वाले हो, या ओला में यूज करने वाले हो, या टैक्सी चलाने वाले हो, या एयरक्राफ्ट है इसको आप गो एयर हो, आप गो एयर से आप पैसेंजर्स को ले जाने वाले हो, या वेसल्स है, वेसल से आप पीपल को, पैसेंजर्स को ऑन हायर आप अगर करोगे, तो इन चारों केसेस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा. शॉर्टकट है ये. वैम, वेसल्स, एयरक्राफ्ट, मोटर कार्स, इसमें अगर GST प्लीज की नंबर प्लेट है, मतलब पीछे आपके GST प्लीज लिखा है, इमेजिन एयरक्राफ्ट, उसके पीछे GST प्लीज लिखा है, तो उस पर क्रेडिट मिल जाएगा. इस पे क्रेडिट मिल जाएगा. दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ ग्रेट थिंग, आपको मिल जाएगा. अगर गुड्स के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए मिल जाएगा. अगर सेलिंग के लिए खरीदा है आपने तो मिल जाएगा. आपको ट्रेनिंग के लिए खरीदा है आपने तो मिल जाएगा. अगर आपको पैसेंजर्स ऑन हायर के लिए है तो मिल जाएगा. बट इसके अलावा क्या यूज हो सकता है? इसके अलावा आपने CEO के लिए प्राइवेट जेट खरीदी. भाई CEO के लिए प्राइवेट जेट गुड्स ले जा रहे? नहीं, गुड्स का नहीं है. आपने बेचने के लिए खरीदी? नहीं. आपने ट्रेनिंग के लिए खरीदी? नहीं. पैसेंजर्स हायर के लिए खरीदी? नहीं. तो इस पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. आपने एक कार खरीदी, आपने एक कार खरीदी फॉर योर CEO, आपने मर्सिडीज कार खरीदी फॉर योर CEO. क्या गुड्स के लिए है? नहीं है. क्या सेलिंग के लिए है? नहीं है. क्या ट्रेनिंग के लिए है? नहीं है. क्या पैसेंजर्स और हायर के लिए नहीं है? तो इस पे आपको नहीं मिलेगा. आपने एक यॉट खरीदी फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर, गुड्स के लिए है? नहीं. सेलिंग के लिए है? नहीं. ट्रेनिंग के लिए है? नहीं. पैसेंजर्स और हायर के लिए नहीं. तो आपको इस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा. सो प्लीज रिमेंबर गाइस, दिस GST प्लीज इज इंपॉर्टेंट. इसका एक एक्सेप्शन है, आई एम पुटिंग द एक्सेप्शन हियर. अगर आप मोटर कार खरीदते हो which has a capacity of 13 plus people. एग्जाम्पल, आपने एक बड़ी वैन खरीदी, आपने एक बस खरीदी. आई एम ड्रॉइंग अ बस हियर गाइस. आपने बस खरीदी, उसमें यू कैन होल्ड लेट्स से 17 पीपल, and this bus transports your employees. This bus transports your employees from one place to the other. Not bad, yeah? The bus has come out well. If you can transport employees from one place to the other, क्या गुड्स के लिए बस है? नहीं. क्या सेलिंग के लिए बस है? नहीं. क्या ट्रेनिंग के लिए बस है? नहीं. क्या पैसेंजर्स ऑन हायर है? नहीं. ये तो मेरे एम्प्लॉइज आएंगे इसमें, तो नो प्रॉब्लम. तो मोटर कार के लिए एक्सेप्शन है, इसमें आपको क्रेडिट मिल जाएगा. देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर मोटर कार. मोटर कार में अगर 13 के ऊपर है, 13 प्लस है, अगर एग्जैक्ट 13 है तो नहीं मिलेगा. अगर 12 है नहीं मिलेगा. अगर 11 है नहीं मिलेगा. 4 है तो नहीं मिलेगा. मतलब 13 अनलकी नंबर है. अनलकी नंबर से आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्रेडिट मिलेगा. 13 इज एन अनलकी नंबर फॉर मोस्ट ऑफ अस, सो 13 तक नहीं मिलेगा. उसके ऊपर अगर मोटर कार है तो आपको मिल जाए. ऑल राइट.
तो वैम पे जीएसटी प्लीज का एक मोड लगा दो, एंड जीएसटी प्लीज अगर आप लगाते हो तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा. यू ऑल नो द एक्रोनिम हियर गाइस. दिस इज अ वेरी गुड शॉर्टकट टू रिमेंबर दिस. एंड गाइस, आपने अगर तीन चीज खरीदी, आपने एक वेसल खरीदी फॉर गुड्स, एयरक्राफ्ट खरीदी फॉर सेलिंग, एंड मोटर कार खरीदी फॉर सीईओ. इस पे किस पे मिलेगा? वेसल पे मिल जाएगा बिकॉज गुड्स है, एयरक्राफ्ट पे मिल जाएगा बिकॉज यू वांटेड टू सेल इट, मोटर कार फॉर सीईओ ये नहीं मिलेगा. जिस पे नहीं मिलेगा इस पे आपको नहीं मिलेगा. तो गाइज, व्हेन यू रिपेयर इट, व्हेन यू इंश्योर इट, व्हेन यू डू एनी मेंटेनेंस वर्क, वो भी इन पे ही मिलेगा, वो इस पे नहीं मिलेगा. दैट मींस व्हाट? वो वेसल को रिपेयर करने के लिए, वो वेसल को रिपेयर करने के लिए मेरे को एक मैकेनिक करना पड़ा. There was a mechanic who repaired my vessel and he charged me 10 lakh rupees plus GST. वो GST का क्रेडिट मिलेगा? यस मिलेगा, बिकॉज वेसल पे मिलता है. बट सेम वे वो मोटर कार ऑफ द सीईओ, अगर उसको मैंने रिपेयर करने के लिए मैकेनिक को बुलाया, उसने मुझे 10 लाख प्लस जीएसटी चार्ज किया, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा बिकॉज मोटर कार का क्रेडिट नहीं मिलता. तो ओरिजिनली जो इंस्ट्रूमेंट, ओरिजिनली जो कार का अगर क्रेडिट नहीं मिलता तो उसका रिपेयर, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा. और ओरिजिनली जिसका मिलता है क्रेडिट, उसका रिपेयर, इंश्योरेंस, मैकेनिक, मेंटेनेंस का भी क्रेडिट मिलेगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड गाइस. फर्स्ट, क्या वो बड़ी चीजों का वैम का क्रेडिट मिलेगा? अगर वैम का क्रेडिट मिल गया तो रिपेयर, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस का भी मिल जाएगा. बट अगर वैम का क्रेडिट नहीं मिला तो उसके ऊपर रिपेयर, इंश्योरेंस का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा. आई एम लुकिंग एट द क्वेश्चंस. सो व्हाट इज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस? Input service distributor, the entire input service distributor concept is for CA final. You don't have to do anything. All you have to do, all you have to remember is input service distributor का invoice registration compulsory होता है. बाकी everything is for CA final. So passengers, trainees, buyers for this purpose exclude employees, right? प्रियांक, इसमें employees है ही नहीं. या आप goods को transport कर रहे हो तो employees कहाँ पे आया? या आप उसको sell कर रहे हो तो employees कहाँ पे आया? या आपको train कर रहे हो तो training में employees नहीं आए. But मोटर कार में एक एक्सेप्शन है. मोटर कार इफ इट्स फॉर अदर देन दिस, अगर अदर देन दिस मोटर कार है और 13 के प्लस कैपेसिटी तो आपको मिल जाएगा. जनरली दे वांट टू कवर बसेस. And do we not need to learn what GSTR needs to be filed? Of course, you need to know which GSTR needs to be filed. We'll do that in the chapter called returns. Don't worry, we'll do it really well. All right. In section 16, which annual return were we referring to? Section 39. Section 39 are the monthly returns. Section 39 are the monthly returns. We'll see when we come to the chapter of returns. Be with me. All right. So guys, VAM का thing over. मैंने गाड़ी खरीदी नहीं, मैंने वेसल, एयरक्राफ्ट, मोटर कार खरीदी नहीं, मैंने हायर पे ले ली. Yeah, I've taken it on lease. Then will I get credit of the GST? See, when you pay the higher charges or when you pay the lease charges, you will also pay GST. Guys, अगर आपने वेसल, एयरक्राफ्ट, मोटर कार खरीदा नहीं है बट आपने उसको रेंट पे लिया है, तो आप रेंट के हायर चार्जेस तो भरोगे, उसमें जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा. सेम रूल. जीएसटी अगर प्लीज है तो आपको मिलेगा, अगर जीएसटी प्लीज नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा. Alright, that completes your VAM block credit on VAM. Let's take an example. Guys, you got a motor car worth 40 lakh rupees on which GST is 4 lakh rupees. So 44 lakh का motor car लेके आए, which can seat 7 people. Will you get credit? No. But this is used to hire for a taxi. Then yes. So please understand, ये GST please का is a very important thing to understand VAM. All right, everyone, VAM is done. Next. Let's look at the next part, जिस पे credits blocked है. Guys, credit block किस पे है? I'm remembering something, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ. All right, guys, credit next किस पे blocked है? Any gym, club, any health insurance, life insurance, any surgeries, etc. that you get done. Let's say you're a television actor and you got a surgery done, and जिसने surgery कराई उसने आपको GST charge किया. Let's say you don't like your face, you got a plastic surgery done, and the person who did the surgery on you charged you some money and you paid GST. Can you claim a credit of that? No, those are blocked. Those are blocked completely for you. Unless आपका ये business of selling it ahead है. मतलब आपने सर्जरी कराई मेरे से, बट आई गिव द वर्क टू समवन एल्स, देन मुझे मिल जाएगा वो. अनलेस आई एम सेलिंग दिस सर्विसेज, आई एम द मिडिल मैन, देन आपको मिलेगा, अदरवाइज ये क्रेडिट ब्लॉक्ड है.
तो वैम का क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें क्लब, जिम मेंबरशिप, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इस पे अगर आप जीएसटी पे करते हो, अगर आप रजिस्टर्ड हो, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, एम्प्लॉइज के लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो बिजनेस के लिए है, रजिस्टर्ड हो, बट फिर भी आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। दैट इज ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट का सेक्शन है सेक्शन 16(5). बी विद मी, बी विद मी। ऑलराइट, next is very very important, guys. ITC company decided to build a new office. So this is the new office building. Can you see? Very big office. ITC written here. ये बिल्डिंग है, उनको बनाना था एक बिल्डिंग, एंड बिल्डिंग के बाहर बाजू में उनको एक पावर प्लांट बनाना था। पावर प्लांट। ऑलराइट, सो ये बिल्डिंग या फिर बनानी थी और एक पावर प्लांट भी बनाना था। दो चीज बनानी थी उनको। गाइस प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव हियर। They said we want a new office, so they wanted to make a building or they wanted to make a power plant, but they were not expert at making the building. So they said कि ये बिल्डिंग बनाने का मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे देता हूँ। वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। So you went to a company and you said, listen, I want a new office building. It should be like this. It should have ITC written on the building only. Please make the building for me. He said, okay, I will charge you 100 crores plus GST. IT said, okay, I will pay you 100 crores plus GST because I can take a credit of this. But then the CA said, sorry, on immobile property, if you are creating an immobile property, is it goods? Guys, remember goods का definition, वो immobile property है ही नहीं, तो इस पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड है तो गाइज आपको बिल्डिंग बनाना है, आपको कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, उस पर अगर आपने जीएसटी पे किया, वो जीएसटी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट व्हाट इफ आई डोंट गिव इट टू समवन, आई मेक इट माई सेल्फ, एंड फॉर दिस आई बाय सीमेंट, आई बाय स्टील, सॉरी उस पर भी जीएसटी आप पे करते हो, उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली वेदर यू मेक इट योर सेल्फ or whether you ask someone to make it for you, this is an immovable property that you are making, इसके लिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब आपने अगर एलएनटी को बोला मेरे लिए ऑफिस बनाओ, एलएनटी ने बोला आई चार्ज यू 100 crores plus GST, you paid that amount, can you take a credit of the GST? No you can't, because immovable property के ऊपर क्रेडिट नहीं मिलता है। शॉर्टकट to remember is guys, immovable property is not goods only. If it's not goods, you cannot take a credit on that. बट ये पावर प्लांट बनाने के लिए गाइस, ये पावर प्लांट बनाने के लिए आपने एक कंपनी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया कि कैन यू मेक अ पावर प्लांट फॉर मी, and they said yes, I will make it, I will charge you 100 crores plus GST, and you said okay, I will pay you 100 crores plus GST. क्या इस GST का क्रेडिट मिलेगा? Yes guys, प्लांट एंड मशीनरी को बनाने के लिए उस पे क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने कुछ पेमेंट किया है फॉर प्लांट एंड मशीनरी, उस पे क्रेडिट मिल जाएगा। Again I repeat, you are trying to make two things. One is immovable property. Immovable property also involves laying down pipes. Guys, जो pipes होते हैं वो भी permanent होते हैं. Those pipes which transfer oil etc. Those pipes जो होते हैं, जो ground में होते हैं, वो that's permanent. That's immovable property. Buildings are immovable property. Anything immovable property पे आपको GST का क्रेडिट नहीं मिलेगा, या फिर आप खुद बना रहे हो तो भी नहीं मिलेगा, या फिर आप किसी और से बनवा रहे हो तो भी GST का क्रेडिट नहीं मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज दैट्स immovable property. बट प्लांट एंड मशीनरी बनवा रहे हो तो आपको क्रेडिट मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी में नो प्रॉब्लम। ओके, तो उसने ऑफिस भी बना दिया गाइस, प्लांट एंड मशीनरी भी बना दी, दोनों चीज बना दी, इसमें दोनों चीज बना दी गाइस। यू कैन सी टू बोथ द थिंग्स, दे ऑलरेडी मेड, दे आर रेडी नाउ। कैन यू सी, अब आईटीसी का बिल्डिंग भी बन गया, आईटीसी का पावर प्लांट भी बन गया। इसके ऊपर कुछ रिपेयर्स है या इंश्योरेंस है या मेंटेनेंस है, क्या मिलेगा? यस, दोनों के ऊपर मिलेगा, इस पे भी मिलेगा और इस पे भी मिलेगा। जस्ट 1 second guys, yeah, on both the things you will get the credit for repair, insurance and maintenance। वैम में गाइस, वैम में नहीं मिला था, वैम में अगर ओरिजिनल वेसल, एयरक्राफ्ट और मोटर कार पे आपको क्रेडिट नहीं मिला तो उसके रिपेयर, इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस पे भी नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे बिल्डिंग पे भी मिल जाएगा एंड प्लांट एंड मशीनरी पे भी मिल जाएगा रिपेयर, इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। सेक्शन 17(5) ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, सेक्शन 17(5) ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, बड़ी बड़ी चीजें हो गई है, वैम हो गई है, वैम में जीएसटी प्लीज उस पे मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एनी जिम, क्लब, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब पे नहीं मिलेगा। बट गाइज, अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक रूल निकाला दैट यू हैव टू प्रोवाइड जिम मेंबरशिप फॉर योर एम्प्लॉइज, तब मिलेगा। अगर वो कंपलसरी है तब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर आपने बिल्डिंग बनवाई है
और उस पर जीएसटी पे किया तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट प्लांट एंड मशीनरी बनाई है उसका जीएसटी पे किया तो वो क्रेडिट मिल जाएगा। एंड गाइस डजंट मैटर वेदर इट्स बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर्स, इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस एवरीडे का काम है, तो उस पर आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इसके अलावा किस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा? गिव मी 2 more minutes, लास्ट फ्यू थिंग्स, एंड उसके बाद आपको मालूम पड़ जाए। गाइस अगर मैं आईटीसी हूं एंड मैंने कोई इनपुट्स लिए हैं, गाइस आई हैव टेकन सम इनपुट्स, इनपुट्स लिए मतलब मैंने जीएसटी भी पे किया होगा, बट मैंने वो इनपुट्स पर्सनल यूज के लिए ले लिए, देन उस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। आई एम रिपीटिंग दिस वन लास्ट टाइम। तीन चीज हो गई, वैम हो गई, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी हो गई, जिम, क्लब, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऑल दैट हो गया है। उन सब में आपने देख लिया कैसे मिलता है नहीं मिलता है। नेक्स्ट गाइस मैंने कुछ इनपुट लिया है, आई एम आईटीसी कंपनी, आई हैव टेकन सम इनपुट्स, इनपुट्स लिए मतलब मैंने जीएसटी पे किया होगा, अगर मुझे चार्ज किया होगा तो मैंने पे किया होगा जीएसटी, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? अगर आपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है तो नहीं मिलेगा। ऑल राइट, और किस पे नहीं मिलता है? वो जो इनपुट्स है, वो जो इनपुट्स है जिसपे आपने जीएसटी पे किया है, वो अगर आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई पे यूज किया है, दो सप्लाईज विच आर नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स, तो आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। आई रिपीट वन सेकेंड गाइस, किस किस चीजों पे क्रेडिट नहीं मिलता है वो देख रहे हैं अपन। अगर आपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपने अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज किया है, मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से आपने खरीदा एक ट्रैक्टर, ट्रैक्टर पे आपने पे किया जीएसटी, अगेन आपने खरीदा एक ट्रैक्टर, ट्रैक्टर पे किया जीएसटी, बट उस ट्रैक्टर को आप यूज कर रहे हो फार्मिंग के लिए, और फार्मिंग इज एग्जेम्पशन इज सब्जेक्ट टू नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, तो आपको ट्रैक्टर पे जो जीएसटी है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो एग्जेम्प्ट अगर सप्लाईज है आपकी, आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है, तो इनवर्ड जीएसटी नहीं मिलेगा। अगर आपने इनपुट्स लिए हैं बट पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिए तो आपको नहीं मिलेगा। ये तो फर्स्ट लाइन ही था, टू टेक आईटीसी यू शुड यूज इट फॉर बिजनेस पर्पस, अगर आपने पर्सनल यूज कर लिया तो आपको नहीं मिलेगा। एंड गाइस अगर ब्लॉक है तो आपको नहीं मिलेगा। ब्लॉक मतलब वैम या बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी या जिम, क्लब एक्सेट्रा, जो आपके ब्लॉक क्रेडिट्स है उसके लिए आपको नहीं मिलेगा क्रेडिट। एग्जेम्प्ट सप्लाईज है उसके लिए नहीं मिलेगा। एंड पर्सनल, पर्सनल आपने यूज कर लिया इनपुट्स को तो उसके लिए भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो पीईबी इसके लिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये पीईबी है, आगे यूज आएगा इसलिए मैंने पीईबी डाल के आपको बताया है। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। आपने इनपुट्स लिए जिसपे आपने पे किया जीएसटी, बट ये इनपुट्स आपने यूज किए जीरो रेटेड सप्लाईज। ये जीरो रेटेड सप्लाईज क्या होती है, and what is the difference between exempt supplies and zero rated supplies? I will clarify it for you all. Exempt supplies तो मैंने आपको बता दिया, आपने अगर फार्मिंग की और जो आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा वो एग्जेम्प्ट है तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई होगी, वो उसके लिए इनपुट्स आप यूज करते हो उस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है गाइस? जीरो, जीरो is actually hero. I'll tell you why. Zero is actually hero because zero rated supplies are those supplies which you export. एक्सपोर्ट कर रहे हो, फॉरेन करेंसी लेके आ रहे हो, यू आर अ हीरो। और जीरो रेटेड सप्लाईज आर दोस सप्लाईज व्हिच यू सप्लाई टू एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो व्हाट आर जीरो रेटेड सप्लाईज? जीरो रेटेड सप्लाईज आर दोस सप्लाईज व्हिच यू इधर एक्सपोर्टेड, आपने कुछ मैन्युफैक्चर किया इंडिया में और बाहर भेज दिया, दोस आर कॉल्ड जीरो रेटेड सप्लाईज बिकॉज पे आपको जीएसटी नहीं लगेगा बट यू आर कंसीडर्ड अ हीरो। और आपने कुछ मैन्युफैक्चर किया और भेज दिया एसईजेड को तो भी ऑल्सो इट विल बी कंसीडर्ड जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब इस पे जीएसटी तो नहीं लगेगा but you will be still considered hero, and that's the reason आपको इनपुट पे क्रेडिट मिल जाएगा। बट क्रेडिट आप यूज कैसे करोगे? तो आप रिफंड ले लोगे। आई रिपीट दिस वन लास्ट टाइम गाइस, यू आर मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल्स एंड मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करके आप क्या करते हो? उसको एक्सपोर्ट कर देते हो या फिर उसको आप एसईजेड में बेचते हो। इन बोथ दीज केसेस दे आर कंसिडर्ड जीरो रेटेड सप्लाईज। जीरो रेट नाम ही बताता है, मतलब जीरो जीएसटी, मतलब जब एक्सपोर्ट करते हो मोटरसाइकिल या एसईजेड को बेचते हो तो ये आउटवर्ड सप्लाई में आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप मोटरसाइकिल अगर बेचते हो 50,000 में तो आपको 50,000 प्लस जीएसटी चार्ज नहीं करना है, आपको 50,000 ही चार्ज करना है। तो जीरो रेटेड सप्लाईज, दिस इज व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाईज। बट जीरो रेटेड इज अ गुड थिंग, राइट? जीरो इज हीरो, जीरो इज एक्चुअली अ हीरो बिकॉज यू आर एक्सपोर्टिंग, यू आर सेलिंग इट टू एसईजेड, तो हीरो है इसलिए जो आपके इनपुट पे जीएसटी उसका क्रेडिट मिल जाएगा आपको। बट क्रेडिट यूज कहां करूंगा मैं? बिकॉज आउटवर्ड में तो कोई क्रेडिट ही नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई में कोई क्रेडिट ही नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो आप रिफंड ले लो, नो प्रॉब्लम, बट आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा।
सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया जीएसटी ऑन इनपुट्स फॉर जीरो रेट सप्लाईज, उसका आईटीसी मिल जाएगा, एंड जीएसटी ऑन इनपुट्स फॉर एग्जाम सप्लाईज, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा. आई होप दिस इज क्लियर. आई होप दिस इज क्लियर. गाइस लुकिंग एट द बुक प्लीज. ब्लॉक क्रेडिट है गाइस, उसमें जीएसटी प्लीज अगर है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा. एक्सेप्शन है अगर पैसेंजर कार्स और बसेस है अबाउट 13 पैसेंजर्स, गाइस 13 इज एन अनलकी नंबर, उसके ऊपर है तो आपको आईटीसी मिलेगा. जो वैम पे आपको आईटीसी मिला है तो उसका इंश्योरेंस रिपेयर पे भी आईटीसी मिलेगा. जो वैम पे अगर क्रेडिट नहीं मिला है तो उसके रिपेयर इंश्योरेंस पे भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. अगर वैम आपने खरीदी नहीं है, लीज की है, तो सेम रूल्स अप्लाई करते हैं. जीएसटी प्लीज देखो, अगर जीएसटी प्लीज है तो लीज पे जो जीएसटी उसका आपको क्रेडिट मिल जाए. हेल्थ सर्विसेज, जिम, क्लब मेंबरशिप, ब्यूटी सर्विसेज, फूड एंड बेवरेज, केटरिंग, मतलब आपने अपने ऑफिस में, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने अपने ऑफिस में केटरर रखा है. दिस इज योर ऑफिस, आईटीसी. इस ऑफिस के लिए आपने केटरर रखा है एंड केटरर ने आपको चार्ज किया 1 लाख रुपीज प्लस जीएसटी. क्या उसका आप जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हो? नहीं ले सकते हो. बट ये केटरर ने किसी और को सप्लाई दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट केटरर ने किसी और केटरर को दे दिया, तो ये केटरर आगे सेल कर रहा है तो ये जीएसटी का ले सकता है क्रेडिट, आप नहीं ले सकते हो. Because for you this is not selling catering services, for you're procuring catering services. Cosmetic surgery, life and health insurance questions I'm looking at. So I didn't understand why will he claim refund, because he may utilize it on raw material purchase also. Raw material purchase पे, Priyank, purchase पे how can you take a credit? One second, just one second guys. Right. The same goes for the power industries also, where GST is not to be paid on power. Entire ITC can be claimed as refund. Yes, entire ITC can be claimed as refund. Will the caterer example be similar to build to ship model? Caterer example will be similar to outsourcing model. आपने आईटीसी कंपनी में केटरर रखा, एक केटरर को बोला लिसन फॉर माय एम्प्लॉइज यू प्लीज प्रोवाइड फूड, एंड केटरर वाज वेरी लेजी, सो केटरर टोल्ड यू कि आई विल चार्ज यू 1 लाख रुपीज प्लस जीएसटी, बट वो केटरर ने कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया एंड इस केटरर ने भी इससे चार्ज किया 1 लाख प्लस जीएसटी, तो ये केटरर इनपुट आईटीसी ले सकता है बिकॉज फॉर हिम ही इज सेलिंग इट अहेड. आई टोल्ड यू गाइस, सिमिलर आउटवर्ड सप्लाई अगर सिमिलर है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्लब मेंबरशिप एक्सेट्रा ये आप बाहर आगे बेच रहे हो तो आपको मिल जाएगा. और अगर लॉ ने बोला है कि फूड प्रोवाइड करो, अगर लॉ ने बोला है फूड प्रोवाइड करो तो आपको मिल जाएगा क्रेडिट, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा इन चीजों. ऑलराइट गाइस, एलटीसी पे भी, एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन जो आपने डीटी में पढ़ा था उसके ऊपर भी, लेट्स से योर एम्प्लॉय ट्रैवल टू सिक्किम, your employee traveled to Sikkim, he stayed in hotels etc, उसने बिल कर दिया 2 लाख रुपीस का, एंड उसने वो सिक्किम में होटल का बिल कर दिया 2 लाख प्लस जीएसटी, एंड यू हैव पेड हिम बैक that 2 lakh plus GST because you're an employer and you will give him leave travel concession, so you paid him that money back. So can you take the GST ka credit? No, you can't take on this. On LTC also you can't take, that is blocked. Just looking at questions in 2 minutes guys. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है तो ब्लॉक्ड है, बट अगर प्लांट एंड मशीनरी पे तो ब्लॉक नहीं है. बट इररिस्पेक्टिव गाइस, रिपेयर इंश्योरेंस दोनों पे मिल जाएगा. यू कैन नॉट गाइस, अगर कॉम्पोजिशन सप्लाई है तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, ये तो अपन ने कल ही पढ़ लिया था. कॉम्पोजिशन सप्लाई डीलर कैन नॉट क्लेम आईटीसी. वो जो शू स्टोर है, जो शूज बेचता है, वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता. एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग दिस. ये शू स्टोर है, ये कॉम्पोजिशन स्कीम उसने ले लिया अंडर सेक्शन 10(1). तो जब वो शूज बेचता है, आउटवर्ड सप्लाई, तो 1000 रुपीज का शूज है, उस पर वो टैक्स चार्ज भी नहीं कर सकता, एंड जो उसका इनपुट है उस पर वो आईटीसी क्लेम भी नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम गिविंग यू द एडवांटेज ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, यू कांट टेक क्रेडिट ऑफ आईटीसी. तो गाइस, फॉर अ कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर दे कैन नॉट टेक आईटीसी का क्रेडिट एट ऑल. ऑलराइट, पर्सनल कंजम्पशन पे आईटीसी नहीं है. एनआर टैक्सेबल अपन देखते हैं एक सेकंड में, दिस इज पेंडिंग राइट नाउ. आईटीसी इज नॉट अलाउड. अगर गुड्स चोरी हो गए गाइस या गिफ्ट सैंपल्स में चले गए तो आईटीसी यू कैन नॉट टेक. ऑलराइट, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का देख लेते हैं एंड देन वी कैन गो अहेड. गाइस, यू नो व्हाट इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नाउ. अगर मैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हूं, कौन होता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन? जो इंडिया का नहीं होता है गाइस. मैंने कल बताया था 5 कंट्री घूम के, वो डेनमार्क, स्वीडन, नेदरलैंड सब घूम के इंडिया में आया, और इंडिया में बिकॉज ही वांट्स टू सेल सम गुड्स इन इंडिया, ही टेक्स अ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन.
एनआरटीपी को टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 27 में मिलता है, मैक्सिमम पीरियड 90 डेज, 90 से एक्सटेंशन भी कर सकता है वो, ऑल दैट यू नो गाइस। ये एनआर जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन ने मेरे पास सीए सर्विसेज ली है एंड आई हैव बिल्ड देम विद जीएसटी, दे विल नॉट बी एबल टू टेक दैट क्रेडिट। The only credit they can take, the only credit they can take is when they import the goods. Guys, एनआरटी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो इम्पोर्टेड गुड्स इंडिया में लेके आएगा, उस पे वो आईजीएसटी भरेगा, उसका वो क्रेडिट ले सकता है, अदरवाइज दे कैन नॉट टेक एनी अदर आईटीसी। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के कोई भी आईटीसी अलाउड नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट फ्रॉम इंडिया, ही कैन नॉट टेक आईटीसी। तो इफ ही टेक्स माय सीए सर्विस एंड आई बिल हिम विद जीएसटी, ही कैन नॉट टेक क्रेडिट ऑफ दैट, बट ही गेट्स सम इंपोर्टेड गुड्स व्हिच ही विल गेट, उस पे वो आईजीएसटी भरता है, उसका क्रेडिट ले सकता है। Looking at the questions, should we learn the definitions given in the, one second, sorry, one second. Do we need to learn the clauses for each block credit, or we can just write 17.5? You can just write 17.5 for all the block credits. So can you use the credit available from zero rate supplies in his other business instead of claiming refund? Yes, you can. No problem. No problem. But Zeal, I'm just assuming if all your supplies are zero rated, let's say all your supplies are zero rated, तो आप कहाँ पे use करोगे? Credit कैसे लोगे? तो आप refund ले लोगे. All right. Will the cater example similar be to bill to ship model? रोशनी, I hope the question is clear. Bill to ship model जैसा है, but वो outsourcing model जैसा हो जाता है. All right. ये सारी चीजें हो गई है. Guys, we are very close. We are very close to this chapter's end. Section 16 हो गया है. Section 17 में almost हो गया है. I'm going to be coming back in 2 minutes and we'll continue. 2 minutes and we continue. All right, guys, I'm back. I'm back. Let me know if you guys can hear me well. Perfect. All right, guys, let's continue. Let's continue. We're one second. All right, guys, continuing ahead. Continuing ahead. Guys, the last few things left, so please be attentive here. I'm ITC and I purchase some goods from you. You're supplying raw material.
You supplied worth 100 crores. 18 crores was the GST on that. Now this 100 crores has come through different invoices. ये एक टाइम में नहीं आया, अलग अलग invoices में 100 crores का आया है. So I want to claim the entire GST of 18 crores. Can I claim that? I can claim it if four conditions are met. If I have a tax invoice, if I've received the goods, if the government has got the tax, and if the returns have been uploaded. But guys, this depends whether, one second, can't see the screen. Can you explain more good, more discount? Meet, what is that more good, more discount? Guys, I hope the screen is now visible. All right, guys, just looking at one more thing here. See, when you buy goods, when you buy inputs on which you pay GST, you will of course want to take a credit of that. You will want to take a credit of that. But for your credit, this guy who's supplying you has to upload the documents, and that's the reason he has to file his return on time. But what if he doesn't apply the documents? Then on those documents, so he uploads some documents and he doesn't upload some documents. That means, guys, one second. There is an explanation pertaining to buy more, save more schemes. Yes, I will explain to you in 2 minutes. Give me 2 minutes. I'll explain to you that. All right. Guys, he uploads some documents, he does not upload some documents. Let's say he uploaded documents worth 60 crores and he didn't upload documents worth 40 crores. So on 60 crores, I will get the entire ITC, and on the remaining 40 crores, because he's not uploaded the documents, I will not be able to take the ITC, but I will be able to take the ITC maximum of 20% of this. Again, I repeat. Let's take some simpler numbers, guys. Let's take some simpler numbers to understand this. Let's say मैंने raw materials खरीदे 100 crores के. I bought 100 crores worth of inputs, जिसपे मैंने 10 crores का GST पे करना है मुझे. I want to take a credit of this entire 10 crores. I want to take an ITC of the entire 10 crores. But unfortunately, the person who supplied to me has not uploaded some documents. डॉक्यूमेंट बेसिकली उसने रिटर्न फाइल नहीं किया है और उसने 10 करोड़ का जो 100 करोड़ का आपको सप्लाई किया है इसका डिटेल्स दिया नहीं अच्छे से. तो लेट्स से ही इज अपलोडेड वर्थ 60 करोड़ and is not uploaded worth 40 crores. Then how much credit can you take? On the 60 crores, of course, is uploaded, so you can take 6 crores का credit. So 6 crores का credit आपको मिल गया. The remaining 40 crores जिसका उसने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलता था पहले you would not get a credit of 40 crores until he uploaded the document, because guys, the government has to get the tax. For the government to get the tax, he should have uploaded the documents, but उसने अगर अपलोड नहीं किया है then earlier नहीं मिलता था, अब मिलता है. कितने तक मिलेगा? 20% of this amount. तो 20% of 6 crores is 1.2 crores. तो या फिर 1.2 crores या फिर 4 crores, whichever is less आपको मिलेगा. तो आपको 1.2 crore का क्रेडिट मिल जाएगा अभी. और बाकी का जब मिलेगा, बाकी का जो बचा है that is 2.8 crore का आपको जब मिलेगा जब वो अपलोड करेगा डॉक्यूमेंट्स. This is one small change, guys. Earlier I told you that अगर वो अपलोड नहीं करता है, अपलोड नहीं किया मतलब गवर्नमेंट को उसने टैक्स नहीं भरा है. अपलोड डॉक्यूमेंट नहीं किया मतलब उसने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरा है, तो इसका आपको पहले आईटीसी नहीं मिलता था. और अभी एक स्मॉल चेंज आ गया है, जितने का उसने अपलोड किया है उतने का 20%, मतलब 6 crores का 20% इज 1.2 crores और 4 crores whichever है, इसका क्रेडिट मिल जाएगा. लेट्स चेंज द नंबर्स गाइस. उसने 90 crores का अपलोड कर दिया है, 10 crores का अपलोड नहीं किया, तो 90 crores का आपको 9 crores का क्रेडिट मिल जाएगा. बट 10 crores का आपको क्रेडिट पहले नहीं मिलता था, अभी मिल जाएगा. कितना मिलेगा? ये जो 9 crores है उसका 20%, तो या फिर 1.8 crores, और इस पे कितना मिलना चाहिए आपको? 1 crore या 1 crore whichever is less. So 1 crore का आपको मिल जाएगा. In now at present this is a change. All right. Looking at the questions.
How will ITC be applicable on that? Okay. So Meet has asked a question. I'm just answering that question before I move ahead. 2 सेकंड लगेगा ये क्वेश्चन का. अगर आपने देख लिया है क्वेश्चन, great. Otherwise, I will tell you. ये क्वेश्चन is buy more, save more. ITC. This is ITC, and this is a raw material supplier. उसने एक स्कीम निकाली. When you buy more, you save more. Okay. तो ये क्या स्कीम है? ये स्कीम है, पहले जब फर्स्ट टाइम मैंने खरीदा, I bought worth 100 crores. And I paid GST, let's say, मैं एक random number ले रहा हूँ, 10 crores of GST. I paid, this is what I paid on my first supply. On my second supply, when I again bought worth 100 crores, he gave me a discount. He gave me a discount. Guys, buy more, save more. He said, now I'll give you a discount. Were the terms agreed beforehand? Yes. Are you giving me the discount invoice wise? Yes. And will ITC reverse the credit taken earlier? Yes. If you promise to do that, then this discount can be minus. So let's say discount says कि total आपने जो खरीदा उसके ऊपर 10% आपको discount मिले. तो टोटल आपने पहले कितना खरीदा 100 crores, अभी कितना खरीदा 100 crores, तो टोटल आपने 200 crores खरीदा, उस पर 10% डिस्काउंट, तो 20 crores डिस्काउंट मिल जाए. तो आप 20 crores यहां से माइनस करोगे. 80 crores पे जीएसटी, लेट्स से 8 crores. तो आईटीसी को 8 crores जीएसटी, तो 8 plus 10, ITC can take an ITC input tax credit of 18 crores. और अगर उसने पहले ज्यादा ले लिया था तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा. दैट्स व्हाट इज बाय मोर सेव मोर. गाइस, बाय मोर सेव मोर इज नथिंग बट अ डिस्काउंट व्हिच इज गिवन टू यू, एंड दैट डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जितना जीएसटी होता है उतना ही आप क्रेडिट ले सकते हो. दैट्स बाय मोर सेव मोर. ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में अपन देख लिया था, बाय मोर सेव मोर इफ इट्स अग्रीड बिफोर हैंड. बट गाइस, इफ द टर्म्स आर नॉट अग्रीड बिफोर हैंड, देन यू विल नॉट गेट दिस माइनस. If you don't get this minus, you will have to pay GST on the higher amount. All right. Guys, looking at this one, we just did this one. GSTR1 क्या होता है, 3B क्या होता है? Guys, this we will do in invoice chapter, which we will do in just some time from now. Let's complete the next one. Guys, the next one, people get massively confused. T1, T2, T3, people get massively confused on that. I will help you understand that one. Be with me for the next part. First, next part का reason समझ लेते हैं. क्या reason है उसका? Guys, give me a second. ये थोड़ा hang हो रहा है. एक second. I'm just going to shut the MCQ. Yes. Next part, guys. This chapter deserves this kind of attention and it deserves this kind of time. So be with me. ITC is one of the most important chapters of your exam. So you have to do this chapter really well with me. All right. I'm ITC. I have some raw materials. I have some finished goods. I have some trucks. I have some CA services. These are my inputs. And my inputs pay total GST that I can take is 100 crores. And this number gets me very happy because 100 crores का मैं credit ले सकता हूँ. This is basically like 100 crores in your Paytm account. You can take a credit of it. You can use it. So ITC is very happy, this company, because it can take 100 crores का. This is basically a gift. This is a gift. So total ITC is 100 crores. All right. इसमें से guys, there are some things on which I cannot claim ITC. Example, अगर इनमें कोई इनपुट्स है जो मैं पर्सनल यूज कर रहा हूं तो उस पर ITC नहीं मिलेगा. इन इनपुट्स में कोई इनपुट्स है जिसको मैं एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहा हूं. एग्जाम्पल, एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहा हूं, मतलब एग्रीकल्चर एग्जाम सप्लाई, लॉट्स ऑफ अदर एग्जाम सप्लाईज, तो उस पर मुझे नहीं मिलेगा. और अगर कोई ब्लॉक क्रेडिट है तो उस पर मुझे नहीं मिलेगा. अगेन आई रिपीट गाइस, आपका टोटल इनपुट्स है जिसपे आपने जीएसटी पे किया है 100 crores का, एंड यू आर वेरी हैप्पी, यू थॉट द एंटायर 100 crores कुड बी यूज्ड. बट लेट मी टेल यू, अगर ये इनपुट्स है जिसको तुमने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया, मतलब आपने एक ट्रक खरीदा, वो ट्रक आपने घर पे ले गए, या आपने एसीज खरीदे, वो एसीज आप घर पे ले गए, तो उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. कोई एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, जीरो रेट पे मिलेगा, एग्जाम पे नहीं मिलता, यू नो दैट. एंड अगर कोई ब्लॉक क्रेडिट है, मतलब मोटर कार सीईओ के लिए खरीदे, उस पे भी आपको नहीं मिलेगा. तो लेट्स अज्यूम 10 crores, 10 crores, 10 crores, ये आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. Alright.
तो आई विल माइनस 30 crores। तो मैं आईटीसी 70 crores पे ले सकता हूँ। ऑलराइट, ये सिंपल चीज है, बट इसको समझने के लिए गाइस, इसको समझ के लिए एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं। इट्स योर बर्थडे, इट्स योर बर्थडे एंड यू गेट अ गिफ्ट, अ ह्यूज गिफ्ट यू गेट। गाइस इट्स योर बर्थडे, you get a huge gift, and let's call this gift ITC. You get a huge gift on your birthday, you open this gift and you find chocolates. Guys, looking at the questions, 1 second. They've mentioned something about capitalization, so can you explain that part once? Harshit, I'll explain the part immediately right now. Before I do this example, guys, capitalization मतलब Harshit, this is the example. आपने ITC ने 5 floor की building बनाई, that building they will capitalize. If they will capitalize, GST नहीं मिलेगा because immovable property बन गई है. But Harshit, अगर ऑफिस में आपने रिपेयर कराया, ऑफिस में लेट्स से आपने रिपेयर कराया, ऑफिस को आपने पेंट कराया, पेंटर ने बोला आई विल चार्ज यू जीएसटी, क्या जीएसटी पे क्रेडिट मिलेगा? दैट डिपेंड्स ऑन वेदर दैट अमाउंट यू कैपिटलाइज्ड। अगर आपने कैपिटलाइज कर दिया है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, उस पर आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। बट अगर आपने उसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया तो दैट मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां बनी? आपने 5 स्टोरी की बिल्डिंग नहीं बनाई, आपने 5 स्टोरी की बिल्डिंग को पेंट करवाया है, उसका लिए someone has charged you 50 lakh rupees plus GST. That 50 lakh rupees plus GST, are you capitalizing it? If you're capitalizing it, then you will not get a credit. But if you're not capitalizing it, it's a P&L account with debit, then you can get a credit. And once he uploads the rest 4, can we avail ITC on the respective 4? Simran, I'm not understanding your question. Which is that rest 4? Can we avail ITC on the respective 4? All right, all right, all right. Yes, just one small change, guys. Just one small change. Thanks, Meet, for pointing that out. ये जो जो मैंने लास्ट एग्जांपल बताया था, जिसमें नॉट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स पे आपको 20% तक मिलता था, वो 10% कर दिया है। प्लीज रिमेंबर दैट, दैट्स एन अमेंडमेंट नाउ, सो 10% कर दिया। जो 20% पे था वो अभी 10% कर दिया। रिमेंबर द नॉट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, उस पे आपको आईटीसी पहले मिलता ही नहीं था, फिर 20% मिलने लगे, अभी वो 10% कर दिया। ऑलराइट गाइस, कमिंग बैक टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, प्लीज बी विद मी फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. Saloni, give me 2 minutes. After this, please remind me if I don't. I'll explain buy one get one free also. All right. Guys, important है. आपको birthday gift मिला. You open the birthday gift. You saw chocolates. Plus, you saw some pebbles. I don't know why someone gave you some stones in that box. Plus, you saw mobile phone. Plus, you saw mobile phone. All right. This was your birthday gift, guys. This was your birthday gift. 1 second. All right. Guys, very important. I'm not talking anything other than what is important. So please be with me. आपको चॉकलेट्स मिली, छोटी छोटे बहुत सारे चॉकलेट्स थे. आपको पेबल्स मिले, कितने पेबल्स मिले? 3 पेबल्स मिले. 1 2 3 पेबल्स मिले. I don't know why someone gave you pebbles, and you got a mobile phone with your name written on it. So guys, ये जो पूरा ITC, ये जो पूरा गिफ्ट है, let's call it ITC. इसमें से आप पहले क्या माइनस करोगे? आप पेबल निकाल दोगे. Why will you need पेबल? तो आप पेबल लेके फेंक दोगे. ये पेबल आपने माइनस कर दिया. उसके बाद जो बचा, उसके बाद जो बचा, so you threw the pebbles out. This pebbles are out. उसके बाद क्या बचा? मोबाइल फोन प्लस चॉकलेट्स. तो आप इसमें से मोबाइल फोन निकाल दोगे, बिकॉज मोबाइल फोन तो आपके लिए है, तो मोबाइल फोन भी निकाल दोगे. जैसे आपने पेबल्स निकाले, फिर मोबाइल फोन भी निकाल दोगे, बिकॉज दैट मोबाइल फोन इज फॉर यू. सो उसमें से क्या बचा? फिर कुछ चॉकलेट्स बचे. दैट चॉकलेट्स यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट. हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट? फर्स्ट 5% of these chocolates will go to your cousins. Automatically 5% तो chocolates cousins को देने ही है. And बाकी जो बचा that is 95%, you will only give to those people who wished you. So let's say your family members had 20 people, out of that 12 people wished you, तो उतने proportion में उनको दे दोगे. जिसने विश नहीं किया उनको नहीं मिलेगा. Guys, ये सेम चीज अपन ITC के लिए भी यूज करेंगे. Going back 1 second, I'll repeat. From your gift, guys, from your gift, first what did you reduce? You remove the pebbles. Pebbles आपने निकाल दिए हैं.
पेबल्स निकालने का क्या बचे, मोबाइल फोन एंड चॉकलेट, बट मोबाइल फोन तो एक्सक्लूसिवली आपके लिए था तो वो भी आपने निकाल दिया, तो क्या बचा, चॉकलेट्स। आपको चॉकलेट्स को डिवाइड करना है, 5% तो आपको कजिन्स को देना ही पड़ेगा, एंड रिमेनिंग जो 95% है वो यू हैव टू गिव इट टू दोस पीपल हु विश यू, इफ दोस पीपल हु डिडंट विश यू दे विल नॉट गेट इट। This guys we will apply now, this we will apply now to ITC. Be with me. This is ITC company. They have 4 inputs. These 4 inputs pay total GST that ITC company has paid is 100 crores. This is the total gift, guys. Total 100 crores is the total gift. उसमें से first you will minus 3 things. You will reduce 3 things. What will you minus? You will first minus that which is for personal expenditure. मतलब आपने जो पर्सनल यूज, जो इनपुट्स है, ये इनपुट्स है आपके, जो इनपुट्स आपने पर्सनल यूज कर लिया, मतलब ट्रक आया आपने घर ले गए, एसी आया घर ले लिया, आपने लैपटॉप्स आए थोड़े आपने घर पे ले लिए, जो पर्सनल इनपुट्स, जो पर्सनल यूज के लिए इनपुट्स लिए हैं उसको आप माइनस कर लो, तो दैट इज 10 करोड़। इतना इनपुट माइनस कर लो। फिर जो एग्जाम के लिए इनपुट्स यूज किया है वो भी माइनस कर लोगे, बिकॉज एग्जाम पे आपको आईटीसी नहीं मिलता। एंड जो ब्लॉक है क्रेडिट्स वो भी आप माइनस कर लोगे, बिकॉज उस पर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता, तो दैट मीन्स यू रिमूव द पेबल्स गाइस। So this is the first thing. What is the first thing that you do? From your total gift, you minus the payments. तो कितना बचा? 70 crore बचा. This is called C. This is called C1. This is T1. This is T2. This is T3. अगर अल्फाबेट्स याद रहते तो ग्रेट, अदरवाइज गाइस रिमेंबर टोटल जो गिफ्ट है, कंप्लीट गिफ्ट, उसको बोलते हैं सी। वो सी को आपने चेंज कर दिया, 3 चीज माइनस कर दी, पेबल्स निकाल दिया, पर्सनल, एग्जेम्प्ट एंड ब्लॉक, वो क्रेडिट्स निकाल दो आप क्योंकि वो आपको मिलते नहीं है। तो बचा कितना? C1, दैट इज 70 crores। उसमें से दोस थिंग्स गाइस, उसमें से क्या माइनस करते हो? मोबाइल फोन, बिकॉज दैट बिलोंग टू यू। इसमें से दोस थिंग्स दैट कंप्लीटली बिलोंग टू आईटीसी ओनली, you will minus that. Let's say that was 50 crores. This is GST on that inputs which are only used for the purpose of business, so I minus kar lo. Why are you minusing this? Because this I don't want to divide. This I don't want to divide. This I'm calling T4. T4 are those inputs which are used exclusively for the purpose of your business. So kitna bacha? 20 crores. This 20 crore guys is partly used for business and partly used for personal. जो पूरा पर्सनल था तो मैंने निकाल दिया, जो पूरा एग्जाम के लिए था वो मैंने निकाल दिया, जो पूरा ब्लॉक था मैंने निकाल दिया, जो पूरा बिजनेस के लिए था वो भी निकाल दिया। नाउ दिस 20 crores of input, this 20 crores of GST of ITC is partly used for business, partly used for personal. How do I divide this further? You first see इसमें से 5% is always out. तो 20 करोड़ का 5% इज ऑलवेज आउट, मतलब 1 करोड़ चला गया। एंड द रिमेनिंग 19 करोड़ यू विल डिवाइड एग्जेम्प्ट में कितना सेल हुआ है एंड टोटल कितना सेल हुआ है। आईटीसी ने एग्जेम्प्ट कितना सेल किया है? लेट्स से एग्जेम्प्ट सेल किया है 10 करोड़, टोटल सेल इज 20 करोड़, तो 50%, तो 50% ऑफ 19 इज 9.5. This is also out, this you will not get, this also you will not get, so this is also out. These are the chocolates that you have to give out to someone. These are the chocolates that you'll have to give out. I will repeat this one last time. ITC total had a ITC of 100 crores. From this you minus the pebbles, जो आपने इनपुट्स पर्सनल के लिए यूज किए या जो आपने एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किए या आपने जो ब्लॉक क्रेडिट्स है उसको माइनस कर दिया, बिकॉज ये क्रेडिट्स आपको मिलेंगे ही नहीं तो आपको माइनस कर दिया, आपको पेबल्स चाहिए ही नहीं तो आपने माइनस कर दी, तो कितने बचे? 70 करोड़ बचे। उसमें से जो एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस है वो माइनस कर लो, तो 50 करोड़ माइनस हो गए, तो कितने बचे? 20 करोड़। ये 20 करोड़ में से मैं कितना आईटीसी ले सकता हूँ? दैट डिपेंड्स। फर्स्ट 5% तो आप नहीं ले सकते हो, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग 5% इज फॉर अदर पर्पसेस, तो आप ये नहीं ले सकते हो, तो ये निकल गया। एंड जो बचा 19 करोड़, उसका इन अ प्रपोर्शन, व्हाट इज द प्रपोर्शन? What is your exempt sales to what is the total sales? Exempt sales और total sales का proportion निकालो, वो 9.5 crores आया, तो 9.5 plus this 1,
10.5 आप यूज नहीं कर सकते हो तो ये आपको पे करने पड़ेंगे, एंड बाकी आप यूज कर सकते हो, तो बाकी कितना बचा, 9.5 करोड़ बच गया। 9.5 करोड़ का आईटीसी यू कैन टेक। So totally, how much ITC I could take? I could take 50 crores. This I can use. This is my mobile phone. This is for me. I can use. Plus जो बचा हुआ चॉकलेट्स है उसमें से 9.5 can use. So total I can take a credit of 59.5. Out of 100 crores I can take a credit of 59.5 because pebbles निकाल दो. Out of the gift of 100 crores, pebbles पहले निकाल दो. Pebbles आपके भी यूज के नहीं है, किसी के यूज के नहीं है, निकाल दो. उसमें से जो एक्सक्लूसिव मोबाइल फोन था वो निकाल दो, जो आप क्रेडिट ले ही सकते हो बिकॉज 100% फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है वो इनपुट्स. एंड बाकी का जो इनपुट्स बचा है विच इज पार्टली फॉर पर्सनल, पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर एग्जाम, उसका 5% तो ऑटोमेटिकली निकाल दो एडॉक. एंड जो बचा है 19, उसमें से डिपेंडिंग एग्जाम सेल्स कितना है डिवाइड बाय टोटल सेल्स, उतना आप निकाल दो, उतना आपको पे करना पड़ेगा. सो ये 10.5 करोड़ का आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो, ये आपको पे करना पड़ेगा, बाकी का आप क्रेडिट ले सकते हो. So what exam was already deducted at T2. Okay, at T2, the one which was exempt, guys, is wholly used for exam supplies. But let's say I have a tractor. वो ट्रैक्टर को मैं सिगरेट के लिए भी यूज करता हूँ और वो ट्रैक्टर को मैं एग्रीकल्चर के लिए भी यूज करता हूँ, तो वो यहाँ T2 में नहीं जाएगा. T2 is exclusively for exam. That tractor which I use only for agriculture purposes, which is coming in T2. But what if a tractor is used for cigarette also? So we subtract 50 crore which was for business use. Yes, you subtract it. Why? Because I don't want to divide it. So 50 crore का तो ITC definitely मिलेगा, इसलिए मैंने निकाल दिया इसको. मोबाइल फोन तो तुम्हारे लिए है तो मोबाइल फोन को निकाल दो, वो यूज कर ही सकते हो. और बाकी जो बचा 20 crores, these are the chocolates. Some of them are for you, some of them are not for you. So जो for you है कौन सा है, 5% are definitely not for you, they are for your cousins. And जो बचा 95%, उसमें से भी आपको डिवाइड करना है exam supplies and normal supplies. And balance rupees 50 crore which is for personal etc we take proper. And balance का 50 crore, balance का 50 crore which is for personal. 50 crore is not for personal. Balance का 5% is for personal. Muskan, let me know. इसका एक sum करते हैं guys. Let's do a sum on this. I'm just putting one sum from this. One second, module से sum लेते हैं. Guys, let's take a sum from the module. Just one second. Guys, just one second, I'm putting something on the screen for all of us, but my Word document is acting up. Just a second and I'll be back. Guys, let's do a sum on this. Let's do a sum on this. I'm just going to put a sum on this on the screen for you guys. One second. All right, guys, just putting something on the screen for y'all. This is one example from the module, guys, which if you all do it, it'll be great. Right now, I don't think we have the time to do this, but please try and do this. I'm just going to give you T1, T2. मैं आपको बता देता हूँ. Making an assumption that Hawaii slippers are exempted, guys. ये पूरा sum आगे से चालू होता है.
नो आई थिंक यहाँ से चालू होता है. लेट्स स्पेंड 5 minutes. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड ब्रीफली ये सम क्या है. एक कंपनी है, वो स्लीपर बनाती है. हवाई स्लीपर्स आर एग्जेम्प्टेड. ओके गाइस, एग्जेम्प्टेड है कौन से? हवाई स्लीपर्स. एक इजी फुटवेयर कंपनी है, आईटीसी नहीं है, इजी फुटवेयर है, ये कंपनी का नाम है. ऑल राइट. मैन्युफैक्चर्स टू काइंड्स ऑफ हवाई स्लीपर्स एंड 5 varieties ऑफ अदर सैंडल्स. गाइस, एक है नॉर्मल टैक्सेबल एंड एक है एग्जेम्प्ट. हवाई जो है वो एग्जेम्प्ट है, अदर वाले 5 जो वेराइटीज है वो टैक्सेबल है. बट प्रॉब्लम क्या होता है, इजी फुटवेयर विल हैव इनपुट्स, एंड ये इनपुट्स पे आईटीसी कितने पे कैसा मिलेगा वो अपन को देखना है फ्रॉम दिस एग्जाम. बी विथ मी. Dyes are used in the manufacture of all footwear. I'm looking at your questions. 1 second. 20 crore में से proportionate, absolutely right Muskan. Look at this question. Okay, dyes are used in the manufacture of all footwear. All right, so dyes आपकी inputs है guys. Bright pink is used only for Hawaii. Guys, जो bright pink है is only for exempt. Black is used only for sandals and shoes. तो जो black है वो is only, that input is only and only for business purpose. That's your mobile phone. Blue and yellow are used for all varieties. Guys, जो blue है और जो yellow है वो दोनों में यूज आते हैं. तो इसको आपको अपोर्शन करना पड़ेगा, ब्लू एंड येलो को आपको अपोर्शन करना पड़ेगा. ब्राउन इज यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, मतलब गाइस वो पर्सनल पर्पस के लिए है. तो ब्राउन को मैं पर्सनल लिख रहा हूं, वो पेबल है. ऑलराइट. Inward supplies during the month is as follows. Guys, total input tax is 2,55,000. ये आपका टोटल गिफ्ट है. So चालू करते हैं 2,55,000 से. फर्स्ट लेट्स रिमूव द पेबल. इसमें से पेबल माइनस करना है. पेबल मतलब पर्सनल के लिए कुछ है क्या? हाँ, ब्राउन वाला पर्सनल के लिए. तो ब्राउन का कहाँ है? ब्राउन का अमाउंट 10,000 है, पर्सनल के लिए है, तो माइनस कर देंगे 10,000. कोई एग्जेम्प्ट के लिए एक्सक्लूसिवली है क्या? हाँ, पिंक जो डाई है वो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट है, तो वही माइनस कर लेते हैं. पिंक कहाँ है? पिंक कहाँ है? ब्राइट पिंक 90,000, वो भी माइनस कर लेते हैं. और कोई ब्लॉक है क्या? ब्लॉक जैसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो उसको अभी नहीं लेते. तो पेबल अपने निकाल दिए हैं, तो 1 लाख माइनस कर दिया, तो 1,55,000 बच गया. दिस इज सी, दिस इज C1. पेबल्स माइनस करने के बाद जो एक्सक्लूसिवली तुम्हारा है, मतलब मोबाइल फोन, वो माइनस कर रहा हूं मैं. तो गाइस, कौन सा है मोबाइल फोन एक्सक्लूसिवली? जो ब्लैक है वो एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए है. तो ब्लैक डाई पे कितना जीएसटी है? 40,000. वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. मैं अभी माइनस कर रहा हूं बट आपको डेफिनेटली मिलेगा. तो 1,15,000 हो गया है. आई एम राइटिंग आईटीसी कितना मिलेगा? 40,000 का आईटीसी तो डेफिनेटली मिलेगा. यहाँ पे मैंने माइनस क्यों किया है? बिकॉज आई वांट टू सी दैट आईटीसी व्हिच इज कॉमन, सो आई कैन एग्रीगेट, आई कैन सेग्रीगेट. और ये जो 1,15,000 है गाइस, इसमें से 5% तो बाहर निकाल दो, एंड जो 95% बचता है दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन exempt सेल एंड टोटल सेल्स. That's how you will do this sum. You can do the rate of the sum, rest of the sum later, but this is how you will do this sum, guys. Always remember, पहले पेबल्स निकाल दो, पेबल्स के बाद मोबाइल फोन तुम्हारे लिए है वो निकाल दो, उसका तो आईटीसी आपको मिलेगा ही मिलेगा. एंड जो बचता है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा. 5% तो आपको चॉकलेट्स बाहर को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एंड जो 95% बचता है उसको एग्जाम सेल्स अपॉन टोटल सेल्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है. एंड जो बचता है रिमेनिंग, वो है आपका आईटीसी. तो 40 प्लस जो बचा है रिमेनिंग, वो आपका आईटीसी होगा. आई एम लुकिंग एट क्वेश्चंस इफ एनी. 5 and 95% is standard ratio. गाइस, अगर 5% बाहर के लिए है, 95% पे आपको रेशियो लगाना है. एग्जाम्पल गाइस, एग्जाम्पल, यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 1,15,000 बचा. इसका 5% is always standard. हेतु 5% is always standard which you have to distribute ahead. It's not yours. जो 95% है, that depends on what is the exempt sale and what is the total sales. If the exempt sales is let's say 50%, तो 95% का जो 50% है वो आपके लिए नहीं है. So I didn't understand post pebble का step. All right, guys, this is too difficult now to explain, but I will try one last time. All right, guys, let's continue with this. From 2,55,000, I minus pebble.
पेबल मतलब 10,000 भी माइनस कर लिया, 90,000 भी माइनस कर लिया, पेबल निकाल दिए तो 1,55,000 हो गया। उसके बाद टेल मी दैट वन विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, 40,000 द ब्लैक डाई इज एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, तो वो माइनस कर दिया। व्हाई हैव आई माइनस दैट? बिकॉज उतना तो तुमको मिलेगा ही आईटीसी, तो मैंने निकाल दिया है एंड पार्क कर दिया है मेरे आईटीसी के कॉलम में। उसके बाद कितना बचा? 1,15,000 बचा। नाउ दिस 1,15,000 इज फॉर बोथ एग्जेम्प्ट ऑल्सो एंड फॉर बिजनेस ऑल्सो। ये मुझे बाइफोकेट करना है, लेट्स डू द बाइफोकेशन। लेट्स गो बिलो। Total turnover of Hawaii chappals is 3 crores. मतलब exempt sales is 3 crores. And total varieties of shoes का 2 crores, मतलब total sales is 5 crores. तो ये जो 1,15,000 बचा, उसमें से पहले 5% तो निकाल ही दो, बिकॉज वो आपका है ही नहीं। assumption है कि 5% is always out. 5% of that is always out. एंड जो बाकी का 1,15,000 पे 3/5 करना है। 3 crores है exempt supply, 5 crore is a total supply. Sorry guys, 95 नहीं लेना है, total 100% पे ये 3/5 करना है, which is 69,000. This 69,000 is also not yours, guys. This is the chocolates that you need to give to your cousins. So this 69,000 plus 5% of 1,15,000. This 69,000 plus 5% of 1,15,000 ये आपके नहीं है, ये आपको किसी और को देने पड़ेंगे। And जो remaining है of that 1,15,000 that you can take plus 40,000 you can take. 40,000 तो आप ले ही सकते थे पहले से। Alright. Sir, in module it stated that you can take proportion of exempt sales from C2. Got it? 1 second, Ishan. Ishan, looking at your question. In module it stated that you can take proportion of exempt sales from C2. That's what we're taking. C is the exempt sales. This 3 crore is the exempt sales out of the total sales. Utna from the common credit. Yes, my bad. I said 95%. No, it's 100% of the common credit. तो 1,15,000 जो common credit है, उसका same proportion करोगे, और जो proportion exempt के लिए है वो आपका नहीं है, वो D2 है, वो आपको distribute करना। So finally guys, ये 40,000 आपका है, 40,000 तो आपका है। Guys, जिसको नहीं समझ रहा है ये don't worry, give it up. But जिसको समझ रहा है great, do it with my example. ये 40,000 तो है आपका। उसके ऊपर जो यहाँ D1 और D2 में नहीं है, जो बैलेंस है गाइस, 1,15,000 में से D1 माइनस कर लोगे आप और D2 भी माइनस कर लोगे, एंड जो बचा वो भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। That's all the energy I have today. I need a break right now, guys. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. ITC का थोड़ा part is left. Most of ITC is done. Let's do some question and let's take a lunch break, guys. Let's do some questions right now. I'm shutting this off. I'm starting the MCQ sheet. Let's look at the questions. All right, guys, questions on the screen, please. Questions on the screen. Proportionate credit of common credit, right? Yes, proportionate credit of common credit. Simran, absolutely right. Meet, looking at your question. So why is D1 and D2? Why is D1 added to output tax liability? Haven't we anyways paid it at the time of purchase? No, Meet, here it says that you've taken a credit of it. If you've already taken a credit of it, then you will put in the output tax liability. The assumption, Meet, here is that you've taken the credit of it and hence you put it again in the output tax liability. All right. Guys, looking at the questions from here, the first one, whether credit on capital goods can be taken immediately? Yes, you can take it immediately, provided it's for business purpose. After usage, नहीं, after usage का जरूरत नहीं है, after capitalizing ये भी जरूरत नहीं है, immediately you can take it because they're capital goods.
कैपिटलाइजिंग का जरूरत कब आता है? जब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बनवा रहे हो तब कैपिटलाइजिंग का पॉइंट आता है, अदरवाइज यू कैन टेक इट इमीडिएटली. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. Under section 16(2), how many conditions are there? 4, and you have to fulfill all of them. Third question: whether credit on inputs should be availed based on receipt of documents or receipt of goods. दोनों होना चाहिए, डॉक्यूमेंट भी मिलना चाहिए आपको एंड गुड्स भी मिलना चाहिए. Guys, too rude to get room. टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट भी मिलना चाहिए एंड गुड्स भी रिसीव होने चाहिए, तो दोनों होना चाहिए. तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट: whether ITC can be availed without actual receipt of goods when goods are transferred through transfer of document or title before or during the movement of goods. मुझे क्रेडिट लेना है गाइस, मुझे क्रेडिट लेना है, बट इन बिटवीन आई सोल्ड इट टू यू, बिल टू शिप, in between I sold it to you, then yes, I can, in some circumstances, I can take the credit. I ordered the goods, but before they came to me, I gave it to you, I sold it to you. In those circumstances, I can also take a credit. Or the answer is C, yes, in special circumstances. In case the supplier has deposited the taxes, but the receiver has not received the documents, is receiver entitled to avail credit? क्या ITC ले सकते हो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आए? अनफॉर्चुनेटली नहीं ले सकते हो, as one of the conditions is not fulfilled. That's the right answer. You cannot take ITC unless you get the documents. What are the documents, guys? Invoice या bill of entry या payment voucher आपको मिलना चाहिए. Input tax on capital goods and on inputs, मतलब ITC on capital goods as well as on inputs can be availed in one installment or in multiple installments. ऐसा installment basis पर अपने कुछ सीखा ही नहीं था. The moment you buy the capital goods or the moment you buy these inputs, you can take it in one installment. मतलब गाइस अगर आज सितंबर में आपने खरीदा तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा इसका क्रेडिट, बट ओनली कंडीशन इज दैट पेमेंट कर देना 180 डेज में. So the conditions to root get room are cumulative, right? Yes, cumulative. All 4 conditions are to be satisfied. The tax paying document in section 16(2) is bill of entry, yes. Invoice, yes. Acknowledged copy of tax paid to department, ऐसा तो कुछ नहीं था. Supply invoice by the recipient. No, recipient का supply invoice नहीं है. All of the above नहीं है. Answer is this. Bill of entry या invoice raised on RCM supplies. This is the answer. All right. Next, the time limit to pay the value of supply and taxes to avail the input tax credit. Guys, कब तक आपको पेमेंट करना है? Within 180 days. अगर 180 days में आपने नहीं किया तो आपका रिवर्स हो जाएगा and you will have to pay that along with interest if you use the credit. What is the time limit for taking the input tax credit by a registered taxable person? You can take it as long as your return filing due date, रेलेवेंट ईयर का एनुअल रिटर्न जब तक फाइल करते हो, या फिर सितंबर मंथ का डेडलाइन दैट इज 20th अक्टूबर. एनी ऑफ दिस. सो डी इज द राइट आंसर. अर्लियर ऑफ द टू. ईयर खत्म हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. उसके बाद जो सितंबर का ड्यू डेट आता है दैट इज 20th अक्टूबर, और रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट विचएवर इज अर्लियर शुड बी योर एक्सपायरी. ऑलराइट. Can the recipient avail input tax credit for the part payment of the amount to the supplier within 180 days? Yes, अगर आपने पार्ट पेमेंट किया है तो yes, proportionately you can take of the value and the tax paid. Let's say मैंने टोटल इनपुट था 10 करोड़ का, मेरे को 180 डेज में पेमेंट करना था, बट मैंने 180 डेज में ओनली 8 करोड़ का पेमेंट किया है, तो आपको 8 करोड़ पे तो मिल जाएगा, प्रोपोर्शनेटली आपको उतना क्रेडिट मिल जाएगा, बट 2 करोड़ का जो क्रेडिट है उस पर आपको रिवर्सल करना पड़ेगा. Guys, we missed this part. For banking companies and NBFCs, they, instead of doing this calculation of T1, T2, T3, T4, they have an option of taking 50% of the ITC. Every month, 50% of the ITC they can take, or they can do the calculation of T1, T2, T3, they can do that calculation. It's up to them. So they can choose any of them. This is option A, this is option B, they can choose any. But guys, this option you cannot be changed during the financial year. Can banking company withdraw the option during the financial year? No, they cannot. Once taken, you have to stick to it. So every month you either take 50% of your ITC or you calculate it depending upon you. Generally, most banks
take 50% option because it's much easier, especially in banking companies. All right. Any input tax paid on purchase of goods by an SSE for his employees is eligible. Guys, generally employees के लिए it's not eligible, is not eligible, but it's only eligible on the services which are obligatory. I told you, अगर आपने health insurance employees के लिए लिया है या food employees के लिए provide किया है, because under a law it's compulsory, then you can get a credit. So answer is C. Next, ये वाला बाकी है, अभी तक सेक्शन 18 से बाकी है ये 18th के लिए, ये सारे 18th के क्वेश्चन है which is left yet. All right. You are the principal. Are you entitled for ITC on the goods that you have bought, but you have not received those goods? The receipt have been sent to a job worker. Guys, मैंने रिसीव नहीं किए बट मेरे इंस्ट्रक्शन पे किसी और को दे दिए हैं, तो ये भी आप क्रेडिट ले सकते हो. yes, because receive does not only mean received by you. Receive can be by some third party also. No problem as long as you told him to deliver it to a third party. All right. Guys, mismatch है. आपने सप्लायर से कुछ खरीदा है XYZ, आपने सप्लायर से XYZ 3 इनपुट्स खरीदे हैं, उसने ओनली XY का डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो क्या आपको Z का मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. तो ये आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, if there is a mismatch of the supplier's outward supply and the recipient's input tax credit on the same transaction, आपने ये input tax credit ले लिया है बट वहां पे उसने अपलोड नहीं किया या मिसमैच हो रहा है, then guys आपको नहीं मिलेगा. They will believe the outward supplier, they will believe the supplier, and hence in this case ये अपन जब इनवॉइस करेंगे उसमें आएगा. बट प्लीज समझ लो, आपने खरीदी 3 चीज XYZ, बट सप्लायर ने सिर्फ दिखाई X एंड Y, Z दिखाई नहीं उसने, तो गाइस देयर इज अ मिसमैच. इन दैट केस आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ये ऐड हो जाएगा. ऑलराइट, ये भी चीज पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर की है, यहाँ की नहीं है, so we will do it when that comes. Alright, with that, with section 18 left, I think I have this amount of energy right now. I would want to take a lunch break now. Guys, it's 1:07. We'll come back at 1:37. We will complete section 18 of ITC, and then we will straight go to chapters which are invoices, time of supply, which is very important and very too many shortcuts there, and things like payment of tax. Those we will do once we come back. Slightly slower today because this chapter demanded that kind of attention, but don't worry guys, ITC was an important chapter and it demands this kind of attention. Guys, again I'm trying to wrap up everything in 2 days, so in case I'm missing out on something and you want that kind of attention, like Saloni had asked, buy one get one free, I'll discuss that before we take a break. Guys, what is buy one get one free? This is me. I buy a laptop, I get one free. And for both laptops, I have paid 2 lakh rupees. For both laptops, I have paid 2 lakh rupees plus GST, let's say 20,000 rupees GST. So I have paid 2,20,000 rupees for these 2 laptops. Can you say that this is without consideration? No, consideration hai, but hidden hai. So will it be covered in supply? Yes. Vijay sales के लिए supply is 2 lakh rupees का. On that GST is 20,000, so it will pay GST to the government of 20,000. Nothing changes guys. Buy one get one free. You have to ignore the fact that it's free. It's not free. The second का जो cost है उसने एक ही इसमें ले लिया है. That means you've got 2 laptops, but instead of paying differently, you paid one price. So buy one get one free is actually a scheme whereby for the free good you paid the price already. So if you paid the price, can you take the ITC? Yes, if you are registered. If you're using it for the purpose of business, you can take the credit. And will Vijay sales be considered as a supply for this? Yes, the supply is for both the goods together. It's almost like a bundled good. Guys, buy one get one free is almost like a bundled good. Together you have to consider it. Exemptions also we will try to do, otherwise we will record it. We will see guys today how it flows. We have a couple of more chapters today and we have very little time, so we'll have to crunch. Come back from lunch and we will go ahead. Guys, right now it's a lunch break. We come back in about 30 minutes and we continue. I'm going to be back slightly earlier in case you have any doubts or you have any clarifications. I'm going to be back slightly earlier. But Saloni, buy one get one free, ignore the free part.
It's a scheme whereby, of course, you're getting two products and you're paying one price, but that one price covers both the products, and hence it's a normal supply. It's a normal supply covered under 7(1)(a). It's a supply for business for furtherance of business and for a consideration, so it's a normal supply. All right, everything, questions, etc. Once we come back from the break. Perfect. Will Jammu and Kashmir and Ladakh will come under Union Territory? Francie, that is something that is not for your year because financial year 1920 May, that will not be covered. Sir, approximately when will the session start? The session will start in exactly 30 minutes from now. We have a nice 30-minute lunch break. Have your lunch nicely and come back with all the energy. Thank you guys. I'm putting everything on mute right now. We'll come back and we'll continue.
All right, guys, I'm back here. I hope you guys had a decently good lunch. I hope it's not a really heavy lunch, and I hope we can do more now post the lunch. While the others join in, let's try and complete the last leg. Let's try and complete the last leg of ITC, after which, we can discuss a couple of more questions. So, guys, ITC chapter is really important because ITC tells you, just one second. Oh, voice is lagging. All right, just 1 minute. It will get better now. All right, hoping it gets better now. Hoping it gets better now. 1 second. All right. Perfect. Pretty clear is pretty good. All right, guys, let's continue. As you can see on the screen, ITC chapter at section 16, which lay down some conditions, and the conditions were cumulative. There were 4 conditions: to route to get room, get the document, receive the goods, pay the government, and file your returns. Don't take depreciation on GST, otherwise you will not get ITC. And when will ITC get expired? These were some sections we saw in the 16.1. Of course, the 180-day period is also important, or also comes from the same part. Next, we straight off jump to section 17.5, which talks about blocked credits, where we looked at VAM, GST please. We looked at health insurance, life insurance, clubs, gyms, catering, F&B, food and beverage, on which you will not get credit. We also saw immovable property and plant and machinery, works contract of which immovable property as well as self contract of immovable property you will not get any GST credit. Plant and machinery you get it. We saw that on personal, if you use some inputs for personal use, then on that you don't get any ITC. If you use it for exempt supplies, again you don't get any ITC. If you use it for zero rated supplies, of course you get ITC. A non-resident taxable person gets only limited ITCs because in India he does not get any ITC, or for the goods that he gets from outside India, he gets ITC on that IGST paid on imports. Then we learned how to bifurcate this IGST in 17 section only. We learned how to bifurcate this IGST from the gift, from the total gift. You minus the pebbles because that is not counted. You don't get ITC for that. What remains? You minus the mobile phone from it. Mobile phone is yours and you are removing it so that you can take ITC of it. And what remains is common credit, CC twice, common credit. That common credit, 5% is assumed to be not yours, and of the C2, a proportion of exempt sales to total sales is considered to be D2, and this D1 and D2 is put in output tax liability because they consider that you've already taken credit of it and now you're making a payment back. Of course, it has to be paid back with interest. And the remaining, so that means from C2, if I minus D1 and D2, whatever remains is also something that I get ITC. So I get ITC here also, and I get ITC here also. The total of these two is what the ITC that I get. Now the last leg, which is a section called section 18. All right. Now I had a shoe shop which had not crossed the turnover, so I did not register, or so I basically did not cross the threshold, so I did not get myself registered, or I was selling exempt goods. Is it E dash F into C2 or E by F into C2 minus D1? It's C by F
into C2. Means it's C by F into C2. All right. Guys, continuing, just let me just put this somewhere here in the corner. All right, just 1 second, guys. Perfect. So now, yeah, now section 18, let's look at the last section, that is section 18, and then we complete ITC. How is it adjusted? That we will see in payment chapter. IGST against SGST against SCGST, all that we will see in payments chapter. All right. Next is section 18. So I'm here, I'm a shoe shop. I have inputs. I buy raw materials. I buy some finished WIP and I also buy some finished goods. I have inputs. So these are my inputs. On these inputs, I have paid GST. On these inputs, I have paid GST, but I can't take a credit because I'm not registered. All right, that's the first scenario. Second scenario, I'm an agriculturalist. I have inputs. These are my inputs on which I have paid GST, but again, I cannot take ITC. I cannot take ITC because the goods are exempt. And the third scenario, I have a shoe shop again. I have inputs on which I have paid GST, but I can't take ITC because I'm a composition scheme dealer. So guys, first I was not registered. Why was I not registered? Because probably I didn't reach the threshold and I didn't want to voluntarily register. I was selling exempt goods, so I didn't register. Or I was in composition scheme, sorry, I was in exempt, so I didn't take ITC because I can't take ITC. And now I'm in composition scheme, so again I can't take ITC. So in all these three cases, guys, you could not take ITC. Now suddenly, I'm going to the next page. 1 second. Now suddenly all these three guys get subject to tax. I'll tell you how. This shoe shop guy reaches his threshold. Guys, the moment this shoe shop guy, so can I say this shoe shop guy, if he reaches the threshold, what will be the threshold? 40 lakhs. Once he reaches the threshold, he has to get himself registered within how many days? Within 30 days. And if he does that, again I repeat, this shoe shop guy who was not registered earlier because he had not crossed the threshold, he reaches the threshold, he decides to get registered within 30 days, or he gets voluntarily registered. Even if he doesn't reach the threshold, he gets voluntarily registered. In both these cases, what will happen? Now he can take ITC. But how will the government know? So once he gets registered, and let's say the registration date is today, 29/9/20, then exactly the previous day, that is on 28th September, whatever raw materials, whatever WIP and whatever finished goods he had, on that, whatever GST he had paid will be allowed to him henceforth. I'll repeat this one last time. Earlier, I was not registered. Why was I not registered? Because I didn't cross the threshold. Now I either cross the threshold and hence I get registered within 30 days, or I voluntarily get registered. In both these cases, now I can take ITC. And they allow me to take ITC even on the raw material, work in progress, finished goods that I have in stock,
एज ऑन द 28th of September. जो भी मेरा स्टॉक है उसका मैं क्रेडिट ले सकता हूँ प्रोवाइडेड द इनवॉइसेस आर नॉट 1 year के ऊपर है. मतलब whenever I take the credit, the invoices should not have been issued prior to 1 year. All right. That's the first scenario, guys. So now I am registered. Now I am registered either because I had to compulsory register under section 22 or I got voluntary registered, but I'm registered. So now I can take the ITC and even I can take previous raw material, work in progress and finished goods ka, the credit, GST ka credit I can take. But guys, if I had taken some capital goods जिस पे मैंने जीएसटी पे किया होता उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा इन द फर्स्ट सिनेरियो. सो इन द फर्स्ट सिनेरियो व्हिच आई एम क्लोजिंग राइट नाउ इट्स ओनली रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, उस पे जो जीएसटी है उसका मैं क्रेडिट ले सकता हूं. ओपनिंग जीएसटी इसको बोल देंगे. 28 सितंबर का जो डेट है उस दिन मेरे स्टॉक में जो भी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स है उसका जीएसटी क्रेडिट आई कैन टेक. बट कैपिटल गुड्स का आई कैन नॉट टेक. दिस कुड बी एन एग्जाम क्वेश्चन. नेक्स्ट, these are agricultural commodities which were exempt. Now this exemption is removed. Are we not doing manner of determination of input tax credit in respect of capital goods and reversal thereof? This is what we're trying to do. This is what we're trying to do. This is raw material pay, whatever credit you had, WIP pay, whatever credit you had, and finished goods pay, whatever credit you had. You will now be able to take a credit of it. Capital goods pay, you will not be able to take. All right. Next, these goods were exempt. Oh, capital goods. No, capital goods. I don't think I have the time right now to do it. If we get some time, we'll do it. But I don't think that's really important. But we could do it. Okay, okay. Meet got your point. Let's see. Let's see. We'll try and cover that as well. All right. But now we've begun this, so let's complete this. Guys, agricultural goods were earlier exempt, and because they were exempt, I could not take ITC. Now the exemption is removed, so now they are taxable. Assuming now they are taxable, again, if they become taxable from 29 September, देन 28 सितंबर जैसे उस दिन के पहले का जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी WIP है, जो भी फिनिश गुड्स है उसका ITC मुझे मिलेगा, प्लस जो कैपिटल गुड्स है उसका भी ITC मुझे मिलेगा. सो रॉ मटेरियल पे लेट्स से 10,000 का ITC था, WIP पे 10,000 का था, फिनिश गुड्स पे 10,000 का था, उस पे मुझे तीनों पे ITC मिल जाएगा. But what about capital goods? इस पे भी ITC मिलेगा. But guys, they will not give you the entire ITC. Let's take an example. Let's say you had bought a capital good. That means you had bought a truck. Truck you bought for 10 lakhs. उस पे let's say there was 1,20,000 of GST. But they will not give you the entire credit of 1,20,000 because they know you've used it before. You've used it before when the goods were exempt. You've used some of it before. So they will ask you, when did you buy this truck? And you tell them that I bought this on the 1st of Jan 2020. Right now it's September, and from 1st of Jan, they will calculate quarters. Jan, Feb, March, 1 quarter, April, May, June, 2nd quarter, July, August, September, 3rd quarter. And they will say 3 quarters into 5% per quarter, that is 15% of 1,20,000 we will not allow you. Let's take it 2 quarters only. So let's say 1st of April ko he bought it. So 2 quarters. So 10% of the ITC you will not be able to take. So 1,20,000 ka 10%, 12,000 you will not be able to take, and you will get a credit of only 1,08,000. That's how they do it. But good part is they allow you capital goods ke upar bhi. In this case, in the second scenario, they also allow you on capital goods. Looking at the question, Amya, so ITC can be taken on goods, raw material, WIP purchase after date of registration until 1 year prior to date of registration. See, after date of registration, there is no problem. The problem is on the date of registration before that, because once you register, you can always take ITC. So ITC can be taken on goods, raw materials purchase. So Amay, I hope you got the point. Once you're registered, after that you can definitely take ITC. This is of your stock which was existing before you got registered.
quarters are calculated from when? When did you buy the asset? So basically from 1st of April, or let's say this was 15th of April, then quarter will be counted April, May, June. Even one day of the month will be counted. So guys, let's assume this truck was bought on 15th April. So April, May, June is one quarter. July, August, September is another quarter. If this was March, then you would take Jan, Feb, March as the first quarter. You would take, so every 3 months is a quarter, even a part of the month is also a quarter. So this is how you will, the second scenario is this, guys. This is the second scenario. So we will get ITC only for the stock on date of registration, not all purchases from the past 1 year, right? No, from the past 1 year purchases you will not get, only for the stock you will get. Third scenario, you are under composition scheme, but now you don't want to be under composition scheme, you want to be under the normal scheme. You can actually make an application to switch over from the composition scheme to normal scheme, or when you cross a certain threshold, you automatically have to come under the normal scheme. In this case also, you will be allowed ITC. And here also, for raw materials, for WIP and for finished goods, you can take the credit. Plus on the capital goods, you can take a credit. So this one also you can take on capital goods. Same thing, 5% per quarter minus karne ke baad. All right. So guys, these are scenarios which are given in this line. Register, Varna, credit will expire. Register, guys, if you don't register, these credits will expire. So that's why register, Varna, credits will expire. This is section 18, where either you register compulsorily or voluntarily, or you're out of the composition scheme, or you're out of the exemption. In these cases, you will get credits of ITC. In the first two of raw materials, work in progress, finished goods, and the last two, you will also get of capital goods, but after deducting 5% per quarter. I hope you understood this. Guys, this is growing from a place where you did not get ITC to now getting ITC. All right. Let's look at 1-2 questions on this. 15 question on the screen. Eligibility of credit on capital goods in case of change of scheme from composition scheme to regular scheme. Register, Varna, credit will escape. In these two, you also get for capital goods, credit. Eligible during application for regular scheme, not eligible. Yes, immediately before the date from which he becomes liable to pay tax under the regular scheme, none of the above. Will you get credit on capital goods in case of change of scheme from composition to normal? Eligible during application for regular scheme, not eligible. Yes, immediately before the date from which he becomes liable to pay tax under the normal scheme. So 15C looks like the right answer. I can't see the answers to this question. All right, anyway, these are the 3 scenarios or 4 scenarios, and the acronym is register, Varna, credits will expire. The only difference is in the first scenario, you don't get capital goods pay credit. In the second and third scenario, you get capital goods pay credit as well. Now, guys, the opposite. Now, let's look at the opposite. You were taxable. And now you've either cancelled your registration, you either come out of registration, or your goods have now become exempt, or you've selected composition scheme. It's the reverse, guys. You were earlier taxable, matlab you were registered and you were paying tax. Now you're either not registered, or now you're not exempt. You're exempt now. So matlab you've come from a state where you were taking ITC to a stage where you can't take ITC. And because you can't take ITC, they will do a reversal. So let's take a shoe shop only. You were a shoe shop.
you had raw materials, you had WIP, you had finished goods. Plus, you had, let's say, capital gain, capital asset. All these were your inputs. On these four inputs, you were taxable. You were under the registered taxable scheme. So you were taking ITC. Guys, can you take ITC? Yes, for the purpose of business. And you were registered. So you were taking ITC. But now you choose to come under composition scheme. And if you choose to come under composition scheme, you'll have to do a reversal. What is a reversal? They will say, on this raw material, how much is the ITC you already claimed? So you say 10,000. On WIP, 10,000. On finished goods, 10,000. So this 30,000 ka will come in your output liability register, because now you have to pay this 30,000. Now no more you can't take this ITC. You already taken this ITC. This ITC you already taken on raw material, on WIP, on finished goods. You already taken this ITC. But ये तुमने बेचा नहीं है, तुम्हारे स्टॉक में है अभी. तो now you'll have to reverse it. Reverse मतलब आपको output liability में आ जाएगा. That's the first thing. And second, capital goods पे how much did you buy the truck for? 10 lakh. How much of the GST on it? 1 lakh 20. Did you take a credit of it? Yes, you've taken a credit. Yes, I've taken a credit. Now you'll have to reverse it. Now you'll have to reverse it. But reversing the time when it's their faida, they will not do quarters, they will do months. So they will ask you, when did you buy it? You say, I bought it on 15th of April. And today's date is 29th of September. So they will see month, April, May, June, July, August, September, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 months out of 60 months. They consider total period to be 60 months. So 6 months out of 60 months. So 1 lakh 20 into 6 by 60. That is 12,000 ka credit you can take. 12,000 ka credit you can eligible to take. So no problem with that. But remaining 1 lakh 8 will come in your output liability. You took that credit, but you took it extra because now you're no more in the normal taxable scheme, you're in composition scheme. This is the opposite. Earlier scenario, we were going from not being eligible to ITC to eligible to ITC. Now this is the opposite. Always remember, guys, this is the credit that you've already taken. So now you'll have to pay them back. You'll have to pay it back, and it will come in your output tax liability. But of course, for capital goods, they'll allow you some relief. They'll say that because you use it for your business, we'll allow you some credit. So that is depending on how many months you've used it for. All right. So that basically means whenever you're jumping from one situation to the other, situations are the same, guys. What are the situations? I'll just put them down. Register, Varna, credits will expire. Register, voluntary register, composition scheme, exempt. These are the 4 scenarios. When you go from one side to the other, the credits will also have to jump. And these are 2 ways. Either you go from ITC not getting to now claiming ITC, or you can go the other way around also, that you were claiming ITC, but now you cancel your registration. Now you come under composition scheme. Now goods have become exempt. Then you will go to ITC not claiming. So both are reverse scenarios. In both cases, you have ITC implications. All right. Next, you bought a capital good. You bought a truck for your business worth 10 lakh rupees. On that 1 lakh 20,000, you paid GST, for which you took ITC. Great, congratulations. This truck was for a purpose of business, you were registered, and those 4 conditions were fulfilled, so you could take ITC. 1,20,000 का तुमने ITC ले लिया. But unfortunately, this you bought on the 15th April. There is no change in your status. तुम composition scheme या तुम exempt नहीं हो रहे हो या तुम registration cancel नहीं कर रहे हो, वो सब कुछ नहीं हो रहा है. But तुमको ये truck अच्छा नहीं लगा. You didn't like this truck.
So you sold the truck on the 29th of September. You sold this truck on the 29th of September. Guys, once you've taken the ITC ka benefit, how can you sell the truck? So the government is upset. They said that when you bought this truck, you took the advantage of ITC. Now you're selling it. This is not right. After consuming the ITC, you're leaving, so you can't do it. So they say you have to pay us some money, which is higher because the government wants more money. How much are you selling this truck for? You're selling this truck for, let's say, 1 lakh rupees. So 1 lakh per tax rate, let's say 12%, so 12,000. So either this, that means the tax on the sale amount, or ये तुम्हारा कितने मंथ के लिए यूज किया आपने, ये कितने मंथ के लिए यूज किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 months out of 60 months. They consider usage for 60 months. They think the asset should be used at least for 6 years, for 5 years, sorry. And 1,20,000 का तुमने यूज कर लिया है, ITC क्रेडिट ले लिया है, that is 12,000. तो 12,000 you're okay to take, but ये 1,08,000 है जो रिमेनिंग है, या फिर 1,08,000 या फिर 12, इतना तुम मुझे पैसा वापस दोगे. तो you have to pay 1,08,000 to the government as output tax liability. I'll repeat this one last time. Guys, when you buy an asset, when you buy a capital good, you're expected to use it for at least 5 years. Why? Because if you use it for 5 years, if you use it for, you're expected to basically use it, not for 5 years, you're expected to use it. And you can take a credit of it. And credit 100% ले सकते हो. But once you've taken the credit and you sell the goods and you sell the capital asset, then the sale price pay into the GST when you sell it. So 12% was the GST, you sold it for 1 lakh. So either 12,000. If you change the number, let's say you sold it for 2 lakhs. So this will become 24,000. And let's say you use this for 6 months. So 6 months से अगर use करो तो 12,000 का ITC you could have claimed, no problem. But जो remaining ITC है, that you've taken extra, so you have to pay us the higher of the two. So you have to pay us 1,08,000, which will come in your output tax liability. So we first saw a scenario where the first scenario was register Varna credits will expire. The second was opposite of that. The third was selling a capital asset, and now is the fourth scenario. Guys, fourth scenario is where your shoe shop is either you're selling it, or there is an amalgamation, or there is a succession, or there is a demerger. And when you are taking inputs on the raw material, on the finished goods, on WIP, on the capital assets, you had some ITC. Will that ITC continue? Will that ITC continue? That is the next discussion. The ITC will continue, guys. In this case, the ITC can continue if the terms of the agreement say that the ITC will continue. But the ITC can continue. Yes, it can continue. If the terms suggest that these liabilities or this ITC will continue. Okay. तो सेल कर दिया, आपके पास ITC लेट्स से 80,000 रुपीस का था, तो अभी ये इसके पास चला जाएगा. अमेलगेमेट कर लिया तो इसके पास चला जाएगा, सक्सीड कर लिया इसके पास जाएगा. बट अगर डीमर्ज किया है, तो आपको देखना है कितने एसेट्स ट्रांसफर हुए. लेट्स से टोटल एसेट्स वर 100 lakhs, उसमें से आपने 50 lakhs का ट्रांसफर कर दिया, मतलब 50% ट्रांसफर कर दिया. तो आउट ऑफ 80,000 of ITC, 40,000 will get transferred. So this is the next point of discussion, guys. Whenever your business can be sold, it can be amalgamated, can be succeeded, can be demerged, your ITC will also go to the next party if they agree to it, or if you agree to it. In case of demerger, it will be bifurcated between you and the other person, the demerged company or the demerged entity, in the ratio of assets transferred.
All right, 1 minute. These are important scenarios. These are important scenarios. Let's see if we can do some questions from them. Works contract is supply of services. Works contract basically I tell someone to make a building for me or to do renovate my works contract is basically someone doing some work for you. It's a supply of services. This is payment chapter 6. This we had done already. 18 done, 17 was done. All right. 16th we are doing right now. Can the unutilized ITC be transferred in case of change in constitution of business? Not possible. Of course, it's possible. No, it will be exhausted. No, no. Yes, it will be transferred only if there is a provision for transfer of liabilities. As if there is a provision, it can be transferred. Yes. It will be transferred only if it is shown in the books. No, ऐसा नहीं है. If there is a provision for transfer of liabilities, this will also get transferred. In case of compulsory registration, मतलब आप शू शॉप में थे, आप रजिस्टर नहीं किया था, नहीं था आपने, बट अभी आपको करना पड़ रहा है कंपल्सरी रजिस्टर. बाय कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, either you reach the threshold or you started doing interstate, or one of the reasons for compulsory registration. Input tax credit can be availed. रॉ मटेरियल पे ले सकते हो, फिनिश गुड्स पे ले सकते हो, WIP पे ले सकते हो, कैपिटल गुड्स पे नहीं ले सकते हो. Register वरना credits will expire. In the first two cases, when either a compulsory registration or voluntary registration, in first two cases, only on these three things you can take a credit. And that too on the day immediately preceding the date in which you become liable to pay tax. On the stocks held, stocks means raw material, finished goods, WIP, on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax, yes, provided he files the registration for registration within 30 days. Absolutely right. All right. So जिस दिन से आप एप्लीकेबल हो जाते हो, मतलब जिस दिन से आपका थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है, उस दिन के पहले वाला डेट देखो, उस दिन आपका जो भी स्टॉक है उस पे मिलेगा, बट कैपिटल गुड्स पे नहीं मिलेगा. ऑलराइट. An assessee obtains new registration, that is voluntary registration. Register varna credits will expire. If you take voluntary registration, change of scheme from composition to regular scheme and from exempted goods to taxable goods, it can avail credit on inputs lying in stock. What is the time limit for taking the said credit? You can take it only 1 year from the date of invoice. मतलब आपने जब वो स्टॉक खरीदा था, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP जब आपने खरीदा था, उस दिन से 1 year तक ही वो वैलिड होगा. मतलब पुराने पुराने जो परचेजेस है, let's say you're a shoe shop and in your shoes are finished goods which are lying from 2012 onwards, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. ओनली जो 1 साल के पहले लिया हुआ है, 1 साल तक आपको क्रेडिट मिलेगा, 1 year from the date of invoice. Alright. Okay, these are some questions. Let's tackle some more questions on ITC. ITC is an important chapter. It's an important chapter. Let's tackle a couple of more questions before we let go of this chapter. तो मॉड्यूल में देखते हैं मॉड्यूल में क्या क्वेश्चन पूछा है. Just 1 second. All right, guys, looking at the module, I'm just putting it on the screen. 1 second. In which of the following situations taxpayer needs to reverse the credit already taken? आपने credit ले लिया है, आपको reverse करना पड़ेगा. If payment is not made to the supplier within 45 days, नहीं. If payment is not made to the supplier within 90 days, if payment is C is the right answer, within 180 days. All right.
What is the time limit for taking ITC on invoices pertaining to a financial year? एक फाइनेंशियल ईयर के इनवॉइसेस, रिलेटेड डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स का आप ले सकते हो टिल द एंड ऑफ द ईयर. सितंबर का ड्यू डेट वाला जो डेडलाइन है वो, या रिटर्न फाइलिंग आप जो भी अर्लियर है उस तक आप ले सकते हो, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा. थर्ड, if the goods are received in lots installment, 50% ITC can be taken. No. It can be availed upon receipt of last installment. 100% ITC cannot be taken on receipt of first installment. Proportion ITC can be availed on receipt of each. Proportionate नहीं है, 50% भी नहीं है. ITC can be availed upon receipt of last installment. This is the right answer. As 4 conditions. Too rude, get room. You should receive the goods. Lots में तो last goods भी मिलने चाहिए. But अगर आपने उसको बोला किसी और को दे दो, तो no problem. तो उसका receipt is also received. For banking companies using inputs and input services, partly for taxable supplies and partly for exempt supplies, which is the statement is true. ITC shall be compulsory restricted to credit attributable. 50% of eligible ITC on input, capital goods and input service shall be mandatorily availed. Banking company can choose to exercise either option A or B. Yes, they can choose. A supplier takes deduction of depreciation. अगर आपने depreciation ले लिया है on the GST component, sorry, ITC नहीं मिलेगा. No availing ITC on the said tax component. Next question is an excellent question. Sorry, it's going down. Which of the following inward supplies are not eligible for ITC? That is block credit. In case of a company manufacturing shoes, foods and beverages नहीं मिलता है, आउटडोर केटरिंग नहीं मिलता है, हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलता है, ऑल ऑफ द अबव. गाइस, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विसेज तभी मिलेगा जब या फिर इधर कंपल्शन है लॉ का कि आपको फूड एंड बेवरेज प्रोवाइड करने हैं, या फिर आप बेच रहे हो. मतलब इफ आई बाय फूड्स एंड बेवरेजेस टू सेल दोस फूड एंड बेवरेजेस, बट मेरा शॉप तो शू का है, तो इन तीनों चीजों पे नहीं मिलेगा. Which of the following is true for a composition taxpayer? He can avail 50% ITC, nahi. He can avail 100% ITC, no. ITC is not available on inward supplies. Composition tax will be available as ITC to the recipient only if the tax is no. ITC वाले को ITC नहीं मिलता है composition scheme वाले. Answer is C. What is input tax? The tax that you pay on your input supplies, including goods, services, as well as the tax that you pay on RCM, all that is input tax. It is either CGST, SGST, IGST, depending on what is the nature of suppliers. What are the conditions necessary for ITC? You should be a business and you should be registered. Plus, too rude, get rude. These are some conditions for claiming ITC. Can a person without payment of compensation for the supply along with tax, can a person take ITC without payment of consideration? Yes, even without payment of consideration, you can. ITC तो ले सकते हो, but 180 days में पे करना है. One second, looking at the questions. What is supply is made to third party, but in lots, will the last lot condition apply? Of course, it will apply. All right. What is the time limit for taking ITC? You know the time limit very well. September का return filing due date or filing the return. What is ITC entitlement of a newly registered person? अगर आप newly registered हो, तो आपका जो भी stock है, उसके raw material, WIP और finished goods पे आपको credit मिल जाएगा, but capital goods पे नहीं मिलेगा. What is the tax implication of supply of capital goods by a registered person who has taken ITC on such capital goods? आप capital goods sell कर रहे हो, तो जो सेल प्राइस है उस पे जीएसटी, या फिर डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मंथ्स यू हैव टू माइनस द जीएसटी, उतना आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. जस्ट वन सेकंड गाइस.
सॉरी, इसमें नहीं मिलेगा guys. This you will not get. This you will not get. You would have got this only if this was capacity was more than 13. Next is the 15 sum. Guys, all this is very important. Do it with me. Finish ITC. छोटे छोटे जो 2 3 parts बचेंगे वो कर लेना बाद में. But at least the main parts are here, and you will see in the exam also. After this, we will see RTP, MTP also, and you will see how well you can answer that. A technical testing agency tests and certifies each batch of machine tools before dispatch by BMT Limited. Some of these tools are dispatched to a unit in an SEZ without payment of GST, as these supplies are not taxable. Guys, SEZ मतलब zero rated supplies. But zero rated supplies पर ITC मिलता है. The finance personnel of BMT Limited wants to know whether they need to carry out reversal of ITC on the testing agency services to the extent attributable to SEZ supplies. Give your comments. No, they don't have to reverse ITC because zero rated supplies made to SEZ are zero rated supplies. On zero rated supplies, although there is no GST chargeable on output supplies, the ITC can be claimed, including a refund of the ITC can be taken, and hence no reversal is required. Next, a garment factory receives a government order for making uniforms of a commando unit. The supply is exempt. अगर exempt है तो उस पे ITC claim नहीं कर सकते हो. The fabric is separately procured for the supply, but thread and lining material for the collars are the ones which are used for other taxable products of the factory. The turnover, excellent question. The turnover of other products in the factory and exempted uniforms in July is 4 crore and 1 crore respectively. The ITC on thread and lining material procured in July. My voice is cracking. 1 second. I hope it's better now. Alright guys, this is an excellent question. You are basically making some exempt supplies. And you're also making some taxable supplies. But the inputs are common. The thread and lining material for the collars are the ones which are used both for taxable products of the factory. The turnover of other products of the factory and exempted uniforms is 4 crore and 1 crore. मतलब guys, taxable products का 4 crores है, exempt का 1 crore है. Taxable is 4 crore. This is the turnover details. The ITC on thread and lining material procured in July is 5,000 and 15,000 respectively. So guys, 20,000 is a total ITC. This is your gift. This is your gift. I hope I'm audible. Guys, 20,000 is a total ITC. My connection is getting lost. 1 second. Guys, can you hear me now? I hope you can hear me now. Guys, I hope you all can hear me now. Let me know if the voice is better. Okay, perfect. Perfect. All right. Guys, the total gift that you have is 20,000. उसमें से you'll minus any pebble. Personal, there is nothing personal. Anything exclusively for exempt, there is nothing exclusively for exempt. Anything which is blocked, there was nothing blocked. तो pebble थे ही नहीं इस gift में. Anything that is exclusively for business, वो भी कुछ नहीं है. So basically, this is the common credit which you need to bifurcate. तो guys, इसमें directly CC ही दिया है. I'm not doing the calculation. I'm just taking you to the calculation. This is a total gift. In that gift, your exempt turnover is 1 crore. Your other turnover is 4 crore, so our total turnover is 5 crore. So you do 1 by 5 into 20,000, and that is 4,000. So 4,000 is ineligible.
whereas 16,000 will be eligible ITC. Just one second. I'll have to call you back. Hello? I'll have to call you back at about 6ish. All right. So here, guys, you just had to bifurcate between this. You didn't have to do that 5%. You didn't have to do that 5% because that 5% is when it's also used for personal. There was nothing personal. There was nothing blocked. There was nothing which was 100% business. There was no pebble. This is a very, very simple calculation of your total gift, that is a total common credits, multiplied by the exempt turnover divided by the total turnover. Why haven't we taken 5% in this? I'll explain why haven't we taken 5% in this. Just one second. I'm just explaining why we haven't taken that. One second. On your screen, I'm just putting that line. All right. So Muskan, this is the line. If there's any non-business purpose, then 5% is assumed for non-business purpose. But there was no non-business purpose here. Non-business basically means personal. There was no non-business purpose here. See, in my example right now, the sum that we're answering, inputs were used for taxable and for exempt only. There was no non-business purpose. If it was non-business purpose, you would have minus 5%. And that is an ad hoc 5%. But in our example, in our question below on textile, one second, I'll go to the question again. In our question below, there is only exempt and only taxable. There is no element of personal, and hence that 5% has not been minus. Just like there were no pebbles, just like that, there was no personal use of these inputs, and hence there was no 5% minus. We come to the last leg. So can you explain rule 43 in short? Yes, I can. Just give me 2 minutes. Rakesh, explain question number 16. Your voice is 1 second. Question number 16 again. See, question number 16 is basically common credit. You had inputs worth 20,000 or inputs on which GST was 20,000. Can I take an ITC of the entire 20,000? Ideally, I want to, but I cannot because this has been used for both exempt and for taxable both. So how we had done, from the gift we remove pebbles, from the pebbles we removed exactly what is only for business. वो सब निकालने के बाद common credit आता है. यहाँ पे common credit दिया है. So we start with that and we remove two things. One is that is which is for personal, but इसमें personal का कुछ है ही नहीं, तो वो 5% personal का minus नहीं करेंगे. And the next remaining, which is exempt, and how will you do that? 20,000 into what is the exempt turnover? 1 crore on the total turnover 5 crore. So that is 4,000 is the ITC which I cannot claim because that is towards exempt. So 16,000 I can. And the last question I'm looking at is here. Mr. A, registered person, was paying tax under competition scheme up to 30th July. However, with effect from 31st July, A becomes eligible to pay tax under regular scheme. Is he eligible for ITC? Guys, section 18 says. Okay, Rakesh, thank you. So just give me 2 minutes. Guys, section 18 says that registered Varna credits will expire or escape
इसमें this C part is happening. You were earlier under composition scheme, but now you're under normal scheme. Will you get ITC? Yes, you will get ITC on raw materials, on work in progress, on finished goods, which are in your stock. As on 30th July, whichever are in your stock, you will get a credit of that. Plus, on the capital goods also, you will get a credit after minusing 5% per quarter. I hope this is done. I hope this is clear. Guys, capital goods का reversal. I don't want to put it right now. So the only reason is we've just discussed T1, T2. So I don't want to confuse people with this. So give me some time. I'm just going to park it and we'll talk about it in some time from now. For the larger interest, I think people get a little confused. So I'm going to park that thought right now and I'm going to continue. I'm just going to let's take one sum here. Guys, this is one excellent sum from the module. Let's try and take this out. And then we move to the next chapter and we come back to rule 43. No problem with that. All right, everyone, eyes on the screen. XYZ is a registered dealer under GST. He's engaged in the manufacture of taxable goods. Good to know. Looking at the questions. All right. Compute the ITC, guys. This is something which is very, very similar, which will come in your exam. I can promise you something like this will come in your exam, where they will ask you some things 1, 2, 3, 4, and they will say ITC किस पे मिलेगा. First, input A, GST of 1 lakh, but one invoice in which GST payable was 10,000 is missing, so you will get only 90,000 of GST ITC. Second, input B, how will you explain this? You will quote section 16(2) and you will say that you need tax paying document, and if it's not available, you don't get the credit. Next, input B 50,000. Inputs are received in 2 installments. First installment has been received in October. Guys, this is the month of October. एक installment ही मिली है अभी तक. So second installment wait करेंगे और तभी लेंगे. This will also not be available. 0 here, nil. And you will write the explanation 16(2). The goods should have been received in entirety. Next, capital goods. XYZ has capitalized the capital goods at full invoice value inclusive of GST. गाइस अगर आपने फुल जीएसटी भी ले लिया है कैपिटल वैल्यू, मतलब डेप्रिसिएशन आप पूरे पे करोगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. इसमें यू विल कोट सेक्शन 16(3). नेक्स्ट, इनपुट सर्विसेज. One invoice dated 20th January on which GST was payable of 50,000 has been received in October. Guys, पहले का इनवॉइस है, अब मिला है, तो पहले आपको इस पे क्रेडिट नहीं मिला होगा बिकॉज इनवॉइस नहीं मिला था, अभी मिलेगा, तो ये पूरे 2,25,000 पे आपको मिल जाएगा. All the conditions necessary for availing ITC have been complied with. The annual return for the financial year ending 31st March. Okay, I'm so sorry here. Here, my bad. One invoice of 20th January on which GST payable was 50,000 was received in October. Guys, last year का है, ये जैन का है. My bad. ये जैन का है. जैन का एक्सपायर हो सकता है कब तक? या 20th October तक, या रिटर्न फाइलिंग डेट whichever is earlier. The return was filed on 15th September. If the return was filed on 15th September, I'm sorry, that credit has already expired. So you will only get 1,75,000. All right. So 90,000, nil, nil, 1,75,000. That is exactly how a question in the exam will be. Guys, that is sort of the end of ITC. It was a long chapter, very, very visible how long it was. Now, I'm going to shut this module and we'll look at the next chapter. Next chapter, guys, the one that I want to do is, let's take a small chapter
Let's do time of supply. Doesn't matter, guys. Let's do time of supply. Time of supply, a lot of people get confused because there are too many things happening there. Shortcuts are there for time of supply. Be with me while we do time of supply. It's 2:37 exactly in 3 minutes. 2:40 is when we start time of supply. Very important chapter, and a lot of shortcuts are there in that chapter. So open your book to time of supply. Think about in your mind what is time of supply, and we start in about 2 minutes. 3 minutes from now, we start time of supply. I'm just putting the sheets on the screen, and I will start the screen in 2 minutes. Roshni, the intention is to do everything including exemptions, but I want to do everything else before we do exemptions because things like time of supply, etc., are very, very important as well. And exemption is so big that if I start in the middle, I can't do anything else. So I want to do everything else before I start with exemptions. So when we are asked a question on any one condition, do we have to explain all conditions? No, Priyank, you have to explain only one condition. All right, guys, the next chapter is time of supply. It's a very, very interesting and a very nice chapter, but it has some small details which we will have to deal with. So starting off, time of supply. Guys, time of supply is in two sections, sections 12 and section 13. How do I remember it? Whenever I see the time on the clock, it's either 12 o'clock or it's 13 hours. Just like how, when did I realize the value of life? 15 years. When did I charge my phone? Section 9. Just like that, one easy way of remembering time of supply is is when I saw the clock, every time I see the clock, it's either around 12 o'clock or it's 1300 hours. All right. Time of supply is different for goods and it's different for services. 12 talks about goods, goods first always, and then services. In that, in time of supply, we'll talk about section 12,
supply of goods. So you figured कि supply है? Yes, section 7 says supply है. Section 9 says GST भी charge करो. Section 15 says इस value पे charge करो. Section 16 says ITC भी ले हो. But please tell me guys, why is this time of supply important? Because अगर मैंने बोला कि supply 29 September को हो गई है, then I will have to pay the government the taxes in the month of October. But the moment I say that the supply is not 29 September but the supply is 29th October, I will have to pay the government in the month of November. So basically my payment of tax depends upon time. Supply है but time कौन सा है? That my time of supply will determine what time or how fast do I pay the government taxes. The intention of the government is to keep the time as early as possible. तो इसलिए इस पूरे चैप्टर में earlier of the two, earlier of the two, earlier of the two ही मिलेगा आपको, और earlier of the three, earlier of the four. The entire law is based on earlier because guys, the early the time of supply, the early the government gets a tax. So this entire chapter is based on one word, earlier of the following. All right. Let's tackle goods. Section 12.1 says only one thing, that time of supply of goods. My voice is breaking a lot. Okay, I'm just gonna just check on that. 1 second. Give me a second, guys. All right, guys. Let me know if my voice is better now. It's clearer now. Let me know. Namrata, let me know if my voice is better now. All right. Guys, section 12. If you do section 12 well, I promise you section 13 will go very fast. So section 12.1 says the time of supply will be as per section 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 and 12.6. मतलब 12.1 तो यूजलेस सेक्शन है, ये यूजलेस सेक्शन है. वो बोलता है कि टाइम ऑफ सप्लाई विल बी एज पर फ्रॉम 12 to 12.6. So it's telling me nothing new. I already know time of supply section 12.2 to section 12.6. All right. Now let's go to section 12.2. All right. I go to Vijay Sales and I buy an AC for myself. This is an AC. All right, guys. Okay, my audio wasn't working, so I have stopped talking. Don't worry, my audio wasn't working. Audio lag, I hope it's better now. Rakesh Devansh, I hope it's better now. All right. Guys, be with me while we do the next chapter, time of supply. Time of supply, section 12 and section 13. In section 12, section 12.2 I'm discussing right now, where I went to Vijay Sales and I bought an AC for myself. And when I bought this AC, this AC was charged tax. So 10,000 rupees plus 1800 GST, 11,800 was taken from me.
This is what I paid, and this is forward charge mechanism. Everyone okay? Because Vijay Sales charged it to me, and hence they passed it on to head forward, so it's called forward charge mechanism. Whenever it is forward charge mechanism, what is the time of supply? The time of supply is as under, guys, shortcut, the first shortcut coming out. The moment the moment Vijay sells me this AC, they will say one line. They will say one line. I demand payment. Guys, the moment Vijay sells me this AC, the moment Vijay sells me this AC, they will write or they will say a line or they will SMS something to me which reads I demand payment. This is your time of supply for forward charge. What is I? I is the date on which the invoice was issued. So let's say today is the day and they issued it to me today only, the invoice 29th September is the date of the invoice. If they don't issue an invoice to me, I sometimes they might not want to issue the invoice to me because they feel अगर invoice issue कर दिया तो time of supply हो जाएगा and I'll have to pay it to the government. So they might delay or they might not even give me an invoice. So then you see due date of invoice. Due date of invoice comes from a section called section 31. 31 section talks about invoices, and for goods there are three sections: 1, 4 and 7. 147. For goods there are three sections: 31.1, 31.4 and 31.7. All right, again I repeat, I go to Vijay Sales and I take an AC. It's forward charge mechanism. And whenever I take that AC, he says I demand payment. I means date of invoice, that is 29 September, or date of payment. Guys, जब मैंने उसको payment किया, let's say I made a payment to him, so you'll not look at it from my perspective, you'll look at it from Vijay Sales perspective because Vijay Sales is the guy who has to pay. Guys, time of supply, question mark, Harshit, let me know what happened. All right, guys, first is I demand payment. I is invoice date. Invoice date was today's date. That is 29 September was the invoice date. But let's say they didn't give me an invoice only, or they didn't want to give me an invoice. This first thing is done. Next is they didn't give me an invoice or they didn't want to give me an invoice because they said that invoice देते ही मेरा time चालू हो जाएगा. So I have to pay to the government in October. So they delayed it. So this is due date of invoice. मतलब अगर आप कुछ मस्ती करोगे और इनवॉइस इशू नहीं करोगे तो ड्यू डेट आ जाएगा पिक्चर में. एंड ड्यू डेट ऑफ इनवॉइसेस अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया तो ड्यू डेट तक तो इशू हो जाना चाहिए. दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 31. 31 में तीन सेक्शंस हैं फॉर गुड्स: 31.1, 31.4 and 31.7. The first part says अगर the goods have to be removed from a godown before delivery तो उस डेट से पहले इनवॉइस आ जाना चाहिए, या गुड्स जब डिलीवर किया उस दिन से पहले इनवॉइस आ जाना चाहिए. गाइस, ये एसी था तो एसी को जब रिमूव किया शॉप में से या एसी को जब डिलीवर किया उसके पहले इनवॉइस आ जाना चाहिए. लेट्स से दीज गुड्स वर डिलीवर्ड टू मी ऑन द 5th of September. तो ड्यू डेट this was either removed or delivered to me on the 5th of October. तो इस दिन तक इनवॉइस आ जाना चाहिए था. या फिर लास्ट इज पेमेंट. मैंने कब पे किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, विजय सेल्स की बुक्स में पेमेंट कब आया वो इंपॉर्टेंट है. सो विजय सेल्स के सप्लायर का पेमेंट देखेंगे गाइस ऑलवेज, बिकॉज आगे कौन भरने वाला है, विजय सेल्स.
तो विजय सेल्स के पेमेंट में दो पेमेंट हो सकते हैं, एक तो उसने जो बुक्स में डाला, एक जो बैंक में है, विच एवर इज अर्लियर. तो लेट्स से आई मेड अ पेमेंट ऑन द 10th, तो उसके बुक्स में 10th आ गया और बैंक में 12th आ गया, तो विच एवर इज द अर्लियर, तो 10th यू विल कंसिडर. So I've got three dates now. I demand payment. Either the invoice date or due date of invoice. एसी के केस में रिमूवल है या डिलीवरी है, तो जिस दिन रिमूव किया उस दिन या उससे पहले, या जिस दिन डिलीवर किया उस दिन या उससे पहले, he should have issued the invoice. और पेमेंट, आई डिमांड पेमेंट. पेमेंट किस एंगल से, गाइस हु सपोज्ड टू पे टू द गवर्नमेंट, विजय सेल्स. तो विजय सेल्स के बुक्स में देखोगे तो 10th आएगा और विजय सेल्स के बैंक में देखोगे तो 12th को आएगा. डिपेंड्स विच एवर इज अर्लियर. सो 10th अर्लियर है तो 10th को फोकस रखेंगे, अगर दोनों में से एक दिया तो एक ही रखेंगे फोकस में. एंड इन चीज का विच एवर डेट इज द अर्लियर डेट will be considered as the time of supply. So 29 September or 5th October or 10th October, whichever is earlier. So 29 September will be the time of supply. Yes, earlier of the three. Why earlier? If you get exam में confused, time of supply, the earlier government gets the tax. Now guys, same concept. I'm just going to add one more detail. Before I bought the AC from them, I paid them in advance. Guys, 20th September को मैंने उनको एक एडवांस पे कर दिया. बट गुड्स के केस में, गाइस गुड्स के केस में, एनी एडवांस पेमेंट इज टू बी कंसिडर्ड, बट एनी एडवांस पेमेंट इज टू बी इग्नोर्ड. ऐसा एक सर्कुलर निकाला था, ऐसा एक नोटिफिकेशन निकाला था, एंड दैट नोटिफिकेशन सेज ओनली इन केस ऑफ गुड्स any advance payment is to be ignored. Payment is okay, advance payment is to be ignored. I hope you got it clear, guys. So please let's again quickly do it. This is what supply of goods, that's why section 12. उसमें भी वजह से selling me an AC comes under forward charge. So forward charge में the moment he will sell me the AC, he will ask me one simple thing, or he will SMS me one simple thing: I demand payment. I is date of invoice 29 September. D is due date of invoice. Generally due date consider करते भी नहीं है, because invoice जब issue किया है तो due date क्यों देखोगे, but फिर भी due date डालो. Sometimes it can be before the invoice date also. Due date of invoice, how do you know? It's determined in section 31. ये invoice का chapter में आएगा, but अभी से cover कर लेंगे तो better होगा. And invoice का due date is in case of goods which are supposed to be removed or delivered before the date or on before the date of delivery or on before the date of removal. AC मेरे हाथ घर पे डिलीवर किया 5th अक्टूबर तक, तो 5th अक्टूबर या उससे पहले ड्यू डेट हो जाना चाहिए, तो 5th अक्टूबर इज द ड्यू डेट. एंड लास्ट इज पेमेंट, बट पेमेंट किसके एंगल से करेंगे, हु इज सपोज्ड टू पे टू द गवर्नमेंट, विजय सेल्स. सो उसके बुक्स में देखोगे या उसके बैंक अकाउंट में देखोगे व्हाट इज द क्रेडिट ऑफ द अमाउंट, एंड 10th है यहाँ पर और 12th है बुक्स में, या 10th है बुक्स में, 12th है बैंक में, जो भी अर्लियर है बोलेगा बिटवीन दीज थ्री डेट्स, अर्लियर ऑफ द थ्री. एंड गाइस यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको देंगे ऑन द 25th September there was some advance paid, but don't worry, even if advance paid was there, in case of goods advance payment is to be ignored. I'm not saying payment is to be ignored, only advance payment is to be ignored. This is a shortcut, this is the shortcut. I demand payment and 31 is done. Goods के लिए थोड़ा और बाकी है. Next please pay attention. Guys, ये otherwise कैसे करोगे? You have to have shortcuts to remember this. All right. Next, I didn't go to Vijay Sales. Okay, I went to Vijay Sales only. Let's continue with Vijay Sales. But this time, no, I didn't go to Vijay Sales. अभी थोड़ा example change करना पड़ेगा next वाले के लिए. I went to Tata Power and I said that listen, please provide me electricity. And here, please provide me electricity, not for 1 month, not just once, but continuously provide me electricity. So they say okay, मैंने power connection आपके घर में लगा दिया है,
अभी से मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी रेगुलरली सप्लाई करूंगा. दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स बिकॉज electricity, gas, water is also considered as good. So let's say this is goods. So whenever date of payment is before date of invoice, then that will be considered an advance payment. No, whenever date of payment is before, Shruti, very good question. Whenever date of payment is before you receive the goods, that is considered advance. Shruti, think about it. Advance कब देते हो आप? Let's say you want to buy a dress. If you pay before you get the dress, that's called advance, right? So invoice से connection नहीं होता है. Advance payment is before you get the goods. Excellent question. Great understanding. All right, guys, the next one is I go to Tata Power and I tell Tata Power that I want you to supply me electricity, but not once, regularly, continuous supply. So Tata Power says perfectly okay. Let's determine time of supply. Again, they will say I demand payment. I is invoice date. Let's say today invoice date. आज से electricity चालू किया उन्होंने. Right, so invoice date, let's say was 5th November. Their invoice came to me on the 5th November. Guys, I hope my voice is audible. All right, I hope my voice is audible. I hope my voice is audible. Okay, 5th, perfectly audible. Okay, 5th November को they issued an invoice to me. Tata Power gave me my first invoice on the 5th of November. So I हो गया. Payment भी देख लेते हैं. Let's say I made the payment, but मेरे तरफ से नहीं देखना है, टाटा पावर की तरफ से देखना है, because who's going to pay to the government? टाटा पावर. तो उनके बुक्स में पेमेंट आया 15 नवंबर को और उनके बैंक में आया 17 नवंबर को. तो 15 देखोगे, अर्लियर ऑफ द टू, एंड यहाँ पर है ड्यू डेट विच यू नीड टू पुट नाउ. In case of continuous supply, guys, this one I told you 31 was due date of invoice. As per 31(1), it's either before removal or delivery. But guys, electricity के केस में क्या removal है, क्या delivery है? They're not removing electricity and giving it to me. They're not delivering electricity every day. It's continuously coming through a pipe or otherwise. Then in that case, I will look at 31(4), which talks about continuous supply. In case of continuous supply, the invoice has the due date of invoice is every successive statement. मतलब guys 29 को इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने पाइपलाइन इलेक्ट्रिसिटी वायर्स डाले मेरे घर में. So every month they will issue a successive statement. उसके पहले या successive payments उसके पहले. All right. Due date of invoice क्या होता है? Continuous supply. First, what is continuous supply? Continuous supply में there is no period given. Continuous supply में there is no period given. Continuous basically means regularly, either through a pipe or otherwise also, but regularly given out. In that case, it's either the successive statements. Every month they give a statement, okay, Saurabh, you use so much of electricity, or the successive payments that I do. Every month I make payments. Before that or on that date, they have to issue invoices. That's the due date. So let's say for the month of September, October, the statement was issued on the 31st of October. They issued an invoice on 5th of November. I made the payment which is reflecting in their books on 15th, either this or 31st October or 5th November, earlier of the three. I hope you got it. This is continuous supply के केस में 31(4) says due date कभी आएगा of invoice? Due date of invoice will be before the on or before the successive statements or successive payments. And last. Again, thanks for electricity bill example, very helpful. All right, Devansh, thank you so much. All right. The last one, guys, is on your screen. This is for continuous supply. The last one is again Vijay Sales. I went to Vijay Sales. In fact, I didn't even go to Vijay Sales. Now Vijay Sales knows me very well. As you would have seen, मैंने कितनी बार Vijay Sales का example लिया है. So they know me really well.
I called them up and I said, listen, Vijay Sales, I need 7 mobile phones. For 7 people in my family, I need 7 mobile phones. So he said, no problem. I'll give you 10 mobile phones. You choose and you see whichever you want. You can approve and send me whatever you don't want. All right. So again, time of supply. Let's say for these 7 mobile phones, उसने इनवॉइस रेज ही नहीं किया बिकॉज अभी तक मैंने 7 में से सिलेक्ट ही नहीं किया है. तो लेट्स से इनवॉइस वाज रेज्ड ऑन 3rd December. What is the line he will tell you? I demand payment. I is invoice. Due date we'll see soon. And payment मैंने कर दिया उसको 10 December. Invoice आया 3rd को, 10th को payment कर दिया. But what is the due date of this kind of supply? Which is not removal and delivery, which is not continuous supply, which is basically sale on approval basis. They say ये मोबाइल्स दुकान में से कब निकले? 29 September को. When did you give this to mobile to the person? 29 September. We will wait for approval or maximum 6 months from the date you give it. Again I repeat, ये मोबाइल्स विजय सेल्स की शॉप में थे, आपने कब निकाले? 29 सितंबर को. सो वी विल वेट फॉर अप्रूवल, जब सौरभ अप्रूवल देता है तब के लिए, और मैक्सिमम 6 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर. सो गाइस 29 सितंबर को मेरे पास आया एंड मैंने 5 दिन में अप्रूवल दे दिया. आई गिवन अप्रूवल विद इन 5 days. तो इधर 5th of October, 5 days मतलब लेट्स से 4th of October, और 6 months from 29 September मतलब October, November, December, Jan, Feb, March, और let's say 29th March, whichever is earlier. तो मेरे केस में 4th October is earlier, or 3rd December, or 4th October, or 10 December, whichever is earlier. So 4th October will be the time of supply. Let's change the date here. मैंने अप्रूवल दिया ही नहीं, मैंने अप्रूवल बहुत टाइम तक नहीं दिया, तो इनवॉइस भी नेक्स्ट ईयर आया. नेक्स्ट ईयर लेट्स से 3rd April को इनवॉइस आया, मैंने 10th April को पे किया. गाइस इतना लेट इनवॉइस आया, इतना लेट मैंने पेमेंट किया, बट गवर्नमेंट विल नॉट वांट टू वेट. सो गवर्नमेंट सेज whenever you approved it, let's say I approved it on the 3rd of April, or 6 months from removal. रिमूव कब किया? September 29. 6 months end on 29 March. So उस दिन will be the date, that is the due date of the invoice. So 29 March will be the time of supply. So guys, this is on approval or sale on approval basis. Sale on approval basis, guys, sale on approval basis says that either you approve it or even if you don't approve it, 6 months के अंदर अंदर maximum आपको invoice का due date आ जाएगा. So 6 months from 29 September और approval date. अगर अप्रूवल इससे पहले तो ऑफकोर्स पहले का डेट लोगे, अर्लियर ऑफ. सो लेट्स से अप्रूव कर दिया मैंने दिसंबर में, एंड 6 months is 29 March, तो कौन सा लोगे? 10 December or 10th April, or 10th April, whichever is earlier. 10 December will be the time of supply. All right guys, so this is done. 12/2 is done. Trust me, अगर 12/2 समझ गए तो 12/4, 5, 6 तो इस चाइल्ड प्ले. 12/3 भी बहुत इजी होगा बिकॉज बहुत ही सिंपल है गाइस, डोंट वरी एट ऑल, इसमें कंफ्यूज मत होना. There are shortcuts and we will play by shortcuts. Again guys, repeating, the moment, first up, how do you go to 12/2? First step, check whether it's goods or services. अगर goods है तो section 12 में जाएगा, and 12 में check whether it's forward charge or reverse charge. Forward charge है तो 12/2 में जाएगा. All right. I demand payment. I is very simple, the date of the invoice.
पेमेंट इज ऑल्सो सिंपल, पेमेंट किसके एंगल से, जो भी गवर्नमेंट को पे कर रहा है उसके एंगल से, यहाँ पे वजह से, यहाँ पे टाटा पावर। एंड ड्यू डेट के लिए 3 सेक्शंस है, 31(1), 31(4) एंड 31(7). इसका शॉर्टकट है 147। गुड्स के लिए द कीवर्ड, गुड्स के लिए द नंबर इज 147। वन सेस, अगर आप रिमूव कर रहे हो तो उससे पहले या उस दिन, आप डिलीवर कर रहे हो तो उस दिन या उससे पहले। अगर वो केस नहीं है, कंटिन्यूस सप्लाई का केस है, देन सक्सेसिव स्टेटमेंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स व्हिचएवर इज अर्लियर। एंड ये भी नहीं है और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है, देन जिस दिन अप्रूव करता है, या 6 months फ्रॉम रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर। दिस इज 31। अगर 31 समझ गए तो इनवॉइस चैप्टर में भी 31 बहुत मेजर है, वो भी समझ जाओगे। ऑल राइट, इसका शॉर्टकट आई डिमांड पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ड्यू डेट के लिए यू हैव टू रेफर टू सेक्शन 31। नेक्स्ट, 147 is only for due date of payment, right? No, 147 is due date of invoice. Mustan, 31(1), 31(4), 31(7) is due date of invoice. Yes. And 31(1), 31(4), 31(7) is due date of invoice only for goods. Only for goods. All right. If you are done with this, let's go to the next one, which is even easier and it's a shortcut. ये तो बहुत easy है, don't worry. 12(3) is now what we are talking about. See guys, 12(3) में those goods which are subject to RCM, but ये तो अपन ने देखा ही नहीं था, because आपके लिए है ही नहीं है, cover ही नहीं है. Which goods are under RCM, that is not covered, but the concept of time of supply is covered. Let's say cashews. Cashew nuts are one such goods which are subject to RCM. मतलब there is a supplier. सप्लाई क्या करता है वो, कैश्यू सप्लाई करता है. I use that cashew to make some, let's say, food product. So I am the recipient, and guys cashew is subject to RCM, so who's going to pay the tax? Burden भी, headache भी मेरा है. So these goods are on RCM basis. Now let's figure the time of supply for RCM. Again I will repeat guys, 12(3) is for RCM. 12(3) बोलता है फर्स्ट अगर गुड्स है तो सेक्शन 12 में आएंगे, एंड 12 में अगर FCM है तो 12(2) लगेगा, आई डिमांड पेमेंट. और अगर RCM है, कौन से RCM में, वो तो आपने पढ़े ही नहीं है बिकॉज आपके लिए कवर्ड ही नहीं है. बट लेट्स अज्यूम कैश्यू इज समथिंग दैट इज ऑन RCM एंड आपने खरीदे हैं, यू आर द रेसिपिएंट. You will buy the cashews and let's say the cashews are for 10 lakhs. You will pay 10 lakhs to the supplier, but उस पे जो टैक्स है वो तुम उसको नहीं भरोगे, वो तुम गवर्नमेंट को खुद भरोगे. You will pay the tax, the GST to the government yourself. But ये कब भरोगे depends on time of supply, and hence that's what we're looking at next. So please be with me while we look at the next shortcut on time of supply for RCM. Now next shortcut is like this. Guys, cashews मिल गए? Yes, cashews मिल गए. तो recipient paying in 31 entirely. Recipient मतलब तुमको, let's call this some guy who makes biryani, he uses the cashews. So the recipient is paying in 31 entirely. And of course, you know earliest of these four. Let's see what this recipient paying in 31 entirely, what this means. अगर guys यहाँ पे समझ गए 12(3), तो supply of service में भी time of supply same है, so यहाँ पे समझ जाओ, वहां पे भी समझ जाओ. So बिरयानी वाले को ये cashews मिल गए हैं, but unfortunately these are subject to RCM. So this biryani guy has to pay GST to the government,
ही इज आस्किंग यू टाइम क्या है भैया, वो तो बताओ, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग फोर: recipient paying in 31 entirely. The day you receive the goods, let's give it a date. उल्टा करते हैं guys. Recipient paying in 31 entirely. The day you receive the goods, कौन से दिन पे रिसीव हुए? Let's put a date. Let's say आज रिसीव हुए guys, 29 सितंबर को रिसीव हुए. आपने पेमेंट कब करी है इसके लिए? गाइस पेमेंट किसके एंगल से देखोगे? अभी पेमेंट बिरयानी वाले के एंगल से देखोगे. सो पेमेंट जब की है तो पेमेंट नेक्स्ट मंथ हुई है, 10th अक्टूबर को पेमेंट हुई है, बट उसके बैंक में रिफ्लेक्ट हुआ है 12th अक्टूबर को. सो विच एवर इज अर्ली, तो 10th अक्टूबर. इनवॉइस के 31st डे, ये जो सप्लायर उसने आपको इनवॉइस तो दिया होगा राइट? इनवॉइस कौन से डेट पे है? लेट्स से इनवॉइस था 1 सितंबर का, तो उसका 31st डे मतलब 1 अक्टूबर. गाइस इनवॉइस तो मिला होगा राइट आपको? सप्लायर ने कोई ना कोई इनवॉइस दिया होगा आपको कैश के लिए, उसका 31st डे इनवॉइस है. सो लेट्स से इनवॉइस का 1 सितंबर डेट था, तो 30 डेज जाने दो, 1 अक्टूबर आ गया ये. या अगर इनसे भी पता नहीं चलता है तो आपने अपनी बुक्स में कब एंट्री की? ये कैश जब आए होंगे तो परचेज की एंट्री की होगी, तो आपने कब ये परचेज की एंट्री की? लेट्स से ये परचेज की एंट्री की 3 अक्टूबर. अर्लीस्ट ऑफ द फोर, तो गाइस अर्लीस्ट कौन सा है ऑफ द फोर? अर्लीस्ट इज this will be the time of supply, this one will be the time of supply. Again let's repeat this, इसमें कोई ड्यू डेट नहीं है, so very easy, it's very easy. If you remember this acronym, this sentence is very easy. Recipient paying in 31 entirely, ये कब आता है? जब गुड्स है, जब गुड्स है which are subject to RCM. तो गुड्स है तो सेक्शन 12, आरसीएम है तो सेक्शन 12(3). गाइस रिमेंबर आरसीएम चार्जिंग में कहा थे 9(3), यहाँ पे 12(3), वहां पे 9(3). ओके, देन यू सी द सेंटेंस रेसिपिएंट पेइंग इन 31 entirely. आर इज रेसिपिएंट, आर इज रिसीव. कब रिसीव हुए? 29 सितंबर. तुमने कब पे किया है? मतलब किसके पेमेंट किसके लिए करोगे? किस कौन से व्यू से देखोगे? हु इज सपोज्ड टू पे टू द टैक्स टू द गवर्नमेंट? बिरयानी वाला. सो बिरयानी वाले के बुक्स में कब आया? 10th को, और बैंक में कब आया? 12th को, तो 10 देखोगे, 10th अक्टूबर. इनवॉइस कौन से डेट की है? उसका 31st डे देखो. इनवॉइस 1 सितंबर की, उसका 31 डे विल बी 1 अक्टूबर, या फिर वो, या फिर आपने एंट्री कब की है बुक्स में? 3 अक्टूबर. तो इनमें से अर्लीस्ट डेट कौन सी है? 29 सितंबर की. दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. तो बिकॉज योर टाइम ऑफ सप्लाई इज इन सितंबर, इन अक्टूबर प्लीज पे द टैक्स ऑन इट, डोंट डिले, अदरवाइज इंटरेस्ट लग जाएगा. So time of supply is of 29 September, that means of the month of September, then October तक आपको इसका टैक्स भरना पड़ेगा. I hope you got this one. I hope you got this one. Guys, as long as you follow the sentences, you will never ever go wrong. You will never ever go wrong. क्या जरूरी है चारों चीज देना? नहीं, कभी कभी दो ही चीज देते हैं, ये और ये ही देते हैं. तो then you have to compare the two which are given and answer. So payment in FCM is to be seen from supplier's view and RCM from recipient's view. Absolutely right, Muskan. But a easier way to remember is payment is always to be seen from the person who's supposed to pay the tax. In FCM, supplier pays the tax to the government. In RCM, recipient pays the tax to the government. But absolutely right understanding, Muskan. Good job. All right. The next one. The next one. Can you explain in 31? In 31. In 31 मतलब invoice date से 31st day. Let's say the invoice date is 1st of September. ये कैश जब खरीदे तो इनवॉइस तो मिला होगा आपको, तो इनवॉइस का डेट इज 1 सितंबर. उसके बाद 30 डेज जाने दो, नो प्रॉब्लम, तो पूरा मंथ खत्म हो गया. देन फर्स्ट 31st डे इज कंसीडर्ड. सो इन 31 इज इनवॉइस से 31st डे. I hope it's covered. Since RCM goods are not covered in Inter, they'll mention in the question that goods are subject to RCM. Of course, absolutely, Harshit. They will mention that these goods are subject to RCM. Guys, moving ahead.
All right, moving ahead. Harshit, Amaya, Muskan, I hope your questions are answered. Next one, the next three are so simple, guys. So simple. I can't even tell you how simple they are. The next one. All right. 12/4. Whenever I want to give a birthday gift to someone and I don't know what birthday gift to go give, I go to Shoppers Stop and I get them a voucher of Shoppers Stop. So I am buying a voucher on Shoppers Stop, and let's say I buy it on 29th September, that is today, and I gift it to my friend, and my friend redeems it in Diwali, or let's say on New Year on 31st December, my friend redeems it. Redeems matlab basically goes to Shoppers Stop and buys either a watch or a perfume or a dress or a tie or shoes or whatever they want to buy. Now in this case, in case of vouchers for goods है तभी यहाँ पे covered है. अगर service होता तो 13 में cover होता. In case of vouchers for goods, what is the time of supply? So now Shoppers Stop has to pay to the government, but when will Shoppers Stop pay depends on time of supply. Guys, इसमें ask yourself, is the supply identifiable? Can you identify the supply? मतलब, do you know what your friend will buy from Shoppers Stop? No, he can buy anything. He can buy a watch which is at 12%, or he can buy a shoe which is at 5% GST. So if you don't know if the supply is identifiable, no, the supply is not identifiable, then wait for him to redeem it, and the date of redemption will be considered as time of supply. That is 31st December. But guys, instead of a Shopper Stop voucher, if I give my friend a voucher of, let's say, Lenovo, oh no, let's say a voucher of Samsung mobile, and I know he's going to buy a mobile against it, is the supply identifiable? Yes. Then time of supply is date of issue of voucher, that is 29th September. So it depends on whether supply is identifiable or supply is not identifiable. It will depend, and this guys is the same in service also. I hope you understood this. वाउचर में बहुत सिंपल है. My voice was lagging a little. I hope it's better now. So voucher में it's pretty simple, guys. Vouchers के केस में, if it's identifiable, then date of invoice. I for identifiable, I for date of issue. Sorry, date of issue. And if it's not identifiable, then wait for redemption, and time of supply is date of redemption. All right. Next कर लेते हैं 12/5 and 12/6. 12/5 is residual. Residual मतलब आपको 12 में ही मालूम नहीं पड़ा, सॉरी 12/2 में भी आपको टाइम ऑफ सप्लाई मालूम नहीं पड़ा, 12/3 में भी मालूम नहीं पड़ा, वाउचर भी नहीं था. तो अगर कुछ भी नहीं है and you can't figure the time of supply, then residual section will come into picture. What if the voucher isn't redeemed? Will the seller get a refund? If that depends totally on Shopper Stop policy, honestly, refund ka. But if the voucher is never redeemed, time of supply will never come only. Time of supply will never come if it's not redeemed. All right. In residual case, if you can't figure time of supply using 12/2 or 12/3 or 12/4, then the residual case will apply. That means अगर कोई option बचता नहीं है तो take the residual case, whereby time of supply will be when you file your return or will be when you pay your taxes. मतलब उसके ज्यादा लेट मत करना. अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है तो उसमें तो इंक्लूड कर ही लेना. इफ यू कांट फाइंड इट बाय 12/2 or 12/3 or 12/4, then either date of return
or payment, whichever is early. Of course, in this chapter, anything is whichever is earlier. So let's say I could not find time of supply. I sold some goods to someone, but I could not find time of supply. Then जब भी मैं पेमेंट करता हूँ उसका टैक्स का, that will be time of supply, और जब मैं रिटर्न फाइल करता हूँ, that will be time of supply. Will Shopper Stop get a refund of GST paid on identifiable voucher if it is never redeemed by the customer? Amaya, excellent question there. Let me just reply to it. Amaya, imagine if you are Shopper Stop, did you get the money? Yes. Did you know that you are going to sell a phone? Yes, if the thing is identifiable and you paid the GST, why will you get a refund? You will not. The transaction is complete. Time of supply is done. You issued a voucher that's supposed to be identified. You will never get a refund of GST back again. But you will not even complain because in your voucher, you've already taken the GST money. So you have to pay to the government. Guys, a crazy lag in my internet. There's a lot of lag in my internet for some reason. There was a lot of lag in my internet, so I stopped talking. I'm just continuing the residual case. हो गया है. Residual case is the time you file the return or the time you make the payment, whichever is early. This is when nothing happens, residual case takes place. And last is 12.6. 12.6 is the last one, which is I'm first explaining the case. I'm first explaining the case. This is Vijay Sales, and this is me. I bought a TV from Vijay Sales. Guys, TV मतलब FCM, forward charge mechanism. I demand payment. Date of invoice 29th September, that is today. Due date, the TV was delivered to me on 3rd of October. So 3rd October was the due date, section 31.1. Guys, voice is lagging. I'm so sorry for that. I'm back again. I'm back again. Guys, I went to Vijay Sales. I bought myself a TV. A TV is forward charge mechanism. So let's find out the time of supply. Time of supply is earlier of I demand payment. I is invoice date. Vijay Sales ka invoice was 29 September. Guys, my network is, I'm having some network issues. Give me 2 minutes. I'll just fix my network and I'll be back. Give me 2 seconds. All right, guys, am I audible? Just want to know, just want to ask, am I audible?
Perfect. Thank you, Jagrati. All right, everyone. Guys, back again. We're doing the last section, section 12.6. Guys, if you understand these in time of supply of service, it's exactly the same. So be with me. In section 12.6, I bought a TV from Vijay Sales and they said it's a forward charge mechanism. Rakesh Gupta, I will find you a solution to that. Just let me know. After the session, I'll tell you how to get that. All right. Guys, yesterday's session is recorded. So if you want, I can send you a link for that, but that happens later. Right now, it's 12.6 FCM. I demand payment. So I invoice date is 29th September. Demand is 3rd of October. Demand is due date of invoice. That is the date before delivery, on or before delivery, or on or before removal. This TV was delivered to me on 3rd of October. I made a payment, and the payment has to be seen from Vijay Sales perspective because, like Muskan said, it's from the supplier's perspective. Supplier is supposed to pay the tax to the government. In their books of accounts and bank, it's the same date, that is 5th of October. So earliest of the three is 29th September. Let's say payment was 5th of December. I made the payment very, very late. I made the payment very, very late. Of course, time of supply for Vijay Sales, guys, time of supply for Vijay Sales for this TV is 29th September. But that is as per section 12.2. इसमें नया क्या है? I'll tell you. I made the payment for the TV very late, 5th of December, and Vijay Sales charged me interest for the delayed payment of 5,000 rupees. 5,000 rupees जब उन्होंने चार्ज किया मेरे से, तो इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा. पर इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? Guys, you can't expect Vijay Sales to pay GST on this before I pay the interest. I'll repeat one last time. On this interest amount, first, am I supposed to pay interest? Yes, I'm supposed to pay interest. Have they waived it off? No, they have not waived it off. I'm supposed to pay 5,000 rupees interest and I paid it on 5th of December. So when I paid it, that day will be considered as a time of supply. That day will be considered a time of supply. अगर उन्होंने waive कर लिया तो no problem, तो कुछ time of supply होगा ही नहीं. But अगर मैंने पे किया तो उस 5,000 के लिए what is the time of supply? The day I made the payment, and that is given by section 12.6. So 12.6 says that any interest, any penalty, any fee which is paid, अगर वो पे होता है, only on payment basis you will determine time of supply. That's it, guys. That's it. Now let's do supply of services. In 2 minutes from now, time of supply of services. Guys, you will finish that so fast because it has a lot of parallel from here. 2 minutes and we start time of supply of services.
All right, audio was not proper. Now I hope it's proper. In RCM under section, Jagrati, I'm looking at your question. In RCM under section 12.3, payment is still to be seen from supplier's point of view because it's the recipient who's paying the tax. No, in 12.3, Jagrati, I think you missed that point. In 12.3, it's from the recipient's perspective, the payment, and in 12.2, it's from the supplier's perspective. In a nutshell, Jagrati, if I want to just summarize it, whoever is paying the tax, so in FCM, the supplier pays the tax, then you look at his books and his bank account, and in RCM, the recipient does it, so you look at his books and his bank account. I hope that is clear. All right, guys, on your screen is time of supply of services. In that, in time of supply of services, whenever I look at the time, it's either 12 o'clock or 13 hours. 1300 hours means 1 o'clock. Section 13 is time of supply but of services. It's very frustrating. I know, guys, why voice is lagging. I completely understand voice is lagging. Unfortunately, my internet is just being a nightmare today. I have other better words to use, but I'm refraining. It's very frustrating, the network going. All right, anyway, I'm back. Section 13 talks about time of supply of services. 13.1 says, I'm a very useless section because for time of supply of services, look at 13.2 or 13.3 or 13.4 or 13.5 or 13.6. Let's start with 13.4, which is vouchers. Guys, how do you remember it? Vouchers are always 4 vouchers. You never buy 1 voucher. Guys, always. If you love shopping, you know you buy 4 vouchers, you never buy 1 voucher. Just remember it like that. Now, on my friend's birthday, I gave him a salon's voucher. How many vouchers? 4 vouchers. I bought 4 vouchers worth 10,000 rupees and I gave it to my friend on his birthday or her birthday. Now, for this 10,000, of course, the salon will have to pay to the government the GST on this 10,000. Of course, I will bear the burden, but the salon has to collect it and pay. But for that, what is the time of supply? In the salon, I cannot go and buy a watch in a salon. I cannot go and get CA services in a salon. So the services are identifiable. Yes. If the service is identifiable, date of issue, that is 29 September. But if the services are not identifiable, then it's the date of redemption. That is, let's say my friend's birthday was 31st of December. So that day will be considered the time of supply. So time of supply is exactly the same in 12, in the 12th section and the 13th section. Both it's the same. So I'm just putting it, I'm putting 2 stars here. It's the same, guys. It's the same as what we saw in, if it's identifiable, then it's a date of issue of the voucher. And if it's not identifiable, then it's a date of redemption. Don't worry, things will be very simple. They will tell you in the exam if it's identifiable or not. They will not want you to guess. That's voucher. This is also similar. I'm putting a star here as well. 13.5 is the residual section, which says that if you can't find the time of supply with any of these methods, so all these methods fail, this fails, this fails, this fails. If all these methods fail, then use the residual method. Residual method says that either when you pay the taxes or when you file your return, whichever is earlier, will be considered time of supply. For the residual case also, it's the same. Supply of goods and supply of services similar. Last, Tata Power told me that if you pay your bill late, we will charge you interest, fee, penalty. That is always covered in section 13C, interest, fee, penalty. So for Tata Power, what is the time of supply? Because they have to pay tax on this to the government. First, tax will only be leviable if the interest, fee, penalty is actually charged.
Just by saying that we will charge you, the fee interest is not leviable. But if it actually collects 5,000 rupees from me for interest, then time of supply is when on payment basis. Whenever I pay on payment basis, the time of supply is the date of payment. This also is the same, so I'm putting 2 stars here as well. So what is different? Guys, you will see even this is the same. Supply of services on RCM basis. RCM for goods was 12.3, RCM for services 13.3. Be with me, guys. This is the lawyer and this is Vijay Sales. Lawyer supplied services with services, legal services, and for which Vijay Sales paid 10 lakh rupees. Why only 10 lakh? Why not the GST? Because GST in this case is RCM basis. So who's the recipient? Recipient is Vijay Sales. Are they big? Are they a business entity? Are they registered? Yes, they are. So who will pay under RCM? Who will pay? Vijay Sales will pay to the government. But time of supply तो बताओ. ठीक है, पेमेंट विजय सेल्स करेगा, बट टाइम ऑफ सप्लाई कौन से मंथ में करेगा? That we will talk about now. 13.6 is from whose point of view? 13.6 is always from the right, whoever has to pay tax to the government. So Prancy, answering your question, whoever is to pay to the government. So in 13.6, let's say Tata Power is collecting interest from me, they will pay tax to the government. So from their perspective, but only if the interest fee and penalty is actually collected. अगर सिर्फ धमका रहे हैं, अगर सब धमकी दे रहे हैं कि वी विल चार्ज यू इंटरेस्ट, बट चार्ज नहीं करते, वेव ऑफ कर देंगे. अगर वेव ऑफ कर देंगे तो सप्लाई भी नहीं है और उस पर टाइम ऑफ सप्लाई भी फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा. गाइस कमिंग बैक, आरसीएम वेरी इंपॉर्टेंट. गाइस ये जो 2 और 3 है यही इंपॉर्टेंट है. वाउचर्स कभी कभी आ सकता है, ये 5 और 6 इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. I'm at 13.3. Vijay Sales took some lawyer services, legal services, paid 10 lakh rupees. उस पे GST कौन भरेगा? विजय सेल्स भरेगा. Why? Because RCM. You know, legal services is covered under RCM. Guys, I told you this is very similar. Last time का sentence क्या था? Recipient paying in 31 entirely. अभी थोड़ा चेंज करना है. Recipient paying in 31 entirely था. ये कहाँ पे था? ये गुड्स में था. अभी थोड़ा चेंज करना है. सी सर्विसेज में रिसीव करके कुछ नहीं होता है. गुड्स में आई कैन रिसीव, गुड्स में मेरे को टीवी मिल सकता है, आई कैन रिसीव अ टीवी, आई कैन, बट सर्विसेज में रिसीव इज अ वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. व्हेन आई गिव यू लीगल सर्विसेज, रिसीव कब होगा? फर्स्ट डे पे होगा या आफ्टर 6 years होगा? तो रिसीव निकाल देते, ओके निकाल देते, पेमेंट रखते हैं, इन 31 निकाल के इन 61 कर देते, तो सर्विस में 61 मिलता है डेज, बाकी सब सेम है. मतलब रेसिपिएंट पेइंग इन 31 था, वो चेंज कर दिया, पेइंग इन 61 एंटायरली. पेइंग इज पेमेंट. ये लीगल सर्विसेज का पेमेंट कब किया है गाइस? हुज पर्सपेक्टिव यू विल सी इट? हु हैज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट? विजय सेल्स. रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट के पर्सपेक्टिव से लेट्स से पेमेंट कब हुई है इसकी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 29 को हुई है और बैंक में 3 अक्टूबर को हुई है. सो विच एवर इज अर्लियर, 29 सितंबर. इनवॉइस कब था? ये लॉयर ने इनवॉइस कब इशू किया? गाइस लॉयर ने इशू किया था इनवॉइस August 1 को. इधर गाइस लॉयर ने कब इशू किया था इनवॉइस? August 1 को. August 1 से 61 डेज, तो पूरा अगस्त 31 डेज चले गए एंड नेक्स्ट 30 डेज इन सितंबर. तो 30th सितंबर को इज द इनवॉइस के बाद 61st डे. इन 61 इज इनवॉइस के बाद 61st डे. और अगर दोनों नहीं है तो आपने एंट्री कब की? विजय सेल्स ने इस सर्विस की एंट्री कब की? लेट्स से एंट्री की 5 अक्टूबर को. whichever is the earliest, 29 September is the earliest, that will be considered as a time of supply. Trust me guys, time of supply is so confusing. After this you will never be confused.
रेसिपिएंट के आरसीएम के केस में कौन सा सेंटेंस है? रेसिपिएंट पेइंग इन 31 एंटायरली, बट ये तो गुड्स के लिए है। हाँ, तो सिमिलर है सर्विस के लिए भी, रेसिपिएंट निकाल दो, बिकॉज सर्विसेज कब रिसीव होती है मालूम नहीं पड़ता है। गाइस, पिनिकल का ट्यूशन आपने ज्वाइन किया था लेट्स से लास्ट ईयर और 6 मंथ्स पहले, अभी खत्म हो रहा है, तो कौन से मंथ में रिसीव होगा? रिसीवेंट फॉर सर्विस इज वेरी सब्जेक्टिव, सो आर निकाल दो, तो आर निकाल दिया। पेमेंट in 61. See, Pinnacle, when you joined them and when they completed, it took 3 months for the classes. Or let's say when you're at final CA, it sometimes takes 1 year for the classes to get over. So what is receipt of service is very subjective. Let's say I give you some legal services. Law, अपना legal service चालू हुआ, वो 4 साल पहले था, खत्म हुआ वो इस साल खत्म हुआ, तो what is receipt is cancel कर दो receipt. Payment देखो from whose perspective? From whoever's paying to the government, उसके perspective से. Invoice के बाद 61st day या एंट्री कब की थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इन तीनों में से whichever is earlier will be the time of supply. And last, how 30th September, Muskan, if your invoice was raised on 1st of August, then calculate 61 days from 1st of August. 61st day you have to calculate. So August, 1st of August का invoice है, तो 31 days of August plus 30 days of September. So 30th September, yes, 61st day from the invoice date, no, not from the next day. 61st day from the invoice date. Invoice 61 था, 61st day from the invoice date. So 61 day is 30th September. Suti, it's 61st day from the date of invoice, not from the next day from the date of invoice, from the date of invoice. All right. Small technical hits here. I hope you guys are okay. Muskan, Stuti, I hope it's clear. All right. Guys, looking at the last thing, that is 13.2, where services supplied under FCM. Under FCM. All right. So FCM में सर्विस लेते हैं, let's say CA services. A CA firm gives services to Vijay Sales. Vijay Sales का अकाउंटिंग कोई कर रहा होगा, राइट? ऑडिटिंग कोई कर रहा होगा. विजय सेल्स का अकाउंटिंग ऑडिटिंग जो भी कर रहा होगा, that CA firm will charge them, let's say 10 lakh rupees. On 10 lakh, GST will be 1 lakh 80 example, so it will be 11 lakh 80. ये 11 lakh 80 CA firm will have to pay to the government, which is okay, but time of supply तो बताओ. पे करना है CA firm को, बट कब पे करना है, टाइम ऑफ सप्लाई तो बताओ. अगर CA firm ने इनवॉइस टाइम पे इशू कर दिया, then the invoice date or the payment date, whichever is early. और अगर CA firm ने इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया जानबूझ के, then provision of service and payment of service, whichever is early. IPPP. This is the last thing that you need to remember. Shortcut, guys. IPPP. Again, I repeat. What are we talking about? We're talking about supply of services. उसमें FCM है, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स में तो आई डिमांड पेमेंट था, बट यहाँ पे आई डिमांड पेमेंट नहीं है. IPPP. अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया, then either invoice date or the payment date, whichever is earlier. Payment date किसके एंगल से? CA firm के एंगल से, बिकॉज वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है. अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया जानबूझ के है, तो then provision of service or payment date, whichever is earlier, again payment from the CA firm's perspective, because ये FCM. All right. Let's take invoice कब इशू किया. All right. guys, CA firm ने accounting services दी, and accounting services दी 25th सितंबर को खत्म हो गई सर्विस. 25th सितंबर को प्रोविजन ऑफ सर्विस हो गई.
29th, just one second. Voice is lagging. All right, I'll repeat one last time. IPPP. I hope my voice is better now. Okay. In case of time of supply, let's do only IP first. If the invoice is issued on time, then either the invoice date or the payment date, whichever is early. All right. So let's see CA firm ने क्या क्या किया है. Guys, CA firm ने accounting services दी. 25 सितंबर तक अकाउंट्स फाइनल कर दिए. सर्विस होगी खत्म. इनवॉइस इशू कर दिया उन्होंने, उसी सेम डेट पे इशू कर दिया इनवॉइस. वेरी प्रोएक्टिव. काम खत्म करते ही इनवॉइस इशू कर दिया. एंड विजय सेल्स ने इसके लिए पेमेंट कर दी ऑन द 5th of October. लाइफ इज गुड. पेमेंट भी फटाफट आ गई. बट पेमेंट किसके एंगल से देखेंगे? सीए फर्म के एंगल से. तो सीए फर्म के बुक्स में 5th अक्टूबर को आ गए और उसके बैंक में 7th अक्टूबर को आए. तो कौन सा डेट देखेंगे? 5th अक्टूबर, विच एवर इज अर्ली. तो ये नाउ इसमें आईपी है. तीन चीज नहीं देखना है. इधर इनवॉइस, yes, I know voice is lagging a lot, guys. I'm so sorry. I'm so sorry. One second. I'll just try and do something here. I want to file a case against these internet service providers. All right, guys. I'm sorry the internet went off. I want to really file a case against these guys. Yes, yes. Don't worry, Goyam and everyone else. I'm going to repeat this. So, guys, the CA firm provide accounting services. They provide the services of 25th September. They raised the invoice on 25th September very proactively, and the payment was made on the 5th of October by Vijay Sales. But of course, payment is always looked at from the person who's going to pay the tax. So CA firm's perspective. So 5th October or 7th October, whichever is early, 5th October. Now, they say if the invoice is issued on time, then it's either the invoice date or the payment date, whichever is earlier. But how do you know invoice has been issued on time? How do I know, guys, the invoice has been issued on time? For that, again, I will go to section 31, which is the section for invoice. And usme I will go to section 2, section 5 और section 6. Guys, जैसे goods के लिए 147 था, goods के लिए क्या number था? 147. सर्विस के लिए है 256. गुड्स के लिए 147, सर्विस के लिए 256. इन टू बहुत सिंपल है, बहुत 256 बहुत ही सिंपल है. टू वाला बोलता है that the invoice has to be issued within 30 days from the provision of service. आपने जब सर्विस खत्म कर ली, प्रोवाइड कर ली, उसके 30 डेज में आपको इनवॉइस इशू करना है. तो आपने सर्विस कब प्रोवाइड की? 25 सितंबर को. तो विद इन 30 डेज मतलब बाय 24 अक्टूबर आपको इनवॉइस इशू करना है, और आपने कर लिया. विद इन 30 डेज आपने कर लिया. तो अगर इनवॉइस टाइम पे इशू कर दिया, तो देन इधर इनवॉइस or payment, whichever is early. All right, let's change a little. What if the invoice was issued on the 5th of October? Then also invoice is issued within 30 days from provision of service, so it's issued within time. And if it's issued within time, then invoice or payment, whichever is earlier. So 5th October दोनों same ही date पे, no problem.
What if this was 15th October? Still it is within 30 days. So invoice or payment, whichever is earlier, 5th October is the time of supply. So please remember guys, invoice आप कब देखोगे? जब invoice time पे issue किया है तभी उसको देखोगे. But what if invoice was issued on the 27th of October? So is the issue of invoice in time? No, it's not within 30 days. It's not within 30 days. अगर invoice time पे नहीं है तो invoice को आप नहीं देखोगे. Right? Late invoice is to be ignored. Did you hear me right? Late invoice is to be ignored. ये late invoice है? Yes, ये late invoice है. 30 days के अंदर नहीं है. आपका 25 सितंबर को काम खत्म हो गया था. तो 30 days will be 24th October. 27th October is a late invoice. तो invoice को आप ignore करोगे. तो then what do you compare? Then it's either provision of service or payment, whichever is earlier. So provision of service or payment, whichever is earlier. So in this case, 25th September is earlier. I will repeat this one last time, guys. CA फॉर्म ने सर्विस प्रोवाइड की, FCM में सर्विस है. FCM मतलब 13 सेक्शन सबसेक्शन 2. उसमें बोला है, I'll just clear this everything out. सीए बोलता है कि लिसन आई नो आई नीड टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, बट मुझे टाइम ऑफ सप्लाई तो बताओ. मुझे टाइम ऑफ सप्लाई तो बताओ. आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई. सो यू आस्क हिम, क्या इनवॉइस टाइम पे था या इनवॉइस लेट था? अगर इनवॉइस टाइम पे है तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. और अगर इनवॉइस लेट है तो देन आई इग्नोर लेट इनवॉइसेस को, मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता. तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. तो पेमेंट तो हमेशा है गाइस, पेमेंट तो हमेशा देखोगे. अगर इनवॉइस टाइम पे तो इनवॉइस देखोगे, अगर इनवॉइस टाइम पे नहीं है तो प्रोविजन ऑफ सर्विस देखोगे. एंड इनवॉइस टाइम पे का मतलब क्या हुआ? सेक्शन 31 2 5 and 6. Section 31 subsection 2 says invoice should be issued within 30 days. But guys 30 days बहुत short है. For banks और financial services बहुत short है, तो उनके लिए 45 days. एक exception है, generally it's 30 days, but exception है banks insurance के लिए 45 days. Alright. डोंट वरी, ये अगर लग रहा है आपको कंफ्यूजिंग है, जब हम सम्स करेंगे तो इट विल फ्लो वेरी वेरी इजीली. टाइम ऑफ सप्लाई नीड्स दैट काइंड ऑफ अटेंशन बिकॉज सम इस पे आ सकता है डेफिनेटली. ऑलराइट, नेक्स्ट गाइस, सीए फर्म है, सर्विस सप्लाई कर रही है अकाउंटिंग की, बट सर्विस करते करते विजय सेल्स को विजय सेल्स डिडंट लाइक द सर्विस एट ऑल. डेबिट की जगह क्रेडिट था, क्रेडिट की जगह डेबिट था. So can you explain the part where supplier receives 1,000 and both? Yes, we will. Amaya, thanks for pointing it out. Give me 2 minutes. I'm just parking 1,000 rupees here. I'll explain in 5 minutes from now, once we finish this. So but in case of payment is made before supply of service, won't it be advance paid? Arjun, we're also looking at advance. Give me 2 minutes. Alright. Guys, the next one. CA firm is giving some services. CA firm is giving some services to Vijay Sales. But Vijay Sales didn't like the service. So they said, listen, ये सर्विस मुझे पसंद नहीं आई है. आज 29 सितंबर है, आज खत्म कर देते हैं. लेट्स एंड दिस सर्विसेज. लेट्स डू सेसेशन ऑफ सर्विसेज. इन केस ऑफ सेसेशन ऑफ सर्विस, ऑलवेज इट्स इन केस ऑफ सेसेशन ऑफ सर्विस द ड्यू डेट, मतलब जब सेसेशन हुआ है उस दिन या उसके पहले मैक्सिमम आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. तो 29/9 को सर्विस में एक तो था नॉर्मल सर्विस, एक था सेसेशन ऑफ सर्विस. सेसेशन ऑफ सर्विस में 30 डेज से नहीं रुकोगे आप. इन केस ऑफ सेसेशन ऑफ सर्विस योर इनवॉइस विल बी इशूड ऑन द डे द सर्विसेज आर सेसेशन, मतलब कैंसिल होती है. अगर आपकी सर्विसेज कैंसिल हो रही है तो उसी दिन पे, दैट मींस अगर आज कैंसिल हो रही है तो आज ही इनवॉइस इशू होगा. All right. Now let's see what is time of supply. अगर इनवॉइस टाइम पे है तो इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, और इनवॉइस टाइम पे नहीं है तो प्रोविजन और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर. पेमेंट लेट्स से हुई है 5th अक्टूबर को.
क्या इनवॉइस टाइम पे है? यस। सेसेशन कब हुई? 29 सितंबर को। इनवॉइस कब आ गया? 29 सितंबर को, टाइम पे है तो 29 सितंबर तो इनवॉइस देखेंगे, एंड विच एवर इज अर्ली विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. बट व्हाट इफ देयर इज नो सेसेशन, सॉरी व्हाट इफ देयर इज सेसेशन बट इनवॉइस लेट आई है? इनवॉइस आई है 5 अक्टूबर को, तो इन दैट केस इनवॉइस लेट है तो इनवॉइस नहीं देखेंगे. प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. सो प्रोविजन ऑफ सर्विस कब खत्म हो गई है? 29 सितंबर को. दैट ऑफ 5 अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर. Again guys, only thing यहाँ पे change हुआ है, this is not normal service, so we will not wait for 30 days for invoice. It is a cessation of service. जब service cancel होती है तो then we will not wait for 30 days and immediately that day, उस दिन last day होता है invoice raise करने का. जब services cancel हुई उस दिन last day होता है. And the last part on service is continuous supply. Guys, I told the CA firm that listen, तुम मुझे every month GST compliance services दो. So is this continuous supply? Only if this is more than 3 months. Guys, continuous supply of goods में कोई time limit नहीं थी. Continuous supply of goods, Tata Power supplying electricity और भारत गैस supplying gas, उसमें कोई time limit नहीं थी. But supply of services में 3 months की time limit है. ये MCQ question बन सकता है बहुत अच्छा. In this case, when someone is giving you continuous supply of services, again you have to ask yourself time of supply क्या है. मतलब सीए फर्म अप्रैल में भी सर्विस दे रहा है, मई में भी दे रहा है, जून में भी दे रहा है, जुलाई में, कंटिन्यूस एवरी मंथ दे रहा है 3 मंथ्स के ऊपर, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. Another example is in my office there is a guy who comes every month to service the ACs. It could be that every month something happens. Continuous supply of services, anything that happens for more than 3 months continuously, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई is either if the invoice is issued on time, then invoice or payment whichever is early, and the invoice is issued late, then ignore the invoice, provision or payment whichever is early. Alright, but how do I know whether invoice has been issued on time or not? Invoice का section is section 31, and 31 में you remember supply के लिए 2, 5 and 6, तो 2 तो देख लिया था. Within 30 days you need to issue invoice, 45 days for banks and financial institutions. 6 is cessation of service. ये 5 is continuous supply. Continuous supply बोलता है कि अगर ड्यू डेट मेंशन्ड है, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मेंशन्ड है तो दैट डेट विल बी द डेट ऑफ इनवॉइस. अगर ड्यू डेट मेंशन नहीं है बट एक कंप्लीशन डेट मेंशन है कि इनवॉइस इस दिन कंप्लीट हो जाएगा, तो देन दैट डेट विल बी द डेट ऑफ इनवॉइस. मतलब उस दिन तक तो आपको इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा, और लास्ट जब पेमेंट आ गया दैट विल बी द डे ऑफ इनवॉइस. अगेन आई रिपीट गाइस, आपको इनवॉइस इशू करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जब भी इनवॉइस इशू करूंगा मैं गाइस, द मोमेंट आई इशू अ इनवॉइस आई एम स्कैर्ड दैट आई हैव टू पे द टैक्स, सो आई डिले द इनवॉइस. बट दे से इस ड्यू डेट तक तो इनवॉइस आ जाना चाहिए. व्हाट इज द ड्यू डेट in case of continuous supply? When the agreement mentions the due date, that due date, or on the completion of event, that due date, or when the payment is received, that due date. But उस दिन तक भी नहीं आया तो then invoice is late and you ignore invoice and you see provision and payment whichever is early. Don't worry if you feel this is confusing. When we do a sum, it will all fall into place as long as you remember these subparts and these acronyms. Goods के लिए 12(1) useless section, 12(2) FCM I demand payment, उसके लिए 31(1), 4 and 7. 12(3) is RCM, उसके लिए recipient paying in 31
entirely. 12/4 vouchers, date of issue or date of redemption depending on whether goods are identifiable or not. 12/5 is residual, and 12/6 is that interest free penalty on payment basis. All right. Two things left. Two things left. Guys, I'm a CA firm. I supplied some service to Vijay Sales that come under continuous supply too, or do we have to do it separately for each month? One second. So if you have a magazine subscription every month, will that come under continuous supply too? Yes, that will come under continuous supply. Shivam, absolutely right. If you've taken a magazine subscription, let's say of India Today, that India Today is a supplier and they're giving you continuous supply. If it's a magazine, so it's a good. So if it's regularly coming to you, it will be continuous supply. And for continuous supply, you will see section 31(4). All right. Arjun and Amaya, I'm looking at your questions. I'm a CA firm. I gave some certification service to Vijay Sales, some basic service to Vijay Sales. I I raised a bill of 1,04,400 rupees. But Vijay Sales paid me 1,05,000. I raised a bill of 1,04,400, but Vijay Sales paid me 1,05,000. They said, listen, 600 extra pay kar raha hu, next time adjust kar lenge. Guys, any payment received in excess, but up to 1,000 rupees. एक्सेस पेमेंट मिली है, कितनी मिली है? 600 रुपीज की एक्सेस पेमेंट मिली है. ये इनवॉइस का डेट, लेट्स से दिस इनवॉइस डेट और दिस टाइम ऑफ सप्लाई इज लेट्स से 29 सितंबर, एंड नेक्स्ट जो आप बिल रेज करने वाले हो टू विजय सेल्स विल बी ऑन 31st October. सो एट योर ऑप्शन दिस 600 का टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? ये 1,04,400 का टाइम ऑफ सप्लाई तो 29 सितंबर है, बट ये 600 रुपए जो तुमको एक्स्ट्रा मिले हैं, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? मतलब इसके ऊपर जो जीएसटी है, इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा. वो जीएसटी का पेमेंट सीए फर्म को करना पड़ेगा. वो कब करेंगे? दैट इज डिपेंडिंग ऑन द सीए फर्म. दे कैन चूज, either they can consider this as a time of supply or they can consider the next invoice date as a time of supply. कभी कभी एडवांस पेमेंट आ जाता है गाइस, कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट आ जाता है, एंड दिस एक्स्ट्रा पेमेंट अप टू 1,000 रुपीज यू कैन मेक एन एडजस्ट. अगर 1,000 से ऊपर है then you cannot have this option, then time of supply will be 29 September only. But up to 1,000 rupees अगर ये option है, you can take 29 September also, or you can take the next invoice date. That's answering the 1,000 rupee question. This is the same case with goods also. This is the same case with goods also. And one more thing, let's look at one more thing. This is the CA firm again. They provided services on the 25th September. They raised the invoice on the 15th of October. The payment in their books was 17th October. In their bank account was 19th October. Of course, they gave services to Vijay Sales. Alright. But Vijay Sales for these services had made an advance payment. And let's say service था 5 lakh rupees का. तो Vijay Sales ने advance payment कर दिया था even before providing the service on the 10th of September only. या 10th of August ले लेते. 10th of August only they made an advance payment of 50,000 rupees. And balance payment 4,50,000 का उन्होंने किया 17th October, 19th October. Now guys, this is your question. This can be an excellent exam question. 5 lakh का service दिया CA firm ने. Who has to pay the tax? CA firm will have to pay the tax. So payments किसके एंगल से देखोगे? CA firm के एंगल से payments देखोगे. Both these payments, guys, both these payments will be seen from the CA firm's perspective. Now, whenever it's time of supply,
I look at invoice or payment, whichever is earlier, or the invoice is late, I look at provision or payment, whichever is earlier. First, tell me whether the invoice is on time or not. This is not cessation of service. This is not continuous supply of service. This is normal service. So invoice should be issued within 30 days, and invoice is issued within 30 days. 25th October से 30 days is 24th October. 25th September say 30 days is 24th October. I have issued the invoice on time, so I am going to be lying here. All right. Now invoice date is invoice date is 15th October. So either invoice date और पेमेंट डेट, बट दो पेमेंट डेट है तो दोनों लिख लो. 10th August for 50,000 and 17th or 19th, sorry 17th October for 4,50,000. दोनों लिख लो. Now for each of them find out the time of supply. Guys, for 50,000 the time of supply is either this or this, whichever is earlier. So for 50,000 the time of supply is 10th August. And for 4,50,000 the time of supply is either 17th October or 15th October, whichever is earlier. So it is 15th October for 4,50,000. So यहाँ पे दो time of supply है because you made an advance payment, and unlike goods यहाँ पे advance payment is allowed. यहाँ पे advance payment is allowed मतलब यहाँ पे advance payment को भी consider करोगे time of supply में. Goods में advance payment had to be ignored, but not in supply. Sorry, not in services. I hope this is clear. Guys, logic remains the same. आपने कुछ change नहीं किया. I put all the details on the left hand side. I put invoice on time. So invoice or payment, whichever is earlier. Invoice का date is 15th October. There are two payments. 10th August for 50,000 and 17th October for 4,50,000. So अगर दो पेमेंट है तो टाइम ऑफ सप्लाई भी दो हो सकते हैं, बिकॉज सीए फर्म माइट हैव टू पे ऑन 50,000 जीएसटी जल्दी भरना पड़ेगा उसको. तो कैसे मालूम पड़ेगा? यू कंपेयर 10th August to 15th October, whichever is early. So for 50,000 this is the time of supply, and for the next 4,50,000 it's either this or this, whichever is early. So this one is for 4,50,000. I hope this is understood. I hope this is understood. Guys, it's been a long time that we spent on time of supply, but it needed this kind of time because इसमें complications थे, इसमें shortcuts डालने थे मुझे, so it needed this kind of time. Unfortunately, we had to spend this kind of time. All right, let's look at the questions, guys. Our questions are waiting for us. Let's look at the questions. MCQs are on the screen. Time of supply MCQs on the screen, guys. What is the time of supply of goods in case of forward charge? Step by step. First, it is goods. So section 12. Forward charge section 12(2). And 12(2) बोलता है I demand payment. Invoice date or due date of invoice or payment date, whichever is early. Let's go a little more detail. Invoice date is simple. Payment date is from whose perspective? The supplier's perspective, because he's going to pay the tax. This is forward charge. And due date for goods is either 1, 4 or 7. On removal or delivery, whichever is early, on with removal or delivery उस time तक invoice आ जाना चाहिए. या अगर continuous supply है तो successive statements और successive payment जब आया उसके पहले invoice आ जाना चाहिए. या sale on approval है, then either when it's approved or maximum we will wait for 6 months from the date of removal of goods. All right, तो यहाँ पे आंसर इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट और रिसीप्ट ऑफ कंसिडरेशन बाय द सप्लायर, मतलब पेमेंट ओनली, whichever earlier of A, B and C. One second. Date of receipt of consideration by the supplier, earlier of A or B. Date of receipt of consideration by the supplier. It's not just date of receipt of consideration, it's date mentioned in the either books of accounts or the bank. So that's why this is not considered. This is wrong. So it's either A or B.
All right. Guys, let me know if you have any question on this. I'm unmuting everyone for this question answer session. In case you have any doubt, please start your mics and talk to me. Next question. What is the time of supply of goods? Goods जैसे ही आता है section 12. In case supplier opting for composition levy. Guys, composition levy तो कुछ simple ही था. Composition levy में you don't want to have a burden. So जैसे से आप बेचोगे date of issue of invoice or date of receipt of consideration, whichever is earlier. So earlier of these two. कॉम्पोजिशन स्कीम में तो एवरी क्वार्टर में आपको जितना भी पैसा मिला, इधर दैट या कितना भी इनवॉइसेस हुए, इधर दैट यू हैव टू ऐड अप एंड यू हैव टू पे 1%, 1% और 5% डिपेंडिंग वेदर you're trader, manufacturer or restaurant service provider. Determine time of supply of goods. Guys, very important. Goods है तो सेक्शन 12, कुछ नहीं बोला है तो सेक्शन 12 टू FCM. I demand payment. Date of issue of invoice 21st July. So I'm writing 21st July here. Date of dispatch of goods by the supplier. Dispatch तक due date होता है तो 22nd July. Date of receipt of payment in bank account or books of account, whichever is early. तो ये ignore करेंगे 15 June. So guys, which of these are earliest? 15 June looks like the earliest, but actually ये advance payment है. गुड्स आने से पहले तुमको पैसा आ गया, ये एडवांस पेमेंट है तो एडवांस पेमेंट इग्नोर करोगे आप. इन दोनों के बीच में whichever is earlier, 21st July is the right answer. Guys, this is a very tricky question. Please understand, someone had asked a question also. Someone, I think Jagriti or someone had asked a question around this. एडवांस पेमेंट किससे पहले होना चाहिए? गाइस, पेमेंट ये यहाँ पे पहले आ गया है, 15 जून को ही आ गया है. दिस इज एडवांस पेमेंट बिकॉज इट्स कम इवन बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. And hence this is to be ignored. So between this and this, which is to be taken? The earlier one, 21st July. It's not that all three will be always be given, guys. Even if two are given, you have to choose the earlier one. Guys, the next question I'm looking at. What is the time of supply of goods? Section 12, goods आते ही. Under reverse charge mechanism. Guys, reverse charge मतलब 12(3). Recipient paying in 31 entirely. Date of receipt of goods or date of payment from whose angle? From the recipient's angle. Or date immediately following 30 days, so 31st day. Or entry का कुछ बात ही नहीं किया है. I'm not saying that all four have to be there, guys. Even if three are given, earlier of the three. So answer is D. Next. What is the time of supply of vouchers when the supply with respect to the voucher is identifiable? Guys, goods हो या service हो, goods हो या service हो, vouchers के लिए same है. अगर identifiable है, then date of issue of voucher. What is the time of supply of vouchers when the supply is not identified? Date of redemption of voucher. कौन सा section है? अगर goods है तो 12(4), अगर service है तो 13(4). Always you buy 4 vouchers together. What is the date of receipt of payment? Guys, payment अगर कुछ नहीं बोला है तो FCM या RCM कुछ बोला नहीं है. Date of entry in the books or date of payment credit in the bank account, whichever is earlier. So answer is C. Alright, next one. Mr. A, who has opted for composition levy, supplies goods worth 24,300 to B. Issues an invoice. So guys, supply कितने का किया है goods? 24,300. Invoice date कितना है? 25th September is the invoice date for 24,300 rupees. Mr. B ने कितना पे कर दिया है? 25,000 पे कर दिया है. Great. On the 1st of October, 25,000 receipt आ गया है. The excess 700 being less than 1,000 is adjusted in the next invoice for supply of goods on 5th October. Guys, next invoice जाने वाला है 5th October को, तो जो extra payment आ गया है 700 रुपए का, वो उसने next में adjust कर लिया है. Identify the time of supply and value of supply. Very simple, guys. Composition scheme में no complication.
For 24,300 ये invoice date है, so this will be the time of supply. And for the 700 you have the option. You can either take 1st of October, that is जिस दिन पैसा आया, या 5th of October at your option. So you can either take 1st of October or 5th of October at your option. Alright, just one second. I'm just a little confused here because dates are slightly off. The answer should be, just one second, guys. Yeah, answer is right. Guys, at the option of the supplier, he can choose any of the next date, that is the 1st of October or the 5th of October. Answer is slightly off here, guys. This question I would just recommend you all to ignore it because मेरे को date का problem है. Composition levy में the time of supply, Muskan, your answer is in this question only. What is time of supply of goods in case of composition levy? It's either date of issue of invoice or date of receipt of consideration, whichever is earlier. Very simple. Composition supply में very simple. Let's look at the next one. What is the time of supply of service? Service मतलब section 13. If the invoice is issued within 30 days, guys, अगर 30 days में invoice issue किया है, मतलब time पे issue किया है. अगर time पे issue किया है तो invoice date और payment date whichever is earlier, date of issue of invoice or date of payment whichever is earlier of A or B. Provision नहीं देखेंगे because invoice has been issued on time. That's right, Muskan. Only two things to be seen there. Next question. What is time of supply of service? Service है मतलब section 13. For the supply of taxable services up to 1,000 in excess, मतलब 1,000 रुपए excess आ गए हैं. आपने इंडिकेट किया था 12,000 रुपए, सामने वाले ने भेज दिए 13,000 रुपए. तो दिस एक्स्ट्रा 1,000 का टाइम ऑफ सप्लाई क्या है गाइस? 1,000 रुपीज तक आप नेक्स्ट इनवॉइस डेट भी देख सकते हो एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, द इनवॉइस डेट और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन. ऑलराइट, माय बैड. जब मैं 1,000 का एक्सप्लेन कर रहा था मेरे से एक मिस्टेक हो गई है गाइस. व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग 1,000, द टाइम ऑफ सप्लाई इज योर चॉइस. either you can take the date of invoice डेट ले सकते हो आप, ये आपको जब ये पैसा मिला डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन ये ले सकते हो. दोनों में से कुछ भी ले सकते हो. आई हैड सेड अभी का इनवॉइस है नेक्स्ट इनवॉइस, सॉरी माय मिस्टेक. तो इनवॉइस का डेट या कंसिडरेशन जब मिला वो डेट, दोनों में से आपका चॉइस है. अगर दोनों एक ही मंथ में तो डजंट मैटर, बट अदरवाइज इट्स योर चॉइस वेरेवर यू वांट टू फिट इन. लेट्स से you issued an invoice today on 29th September. This is the date of invoice and the invoice was for 24,000. The person paid you on 30th October. He paid you, this is date of receipt of payment or date of payment, and he paid you 24,700. That means he paid you 700 extra. This 700, it's your option. You can consider time of supply as date of invoice, that is 29 September, or you can consider it on the date of receipt. मतलब रिसीप्ट से लेकर नहीं कर सकते हो. पैसा आ गया तो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, उससे लेट नहीं कर सकते हो. तो या फिर आप ये ले सकते हो डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ कंसिडरेशन ले सकते हो. दोनों में से एक आपका चॉइस है. Moral of the story, if you've got the money, you cannot delay or you cannot deny the government taxes. Alright. How is the date of receipt of consideration by the supplier determined? Guys, supplier मतलब FCM. One second. Guys, supplier मतलब FCM. I'm unable to write for some reason. One second. Just one second, guys.
All right, guys. Supplier. Oh my God, I can't write. One second. All right, I'm just going to read up from the book. 11th question is what I am. Date of receipt of consideration by the supplier. मतलब सप्लायर के इसलिए कंसिडरेशन कैसे देखेंगे, या फिर उसकी बुक्स में या फिर बैंक अकाउंट में, whichever is earlier. It's either entered in the books of accounts or the payment entered in the bank account, whichever is earlier. Answer is C. What is the time of supply of service in case of reverse charge mechanism? Guys, supply of service है तो section 13, reverse charge है section 13(3). उसमें क्या होता है, recipient paying in 31 entirely, नहीं नहीं नहीं, वो तो goods के लिए, तो recipient हटा दो, paying in 61 entirely, तो date of payment from whose perspective, from recipient's perspective, invoice से 61st day, entirely is the books of entry में जो की है books में वो देखेंगे. All right, guys. ये एक छोटी सी चीज है, ऐड कर सकते हैं. Now I'll just discuss this and I'll add it. Guys, you've taken some services from an associate enterprise. Just adding this one last thing. You've taken some service. So let's say you are here. You are, I'll put some foreign company here. Let's say you are Nike India, and you've taken some services from your associate enterprise, Nike USA. What's an associate enterprise? It's too early for you all to understand this, but associate enterprise is someone who controls you or who's associated to you. You've taken some services, and this is abroad, this is India. All right. This is subject to RCM. This is subject to RCM. Now it's service to section 13 and it's RCM to section 13(3). Screen is frozen, just 1 second. Tushar, is the screen visible now? Guys, let me know if the screen is visible now. फोन पे बात हो गई? Okay, bye. All right, guys. I hope the screen is visible now. Let me know if the screen is visible, guys. Yes, I will repeat it. Guys, I'm Nike. I'm in India. I've received some services from Nike USA. Any services that is received from abroad, guys, बाहर से अगर कोई सर्विस आती है तो वो RCM में चार्ज होती है. बाहर से कोई सर्विस आती है तो वो RCM में टैग होती है. All right. Now, this is service. So time of supply is discussed under section 13. RCM में है, so section 13(3). Section 13(3) says paying in 61 entirely. Guys, I hope you remember this. Paying in 61 entirely. But guys, payment is okay. Entry is okay. But invoice, ignore. Because between associate enterprise, invoice generally issue नहीं करते. Invoice generally issue ही नहीं करते हैं. Guys, if you borrow money from your father or if you take help from your cousin, will he issue you an invoice? नहीं बोलेगा जब पैसा देना है देना. If you go tomorrow and you take some service from a friend of yours, from an associate enterprise, invoice को ignore करना है. That's all you need to know about this section. अगर you are dealing with an associate enterprise, क्या है? सर्विस है, RCM में होता है. एंड एसोसिएट एंटरप्राइज हैज टू बी अब्रॉड, हैज टू बी अब्रॉड. इंडिया वाला नहीं चलेगा. इंडिया वाले में इनवॉइस देखेंगे. अगर इंडिया से बाहर एसोसिएट एंटरप्राइज है, उससे आप कोई सर्विस ले रहे हो और वो RCM में चार्ज हो रहा है, then it's receive paying in 61 entirely. But because associate enterprise invoice क्यों दोगे एक दूसरे को? You will straight away make the payment. So invoice cut.
इग्नोर करना है, इनवॉइस को इग्नोर करना है. That's what this thing talks about. Looking at the sum and the solution. 1 second. 13th question. What is the time of supply in case of associate enterprise receives services from service provider located outside India? So date of entry, yes. Date of payment, yes. Invoice, no. Earlier of these two. We will not check invoice in this case. All right. And date of entry in the recipient's book. From the recipient's perspective, we'll see this. Supplier voucher identifiable है, तो date of issue of voucher ये तो बहुत simple है. ये repeat है actually. Let's do this last one sum. Let's do this one last. Value of service received rendered is 1 lakh. Guys, very good sum. This is the supplier. This is the recipient. Supplier has supplied services worth 1 lakh rupees. Date of, okay, the service at the moment there is service, time of supply is under section 13. And कुछ नहीं दिया है, तो I will consider FCM. FCM मतलब 13(2). Either invoice, if it's issued on time, invoice or payment, whichever is early. अगर invoice late है तो ignore the invoice, provision or payment, whichever is early. Okay. Date of issue of invoice is 5th October. Guys, invoice issue किया है 5th October को. Advance received is of 25,000 on 20th September. So I'm writing payment. एक पेमेंट आ गई है कितने की? 25,000 की. कब आ गई है? 20th September को. इन्होंने एडवांस बोला है, बट मैं एडवांस लिख ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ पेमेंट लिख रहा हूं. बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड ऑन 7th October. वापस सेकंड पेमेंट. बैलेंस मतलब 75,000, क्योंकि 1 लाख की सर्विस थी. और ये कब आई है? ये आई है 7th October को. ओके. What is the time of supply for this 1 lakh? All right. गाइस, यहां पर कुछ बोला नहीं है कि सर्विस कब प्रोवाइड कर रखी है. प्रोविजन ऑफ सर्विस बोला ही नहीं गया है. तो we'll assume this invoice is issued on time. There's a small assumption here that invoice is issued on time. तो अगर invoice is issued on time, then invoice or payment, whichever is earlier. Invoice का डेट है 5th October. पेमेंट दो है. पेमेंट दो है. 25,000 के लिए 20th September एंड 75,000 के लिए 7th October. तो दो पेमेंट्स है, तो दो टाइम ऑफ सप्लाई आ सकती है. लेट्स सी. For 25,000, it's either 20th September or 5th October, whichever is early. So ये वाली time of supply is 20th September. And for 75,000, it's 7th October or 5th October, whichever is earlier. So 5th October is for 75,000. So answer is 5th October for 75,000 and 20th September for 25,000. If you do it systematically, you'll never ever go wrong. If you do it systematically, you'll never ever go wrong. Write these acronyms down. They're also there in the notes that I've shared with you. All right. That is the end of time of supply. The next chapter we look at, guys, the next chapter that we look at is a very, very nice but a very scoring chapter, which is called returns. Very scoring chapter called returns. When we come back, it's a very small chapter. We'll come back in about, we take a good break now because I think we've been here for a very long period of time. People who are attending rigorously, I appreciate. You can take a 10-minute break. Guys, take a 10-minute break. It's 4:30. I'll see you guys at about 4:40, 4:45. And then we look at returns, which are a very important chapter. And there are shortcuts there as well. Even in returns, there are shortcuts. I will see you guys in 10 minutes from now.
All right, guys, I'm back. I'm back. I hope you guys are okay. Let's look at a new chapter, guys. New chapter, new enthusiasm. Let's do this really, really well. Trust me, this is going to be very helpful to you. All these small shortcuts are going to be really helpful to you. So if you're here, let's begin with the next chapter. Guys, the next chapter, I had told you the next chapter would be returns, but because we did so much of invoices right now, we can actually finish invoices very, very fast. So let's try and do this chapter really, really fast. Guys, very important. Again, there are only 10 chapters, so each chapter has importance in the exam. This one, you've almost done it halfway. Let's complete it entirely and let's move ahead. What is invoice? There is a supplier here. Guys, this is the first case. There is a supplier here. You're the recipient. Everyone, I hope I'm visible. I hope I'm audible. I'm not visible though, but I hope I'm audible. This is a supplier and this is the recipient, and they are supplying to you either goods or services. Remember, we're doing GST. In GST, if you are registered and if they are registered, you will want to take ITC, but you can take ITC only when you have a tax paying document. We're talking about those documents right now. Guys, we're talking about those documents right now. So this supplier, while he's supplying you goods and services, he will also issue an invoice to you. He will also issue an invoice to you. So let's say you're buying 100 air conditioners, each at the rate of 10,000. So that's basically 10 lakh worth of ACs. ACs are chargeable, let's say at GST of 12%. So 1,20,000 of GST. So this is your invoice basically. You're buying ACs. What is the quantity? 100. What is the value per AC? 10,000. What is the GST rate? 12%. So 1,20,000. So 11,20,000 is what is the invoice value. Do you need to pay today? No, no, no. You don't need to pay today. You can take an ITC credit even if you don't pay today, but ensure that you pay within 180 days. Otherwise, you know what can happen. All right. Guys, this is an invoice which is given by the supplier to the recipient. We're looking at invoice. First thing we discussed is the invoice. Second scenario, I'll write it here only. First thing that we discussed was invoice. Can I call this a tax invoice? Yes, because tax is being collected using this invoice. This invoice has tax written on it. All right. Does this GST tell us how to make this invoice? No, the format is not prescribed. You can choose your format. You can have it electronic, you can have it manual. That depends upon you how you want to issue invoices. But there are some things which are necessary. The supplier ka details are necessary, like the name of the supplier, the GST number. What if he doesn't have a GST number? Then he can't raise a tax invoice. Guys, only registered persons can raise tax invoice, and that's the reason yesterday when I bought chocolates or ice cream or cigarette etc. from that small shop, he didn't charge me because he was not registered. Then it should have the address, and besides that, it should have other details like what did I buy, ACs. It should have the quantity, it should have the price, and it should not just have the GST rate but also have the GST amount, and it should also have a split of, I'm putting it here, what else you'll need on this invoice. It should also have a split between CGST, SGST, IGST. It should also have place of supply, whom is it supplying to, where is it being supplied to. If it's a different state, you'll need to know from place of supply. The recipient's details they'll want. The recipient, if the recipient has a GST number, then the recipient's GST number will be quoted, and other details of the GST of the recipient will be quoted. Guys, all these details need to be given in an invoice. There is no format for this invoice. You can choose your format. You like your favorite font, put your favorite font. No problem at all. Besides this, they have something called HSN code, harmonized system of nomenclature. If the person who's supplying to you, his turnover is up to 1.5 crore, then no HSN required. If it's from 1.5 crore up to 5 crore, then a 2-digit HSN is required. And if it's above 5 crore,
then a 4-digit HSN is required. Sometimes ICI can get really surprising and ask such questions also. So HSN code is required. Yes, it's required. If your turnover is up to 1.5 crore, not required. If it's between 1.5 crore to 5 crore, then 2-digit HSN is required. And if it's above 5 crore, then 4-digit HSN code is required. All right, this is an invoice. This is an invoice. It's called a tax invoice. Next, I'm a supplier, but I've chosen the option of section 10(1) composition scheme or section 10(2)(a) for small service providers. I've chosen that composition scheme or that scheme. So in that case, my recipient, he will get the goods or the service, but he will not get an invoice. He'll get a bill of supply. So when I'm either under composition scheme, because I can't charge tax, guys, I can't charge tax. Tax मेरे जेब से जाना चाहिए. Because I can't charge tax, it's called bill of supply. There is no tax word. There is no invoice word. Also, instead of composition scheme, if I was under exempt goods, if I was selling exempt goods, or if I was selling non-taxable goods, then again, यहाँ पर bill of supply आएगा. All right. This is bill of supply. But what if I'm in the third scenario? What if I'm in the third scenario whereby I'm the supplier and I'm supplying exempt goods also and I'm supplying taxable goods also? Then what will I issue? And this is the recipient. What will I issue? I will issue something called an invoice cum bill of supply. It's a mixture of both. It's invoice also and it's bill of supply also. So it's invoice cum bill of supply. All right. This is when you supply taxable as well as exempt. Then you'll have, which is the third thing that we discussed, that is invoice cum bill of supply. Next. Fourth, I'm the supplier, you are the recipient. I'm supplying you ACs, remember 100 ACs, for which you paid me an advance payment. I have not supplied it to you yet, but you made me an advance payment. The ACs were for 10 lakhs, but you paid me 1 lakh rupees advance payment. Now for this advance payment also, I'll have to give you some document. For this advance payment, I'll have to give you some document, and that document will be called receipt voucher. I have received your money and this is the receipt voucher. Receipt voucher mein, will they have GST? Will they have which state it's going to? Guys, if nothing is mentioned, it will always be assumed that this is interstate. And if there's no GST, if you don't know whether it's AC or mobile phone or television, then you will always take GST of 18%. You will put GST of 18% and it will be assumed to be interstate supply. Next. This is the fourth scenario. Yeah, we'll put the fifth scenario. I'm the supplier, you're the recipient. I was supposed to supply you goods. I have not supplied you goods or services yet. And you had paid me advance. Remember, 1 lakh rupees, for which I had given you a receipt voucher. But now, guys, either you have cancelled your mind or you have changed your mind and you cancel this order, or I have told you that listen, I cannot supply it to you. For some reason, this supply does not happen. Then what do I give you? I give you a refund voucher. So till now, whatever we've seen, who's giving this document? Till now, only the supplier, he is supplying the invoice. The supplier is supplying bill of supply. Invoice come bill of supply is also supplier only is giving. The receipt voucher also supplier is giving. The refund voucher also supplier is giving. So everything right till night now is given by the supplier. Let's see two more. Sixth one. I'm the supplier. You're the recipient. And I've already supplied you ACs. How many ACs? 100 ACs.
At what price? 10,000. Total was 10 lakh. GST rate 1 lakh 20,000, 12%. So 11 lakh 20. This was the invoice already given to you. But then I called you up. Hey, are you there? Listen to me. So you said, Q, Q, are you troubling me? Wapas. So you said, listen, I put only 100 ACs, but I supplied you more. So either the quantity is less, or I applied only 12% rate and ACs is 18%. So either tax is less, or I charge you only 10,000 per AC. It should be 15,000, or the value is less. One of these three things is less. Why are you troubling me again? Q, are you troubling me wapas? Because the value is less. So what to do? What to do? Forget the money. No, no, you can't forget the money like that. I will issue you a debit. I will issue you a debit note. The debit note will also have similar details. AC, my details, your details, HSN code, all those details debit note में भी होंगे. Don't worry, debit note में क्या होगा? Debit note में या फिर quantity increase हो जाएगी because पहले कम थी, या tax rate increase हो जाएगी because पहले कम थी, या value increase हो जाएगी because पहले कम थी. मतलब debit note will increase the value overall of the invoice, and hence the GST will also increase, and hence the ITC will also increase. All right. This debit note will have one extra thing. It will have reference to the invoice. जो इनवॉइस के आप लिंक कर रहे हो उस इनवॉइस का रेफरेंस होगा. एंड रिमेंबर दिस डेबिट नोट का एक्सपायरी विल आल्सो एक्सपायर विद दिस इनवॉइस. मतलब अगर इनवॉइस इशू किया था 29 सितंबर आज, और डेबिट नोट इशू किया है 30 अप्रैल नेक्स्ट ईयर, तो भी आपको 2021 का नहीं मिलेगा. आपको एक्सपायरी सेम इनवॉइस का, बिकॉज लिंक टू द इनवॉइस एक्सपायरी इज द कॉमन एक्सपायरी. ऑलराइट. Same way, guys, debit note is also issued by the supplier only. अभी तक जो भी documents है, all issued by the supplier. Same way, I'm just going to remove something so I can write, because otherwise it's going to hang up. 1 second. Till now, all the documents that we've seen are all issued by the supplier. All right. Perfect. Guys, instead of debit note, if they find that the quantity, tax or value जो डाला है invoice में वो ज़्यादा है, then they will issue a credit note. It's the opposite of a debit note. Credit note, when the quantity, let's say they supplied to you only 90 ACs, but they wrote 100, or they put a tax of 12% when it should be only 5, or when they put the value of 10,000 when it should be only 8,000, they put a higher value, so they'll reduce now the value of the invoice. Sometimes it also happens that you didn't like the ACs. You didn't like the ACs, so you said, listen, take the ACs back, or take 50 ACs back. So if you return the goods also, he will issue you a credit note. Guys, remember, when you go to a shop, you buy something and you don't like it and you give it back, he gives you a credit note. Same way here also there's a credit note. Credit note will reduce the value of the invoice. So it will reduce the GST, so it will reduce your ITC also. Alright. Credit note is also linked to an invoice, and hence credit note ka expiry will also end when the invoice ka expiry ends. Instead of issuing debit note, can they issue a tax invoice so they get a new time period of 180 days? Hitvi, it's a very good suggestion. I wish people like you were there in the department, but unfortunately, it's not like this. So the debit note and credit note, you cannot issue a new tax invoice. You have to issue a debit note and credit note. But practically, a lot of people issue a new tax invoice so that they get additional 180 days. Practically, they do that. Good thinking. But technically, you can't touch an invoice which has already been issued because the details of the invoice have already been uploaded. Hence, you now associate it with a debit note or a credit note. All right. Let me know if that is clear. All right, guys, now comes the only document which is issued. Now comes the only document which the recipient will issue. Surprising, recipient भी issue करता है एक document, is the next document. Please be with me. Next document. This is the lawyer, and this is Vijay Sales.
provided legal services of how much? 10 lakh rupees. Now, whose responsibility is to pay tax? ये RCM में cover होता है. So the Vijay Sales has to pay tax to the government, and because of that, कितना tax होगा? Guys, let's say इस पे 1,80,000 tax है. So Vijay Sales, depending on the time of supply, will pay to the government 1,80,000, and it will issue a payment voucher. Guys, first time the recipient is issuing a document which is called a payment voucher. Okay, listen, lawyer, don't worry. I have calculated the tax and paid to the government. You don't have to pay. Anyways, the lawyer was not paying, but this payment voucher is a document which is issued by the recipient. All right. Next. इस केस में इनवॉइस कौन इशू करेगा? गाइस, इनवॉइस भी सप्लायर इशू करेगा. सॉरी, इनवॉइस भी ये इशू करेगा, बिकॉज लॉयर तो रजिस्टर्ड ही नहीं है. Guys, 1 second, my word document is hanging up a little. All right, guys, the lawyer is not registered, and hence Vijay Sales will issue the receipt payment voucher also कि मैंने पे कर दिया है गवर्नमेंट को 1,80,000, and invoice भी यही इशू करेगा. So please remember, the only time when the recipient issues documents are in reverse charge. I'll just add one more thing. Burden भी इसके सिर पे, headache भी इसके सिर पे, और invoicing भी इसी के सिर पे. All the things are on the recipient in case of reverse charge. You saw the beauty of reverse charge. Everything is passed on to the recipient. All right. These are some of the invoices that are to be issued. Let's see what else is there. 1 minute. Guys, just 1 second. Guys, just a minute. My Word document is acting up. I'm just going to be back in a second. All right, and I'm back, and let's look at it from this notes here. Guys, invoice is given in section 31. Invoice is needed for input tax credit. Otherwise, मैं कैसे लूँगा? One of the condition of input tax credit is I should have a tax paying document. No format prescribed. In case of goods, invoice is given under section 31, 1, 4, and 7. Remember goods के लिए 147. 31(1) says इनवॉइस भेज दो भैया, रिमूवल या डिलीवरी से पहले या उस दिन तक आप इनवॉइस भेज दो. इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई, बिफोर ईच स्टेटमेंट और बिफोर ईच सक्सेसिव पेमेंट इनवॉइस भेज दो. और सेल ऑफ अप्रूवल हुआ है तो जब अप्रूवल हुआ है या मैक्सिमम 6 मंथ्स ऑफ रिमूवल में इनवॉइस भेज दो. ये ड्यू डेट्स है इनवॉइस की अंडर सेक्शन 31. नेक्स्ट, फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सॉरी फॉर इनवॉइस फॉर सर्विसेज, द ड्यू डेट इज गिवन अंडर 256. सर्विस के लिए 256 है, गुड्स के लिए 147. सेक्शन 31(2) says within 30 days इनवॉइस, अगर जब आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस हुआ है तो 30 डेज में तो इनवॉइस भेज दो, और 45 डेज है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, बैंक्स के लिए.
31(5) says कंटिन्यूस सप्लाई है, तो अगर ड्यू डेट मेंशन है तो तब तक, या इवेंट कंप्लीशन डेट मेंशन है तो तब तक, या फिर जब पेमेंट हुआ है तब तक तो इनवॉइस भेज दो। एंड लास्ट अगर सेसेशन और सर्विस हो रहा है तो जिस दिन सेसेशन हुआ है उस दिन या उससे पहले इनवॉइस भेज दो। डिटेल्स क्या क्या चाहिए इनवॉइस में गाइस, ऑल दीज आर डिटेल्स। इसमें मेनली वो HSN कोड है, वो नहीं चाहिए होता है अप टू सर्टेन टर्नओवर, अप टू 5 करोड़ 2 डिजिट्स का चाहिए, और मोर देन 5 करोड़ है तो 4 डिजिट का HSN कोड चाहिए। HSN कोड हेल्प्स यू आइडेंटिफाई गुड्स, एंड उसी का सिमिलरली सर्विस के लिए होता है SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड। ऑलराइट, सर्विस के बाद क्या बनोगे, अकाउंटेंट बनोगे, सॉरी अकाउंटेंट के बाद क्या बनोगे, सर्विस बनोगे, सो सर्विस अकाउंटिंग कोड। रिवाइज टैक्स इनवॉइस करेंगे डिस्कस इन 2 मिनट्स फ्रॉम नाउ। ये और ये बाकी है। बिल ऑफ सप्लाई समझ गए, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है वर्सेस टैक्स इनवॉइस। जब आपको टैक्स चार्ज नहीं करना है तो बिल ऑफ सप्लाई, जो टैक्स चार्ज करना है आप जब रजिस्टर्ड हो टैक्स चार्ज कर सकते हो तो टैक्स इनवॉइस। रिसीव वाउचर, जब कोई एडवांस लेता है तो रिसीव वाउचर देता है आपको, जब कोई वो एडवांस का रिफंड कर लेता है तो रिफंड वाउचर देता है। ये गाइस इज द ओनली थिंग व्हिच रेसिपिएंट गिव्स इज अ पेमेंट वाउचर व्हेन ऑन RCM दे मेक द पेमेंट टू द गवर्नमेंट। ऑलराइट, ये ये डिस्कस करेंगे, एक्सेप्शन टू डिटेल्स बाकी है वो डिस्कस करेंगे। जो भी अभी डिस्कस किया वो देख लेते हैं। डेबिट नोट क्रेडिट नोट, क्यू ट्रबलिंग वापस, उसके लिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट आएगा, वो अपन ने देख लिया है, उसकी एक्सपायरी भी देख ली है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स देख लिए हमने। ई वे बिल है वो आगे आएगा, बट लेट्स लुक एट रिवाइज टैक्स इनवॉइस, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, ऑन द 1st of November I had a shoe shop, by the way I had a shoe shop, and I did not get myself registered. Why? Because मेरा turnover ही नहीं पहुंचा था 40 lakhs. Remember, turnover for shoe for only goods is 40 lakhs. No मगजमारी for tax, उसमें 10 lakhs होता है। PUT ASM पुदुचेरी उत्तराखंड तेलंगाना सिक्किम अरुणाचल प्रदेश मेघालय उसमें 20 lakhs है, और बाकी के स्टेट में भी 20 lakhs है, बट सिर्फ गुड्स हुआ तो 40 lakhs है बाकी के रेस्ट ऑफ इंडिया में। तो I was selling shoes and I was not registered. Why? Because मेरा turnover पहुंचा ही नहीं था 40 lakhs. But 1st of November को I reached 40 lakhs. So now I have to compulsorily get registered under section 22 because I've reached that turnover. So within 30 days, I need to make an application. So on the 20th of November, I made an application. Remember application 377. Alright. And application करने के बाद मुझे 5th December को, so let's say application करने के 3 दिन में मिल जाता है, so let's say 23rd November को मुझे registration हो गई, मिल गई, great, congratulations, now I'm registered. But guys, from the 1st of November to 23rd of November, ये जो पीरियड है फ्रॉम द 1st of November to 23rd November, इस पीरियड में मैंने शूज बेचे होंगे, सो मैंने इनवॉइस भी इशू किया होगा। बिकॉज 1st of November, what is my effective date? 1st of November. If you apply within 30 days, then the effective date will be 1st of November when you were supposed to liable. The event happened on 1st of November. So my effective date, I'm just writing here, my effective date is 1st of November. So from 1st of November to 23rd, जो भी मैंने सेल्स की है उस पे I have to issue invoice. But can I charge tax? No, I cannot charge tax because my registration हुआ ही नहीं मेरा अभी तक. On the 1st of November, are you registered? No. If you're not registered, how can you can issue an invoice, but that is not a tax invoice. So you cannot charge tax. Okay, तो तुम शूज बेचोगे, शूज बेचते रहोगे, इनवॉइस निकालते रहोगे, बट जब 23rd को आपके पास रजिस्ट्रेशन आ गई, then what you will do is in the next 30 days, that means till 22nd of October, in the next 30 days from 23rd November to 22nd October, in the next 30 days from the date you got the registration, you have to issue revised invoice. और वो रिवाइज इनवॉइस में क्या करोगे आप, जिसको भी आपने इनवॉइस दिया है अभी आप रिवाइज करके दोगे इनवॉइस, एंड उसमें आप टैक्स कैलकुलेट करके चार्ज करोगे। बट क्या एक एक जन को अलग अलग इनवॉइस दूंगा? डिपेंड्स, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है, अगर सामने वाला whoever is buying the shoes from me, is he registered, then I'll have to give individual invoice. But if he is not registered,
then he is not claiming ITC, then I can give consolidated invoice. Again, I repeat that. Intervening period from 1st November to 23rd November is an intervening period. उस टाइम मैंने शूज बेचे, हाँ बेचे, उसमें इनवॉइस मैंने इशू किया, ऑफकोर्स किया होगा. एवरीवन हु कम्स टू बाय शूज विल वांट एन इनवॉइस, बट कैन आई टैक्स? नो, आई कांट ऐड जीएसटी बिकॉज आई एम नॉट रजिस्टर्ड टिल 23rd. But the day I get registration, I'll have to revise these invoices. जो भी invoice 1st और 23rd के बीच में, I have to revise them, and I have to add tax to it and collect tax and pay to the government because now I'm registered from 1st November. इसको बोलते हैं revised tax invoice. क्या वो revised tax invoice एक एक जूते का अलग अलग करना पड़ेगा? No. If the person who's bought the shoes are unregistered, then वो लोग ITC वैसे भी claim नहीं करेंगे, तो उनको एक एक invoice अलग अलग मत दो. बट अगर वो रजिस्टर्ड है, अगर उनको रजिस्टर्ड है और उनको आईटीसी क्लेम करना है, देन अलग अलग दो. तो यू कैन हैव कंसोलिडेटेड इनवॉइस. बट गाइस, अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हो, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो एंड आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मोर देन 2.5 lakhs, तो आप कंसोलिडेट नहीं कर सकते. तो कंसोलिडेट कौन से दो केस में नहीं कर सकते हो? एक, या फिर आपका बायर रजिस्टर्ड है तो आईटीसी लेगा. आपका बायर रजिस्टर्ड है तो आईटीसी लेगा. 1 second. Priyanka, I'm just looking at your question. Sorry, I missed that. Can you please explain credit note once again? Simran, I missed your question. I'm so sorry. All right. In RCM, the invoice is issued on the receipt of goods and service, and payment voucher is issued on payment, right? Or they're issued simultaneously. The invoice is issued immediately. Payment voucher, they can be issued differently also. No problem. They can be issued differently also. All right. Okay, coming back to revised invoice. Guys, revised invoice आप revise कर सकते हो between 1 to 23rd November. आप revise कर सकते हो. Revise का invoice का intention is to charge tax. Revise consolidate भी कर सकते हो, but two cases में you cannot consolidate. One is if your recipients are tax registered, मतलब वो लोग ITC claim करेंगे तो आप consolidate नहीं कर सकते हो, आपको individual invoice issue करना पड़ेगा. And second, अगर आप interstate कर रहे हो and interstate sales is more than 2.5 lakhs, तो आप consolidate नहीं कर सकते हो, तो आपको individual invoice. Yes, it's a big headache. It's a big headache, but you have to do that headache. You have to do that headache. Otherwise guys, आप business चालू करने से पहले registration ले लो, तो आपको ये headache नहीं करना पड़ेगा. And last thing that we do in this, before we start reading again. All right, guys, you know, everyone in every area, in all your areas, you have some general stores. You have some general stores. Now, you know, I am very confident that in my area, the general store is definitely selling goods more than 40 lakhs. He is definitely registered. But whenever I go to buy bread, I go to buy some, you know, some groceries, he doesn't issue a tax invoice to me. Whenever I go buy chocolate from him, or wherever I go buy ice cream from him, or whenever I go buy a packet of bread from him, he doesn't issue a tax invoice to me. Why is that? Because एक law में permission है कि for low value items, मतलब अगर item का value 200 rupees तक है, अगर bread का packet लिया 30 bucks, 40 bucks, if you buy ice cream which is 100 bucks, then ये small value items होते हैं, उसके लिए tax invoice अलग अलग मत issue करो. You are wasting a lot of paper. So what you do at the end of the day, एक invoice issue कर लो. Because anyways वो आइसक्रीम, वो ब्रेड, उस सब में जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो आपने कलेक्ट तो पेमेंट कर लिया है. Guys, when you pay 100 rupees for an ice cream, उसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है. तो hence for these low value items, don't issue individual invoices. एक consolidated invoice issue करो at the end of the day and keep it with yourself only. Keep it with yourself only. Don't worry, keep it with yourself. But guys, let's say in my office there was a party. In my office we were celebrating a birthday and there was a party, and we wanted to get food, or we wanted to get biscuits and chocolates and ice cream worth 5,000 rupees. So my office wanted to buy this, and my office is registered. So my office will want to claim ITC if they can claim. Or even if I can't claim ITC, I am registered, so I want a bill, then in that case you have to issue a bill to me.
But generally food and beverage पे आप you cannot take ITC, it's blocked. But even in that case, if it's registered, a registered person comes to you to take it, then you'll have to give an invoice. So again, repeating, for low value items up to 200 rupees, you don't have to issue individual tax invoice. Then what? Then issue a consolidated one at the end of every day. All right. But सामने वाला अगर registered है और उसको चाहिए tax invoice, तो then you have to issue a tax invoice. 1 second. Rakesh, just looking at your point. Which point are you talking about? Rakesh, what 5,000 cut point are you talking about? Can you just tell me again once? Alright, I'll wait. I think वो आपके लिए अभी तक अप्लाई है. Yes, abolish हो गया है. आपके लिए ये वाला पॉइंट है for consolidated invoices up to 200. Yes, वो abolish हो गया है. एक बार चेक कर लेना, बट आई थिंक वो अबॉलिश हो गया है आपके लिए. आई एम जस्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड बिटवीन योर बैच एंड द अदर वन. सो ये लिमिट एक बार आप भी कंफर्म कर लेना, मैं भी कंफर्म कर लूंगा. ऑलराइट गाइस, लो वैल्यू टैक्स इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस यहाँ पर है, बिल ऑफ सप्लाई. एंड लेट्स गो टू समथिंग कॉल्ड CKD और सप्लाइंग इन लॉट्स. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट गाइस. आप लॉट्स में सप्लाई कर रहे हो, आप सप्लायर हो, किसी ने ऑर्डर दिया 100 एसीज का. अगर 100 एसीज एक साथ सप्लाई तो कर नहीं पाओगे, तो आप लॉट्स में सप्लाई करोगे. फर्स्ट लॉट, सेकंड लॉट, थर्ड लॉट, 3 लॉट्स में सप्लाई कर रहे हो. ये लॉट 1, ये लॉट 2 एंड ये लॉट 3. तो आप इनवॉइस कब इशू करोगे गाइस? इनवॉइस आप लॉट 1 के साथ ही इशू कर दोगे, लॉट 2 के साथ एंड लॉट 3 जो फाइनल लॉट है उसके साथ आप ओरिजिनल इनवॉइस उनको दे दोगे. ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. When you are supplying in 3 lots, आप इनवॉइस कब इशू करोगे? इनवॉइस इशू करोगे फर्स्ट लॉट के टाइम, एंड उसको जब फाइनल लॉट दोगे तब आपको ओरिजिनल इनवॉइस दे दोगे. ओरिजिनल इनवॉइस ऑलवेज बिलोंग्स टू द रेसिपिएंट गाइस. कस्टमर इज किंग, यू हर्ड इट राइट गाइस. कस्टमर इज किंग. तो ओरिजिनल इनवॉइस हमेशा कस्टमर के पास जाएगा, रेसिपिएंट के पास जाएगा. ऑलराइट. इन केस ऑफ गुड्स, यू इशू इनवॉइस इन ट्रिप्लिकेट. ट्रिप्लिकेट किसके लिए? एक कॉपी सप्लायर रखता है, एक कॉपी ट्रांसपोर्टर रखता है, और जो ओरिजिनल कॉपी है वो रेसिपिएंट के लिए. हाउ डू यू रिमेंबर इट? रेसिपिएंट इज अ कस्टमर, ही इज द किंग, सो ओरिजिनल कॉपी उसके लिए. बट ये तो गुड्स है. अगर सर्विस है तो डुप्लीकेट, बिकॉज सर्विस में ट्रांसपोर्टर तो होता नहीं है. तो डुप्लीकेट में एक सप्लायर के लिए एंड ओरिजिनल कॉपी इज फॉर द रेसिपिएंट. ऑलराइट. डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स डन. नेक्स्ट लास्ट इज ई-वे बिल. गाइस ई-वे बिल समझ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ई-वे बिल का. ऑलराइट, सो I like these let's say something which is in some other state. Alright, you're calling some goods from Rajasthan. Guys, you're calling some goods from Rajasthan. So the supplier is in Rajasthan and the goods have to go to Karnataka. The order is come from Karnataka. So Rajasthan से Karnataka, the goods have to go. The recipient is in Karnataka. Alright. Now, earlier क्या होता था? Guys, the goods would travel in a truck. The goods would travel in a truck, and they were stopped at many stop posts. हर स्टेट के एंट्री पे एक एंट्री टैक्स लगता था, और वो एंट्री टैक्स लगने के लिए वो ट्रक को स्टॉप करते थे. वो लोग देखते थे कौन सा गुड्स आ रहा है, ऑक्ट्रॉय लगता था, अलग अलग चीजें लगती थी. बट जीएसटी में they introduced an electronic way of ensuring that this movement of goods happens very fast, and they introduced a concept called electronic way bill, e-way bill, which we will call EWB और वे बिल. ये तीनों चीज एक ही चीज है. ई-वे बिल या EWB या वे बिल, ये तीनों चीज एक ही है. ये क्या होता है? सो व्हेन राजस्थान से कर्नाटका जा रहा है ट्रक, गाइस दिस इज द ट्रक, आई विल ट्राई एंड मेक अ ट्रक हियर.
Looks like a bus, but it's a truck. This truck is going from Rajasthan and it's carrying your goods and it's going to Karnataka. You are the supplier. Let's say you are registered. This is Karnataka, the recipient. Let's say he's also registered. And there is a truck company in the middle or transporter in the middle. All right, be with me. Now, now what happens is before before guys the goods are transported in this truck, either you, the supplier, or either a recipient, any of y'all, generally it's a supplier who does that. You will go online to www.ewaybillgst.gov.in. You will log in with the credentials and you will tell the government that listen, I'm transporting these goods to Karnataka. And how will you tell them is you will create an e-way bill. So you will go online. Once you go online, you will fill in the details, the supplier's details, the recipient's details, the goods car details. All these details will come in part A. Plus, there is part B. Part B says which vehicle it is going in, plus who's the transporter, plus what is the number of the vehicle. But guys, sometimes you are unable to fill this part B. So part B is generally filled by the transporter. Part A, you have to fill. Part B is filled by the transporter. But guys, you can delegate the transporter to fill part A also. So that means in a nutshell, can I say that part A and part B both can be filled by the transporter if he's authorized? Or else part A, either you will, as supplier, you will fill, or as a recipient, the recipient will fill. कोई भी online जाके, they can start this e-way bill process. Guys, once you start this e-way bill process, and let's say today, right now, 29 September, you initiated this e-way bill process, you will get a e-way bill number, and you will get an e-way bill, and this e-way bill will go along with the truck, and wherever the truck is stopped they will show the e-way bill, and the e-way bill, based on the e-way bill, they will electronically scan the bill. They will know क्या goods है, क्या transport हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, and hence clearances get very fast. All right, now once you entered this e-way bill, you cannot change it. Guys, you cannot change the e-way bill except the truck number. Why? Because let's say from Rajasthan to Karnataka, it will not go in one truck. From Rajasthan to Maharashtra, it will come in one truck. In Maharashtra, the truck will change. If the truck changes, guys, part B will change. Your transporter or you, whoever, will change part B and will update part B with a new vehicle number. From Maharashtra, it will go to Goa. And again, guys, the truck will change. So again, part B will. So you cannot change the e-way bill except for the number of this truck or the transport car. The truck or the transport vehicle, उसका number change कर सकते हो. Otherwise, you cannot change this e-way bill. Once you make this e-way bill, it will go for approval. It will go for approval to the other party. Example: if you're a supplier and you made the e-way bill, it will go to the receiver for approval, and he has to give an approval within 72 hours or at least before delivery. And अगर approval नहीं मिलता है 72 hours basically means 3 days. If अगर 3 days में approval नहीं मिलता है या delivery से पहले approval नहीं मिलता है, तो assuming that उसने approval दे दिया है. So can you change the e-way bill? No, you can't, but you can update the truck number as many number of times as you want. But you can cancel the e-way bill. अगर कुछ आपने wrong डाल दिया है, तो instead of changing it, you can cancel it. But एक बार truck चालू हो गई है, एक बार movement चालू हो गया, उसके बाद you cannot cancel this e-way bill. Or is this e-way bill compulsory? Because इसमें बहुत सारा headache है. Go online, generate a bill, fill in the details, part A, part B, change the details. Is this compulsory? Yes, it is compulsory for goods worth more than or equal to 50,000.
It is compulsory to have an e-way bill generated if you're transporting goods worth more than or equal to 50,000. But what if it's less than 50,000? अगर less than 50,000 है, अगर less than 50,000 है, तो भी कंपलसरी है दो केस में। और अगर आप कुछ रिपेयर वर्क के लिए गुड्स भेज रहे हो इंटरस्टेट, या आप इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट भेज रहे हो, तो कंपलसरी है। अगेन आई रिपीट गाइस, इज दिस ई-वे बिल कंपलसरी? यस, इफ द गुड्स आर वैल्यू मोर देन 50,000। और वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड करोगे? वैल्यू में सब कुछ इंक्लूड करोगे, टैक्सेस भी इंक्लूड करोगे, क्योंकि दे वांट यू टू फिल अप द ई-वे बिल, एंड हेंस वैल्यू में टैक्सेस भी इंक्लूड करोगे। एंड इफ द वैल्यू इज मोर देन 50,000 रुपीज, देन यू विल हैव टू कंपल्सरी मेक दिस ई-वे बिल। You cannot initiate, guys, penalty लग जाएगी अगर if you initiate transport of these goods without e-way bill. But if the value is less than 50,000, then you don't have to. You don't have to. You can, you may, but you don't have to. But दो केसेस में अगर 50,000 से कम है तभी भी आपको करना पड़ेगा, when you are sending something interstate for repair. मेरे पास एक टेलीस्कोप है, that telescope I'm sending for repair, the value is 30,000, but I'm sending it interstate for repair, then आपको e-way bill generate करना पड़ेगा। And if you are sending handicrafts, तो आपको interstate तभी भी आपको generate करना पड़ेगा, even if the value is less than 50,000. All right, guys, e-way bill अगर आप ट्रक से भेज रहे हो तो भी करना पड़ेगा, अगर आप रेल से भेज रहे हो तो भी। Railways will not hand over the goods unless you give the e-way bill to them. See, railways will not carry the e-way bill with them. ऐसा नहीं कि रेलवे का जो ड्राइवर है, जो ट्रेन चला रहा है, उसका ई-वे बिल्स है बहुत सारे, नहीं नहीं नहीं। बट जब पहुंचेगा, लेट्स से यू आर ट्रांसपोर्टिंग सम गुड्स फ्रॉम राजस्थान टू कर्नाटका इन ट्रेन, तो जब कर्नाटका में जब गुड्स पहुंचेंगे, दे विल नॉट रिलीज द गुड्स अनलेस यू गिव अ ई-वे बिल। फ्लाइट में, एयरक्राफ्ट में ऑल्सो ई-वे बिल लगता है। एंड गाइज नथिंग, आपका खुद का अगर ट्रक हो, इफ योर ओन व्हीकल, ऑल्सो ई-वे बिल लगता है। तो e-way bill is not because only some third party is driving the truck. Even if it's your own truck, even if it's your own vehicle, then also you require e-way bill if the value of the goods is more than 50,000. All right. A couple of more things before we start reading. ये e-way bill, इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है? वैलिडिटी ऑफ e-way bill. वैलिडिटी, कब तक वैलिड है ये e-way bill? All right. Guys, मुझे from Rajasthan to Karnataka पहुंचाना है, and let's say Rajasthan to Karnataka, the kilometers is 2,100 kilometers. For every 100 kilometers, 1 day calculate किया जाएगा. That means every 100 kilometers के लिए the e-way bill will be valid for 1 day. So for 2,100 kilometers, the e-way bill is valid for 21 days. And ये validity कब से चालू होती है? गाइस, ये वैलिडिटी चालू होगी अगर आज आपने ई-वे बिल बनाया तो आज के बाद कल से चालू होगी। सो कल इज द फर्स्ट डे एंड दिस ई-वे बिल विल बी वैलिड फॉर 21 डेज। पर अगर आपका ट्रक खराब हो गया बीच में, या अगर कुछ स्ट्राइक हो गई, या अगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका डिले हो गया, देन यू कैन गेट दिस पीरियड एक्सटेंडेड। बट प्लीज रिमेंबर गाइस, दिस पीरियड इज 1 डे फॉर एवरी 100 किलोमीटर्स। बट गाइस, ये आप ट्रांसपोर्ट क्या कर रहे हो? लेट्स से यू आर ट्रांसपोर्टिंग मार्बल, तो ठीक है, स्मॉल पीसेस ऑफ मार्बल यू आर ट्रांसपोर्टिंग, नो प्रॉब्लम। बट व्हाट इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग ह्यूज कार्स? Hyundai is transporting, Hyundai की फैक्ट्री राजस्थान में, तो Hyundai is transporting cars from Rajasthan to Karnataka, so then they are called heavy goods, and in those cases the period is 20 kilometers के लिए 1 day, because guys these heavy goods go very slowly, so hence every 20 kilometers you get validity of 1 day, and that's how the e-way bill validity will be calculated. इसका एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, validity will always start after the e-way bill is generated, उसके next दिन से। so आज अगर e-way bill generate किया तो period calculate कब से चालू होगा? next दिन से, कल से चालू होगा। all right, what else is there in e-way bill? what is the need for e-way bill? what are the benefits of e-way bill? it's compulsory when the consignment is more than 50k. consignment value includes taxes but shall not include exempt goods. of course exempt goods included नहीं होते। okay, let's say what if this guy was unregistered? Guys, if the Rajasthan guy was unregistered and you were registered, you were in Karnataka and you were registered, then you will have
to initiate this e-way bill. जो भी registered है वो e-way bill initiate करेगा. He will be considered as the guy who is initiating this transport. All right. E-way bill required even if the value is less than 50k when in two cases, when it's sent for a job work interstate or when handicrafts are sent interstate. Intrastate में नहीं लगेगा, interstate में लगेगा. When it's less than 50k, even then आपको करना पड़ेगा in these two cases. E-way bill in case of bill to ship model. Bill to ship model मतलब I am here and the manufacturer is here. I have placed an order with him, but the goods are going directly to some other person, third party. This is bill to ship model. यहाँ पे एक ही e-way bill जाएगा from this place to this place, एक ही e-way bill बनेगा, which is very logical. All right, part A, you have to fill. You are either supplier or the recipient, you have to fill. But if you don't want to fill, you can even give the transporter the authorization to fill. Part B, generally transporter ही भरेगा because part B में ट्रक का डिटेल्स है. Alright. But guys, अगर आप 50 किलोमीटर तक ही भेज रहे हो, आप अगर 50 किलोमीटर तक ही भेज रहे हो, let's say you're in Juhu and the truck is coming from Santa Cruz, or you're in Matunga and the truck is coming from Dadar, then अगर 50 किलोमीटर तक है तो part B fill नहीं करना पड़ेगा, only part A fill करना पड़ेगा. और एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में, मतलब एक ट्रक से दूसरे ट्रक में जब जाता है तो पार्ट भी अपडेट करना पड़ेगा. आई टोल्ड यू ट्रक का नंबर चेंज हो जाएगा. रेलवेज विल नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस यू गिव देम द ई-वे बिल. ई-वे बिल इज ओनली ऑन योर ओन व्हीकल में भी ई-वे बिल चाहिए होता है. कंसोलिडेटेड ई-वे बिल डिस्कस करेंगे इन 2 मिनट्स. कैंसिलेशन कर सकते हो ई-वे बिल का, यस 24 आवर्स में कैंसिल कर सकते हो. गाइस चेंज नहीं कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो. वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल 100 kilometers for every 1 day. But अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है, ओवर डायमेंशनल कार्गो मींस ओडीसी is basically big cargo, then 20 kilometers per 1 day. Period shall be counted from the next day. Validity can be extended. The other party has to accept. 1 second. Pritish, can we get both the recorded lectures yesterday and today's? Pritish, it takes time for me to record it and store it. So let's discuss that in some time, please. Give me 5 more minutes and we'll discuss. Let's finish this chapter first. Guys, 72 hours में confirmation देना पड़ेगा. E-way bill is not state wise, guys. Registration is state wise. Remember, आपको हर एक स्टेट में रजिस्टर अलग करना पड़ता है. बट E-way bill ऐसा नहीं है, आपको एक ही E-way bill लगेगा even if it's crossing 5 states. E-way bill cannot be modified, cancelled. It can be only updated with the vehicle details. And which E-way bills, in which cases E-way bills are not required? Guys, इसके लिए एक short form है. But first, I'll tell you the short form. But first, voice is breaking. Don't worry. I'll give you the recording also, Pritesh. Don't worry. But let me just finish this chapter, please. All right. Guys, be with me. एक ट्रक है और ट्रक में बहुत सारा सामान है. ट्रक में it's a big truck and there is lots of सामान in this truck. Lots of different consignments in this truck. So you can make a consolidated e-way bill. Consolidated e-way bill का नंबर है EWB02 and अगर सिंगल e-way bill होता है उसका नंबर है EWB01. What is this consolidated e-way bill? Consolidated e-way bill basically means अगर मेरे पास इस ट्रक के अंदर 1000 अलग अलग प्रोडक्ट्स है तो I can have a consolidated e-way bill of all of them together. Just 1 second. All right. So consolidated e-way bill basically is like a trip sheet. It's like a trip sheet. It's just a summary of all e-way bills and उसका खुद का validity कुछ नहीं होता है. हर individual
अगर इस ईवे बिल में, अगर इस कंसोलिडेटेड ईवे बिल में लेट्स से 3 कंसाइनमेंट है, एक जा रहा है 210 किलोमीटर, एक जा रहा है 150 किलोमीटर और एक जा रहा है 300 किलोमीटर, देन इस कंसाइनमेंट का वैलिडिटी इज 2 डेज, नो सॉरी 3 डेज, इसका है 2 डेज, इसका 3 डेज। सो हर का इंडिविजुअल वैलिडिटी होगा, ये कंसोलिडेटेड ईवे बिल का कोई वैलिडिटी नहीं होता है, एंड इट्स लाइक अ ट्रिप शीट, इट्स लाइक अ ट्रिप शीट। ऑलराइट, एंड और कुछ बचता है, 1 सेकेंड, यस, कौन सी चीजों पे ईवे बिल नहीं लगेगा उसके लिए एक शॉर्टकट है गाइस। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, they defended Nepal, Bhutan using gas, kerosene, and electric bikes. Really, guys, state government and central government, that means Shiv Sena government and BJP government, they defended Nepal and Bhutan using gas, kerosene, and electric bikes. So these are not included in e-way bill. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जब ट्रांसपोर्ट करती है तो ई वे बिल नहीं चाहिए, डिफेंस के कोई ट्रांसफर होते हैं तो ई वे बिल नहीं चाहिए, नेपाल से कुछ आ रहा है या कुछ जा रहा है या भूटान से कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है तो ई वे बिल नहीं चाहिए, अगर यूज्ड गुड्स जा रहे आ रहे हैं तो ई वे बिल नहीं चाहिए, गैस ट्रांसपोर्ट हो रही है, केरोसिन ट्रांसफर हो रही है तो ई वे बिल नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक बाइक से ट्रांसफर हो रही है तो ई वे बिल नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक बाइक ट्रांसफर नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक बाइक से आप ट्रांसफर करवा रहे हो, ई रिक्शा से ट्रांसफर करा रहे हो तो ई वे बिल नहीं चाहिए, यू नीड अ मोटराइज ट्रांसपोर्ट चाहिए, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो इस पे ई वे बिल नहीं चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक मतलब दे कांट गो टू फार एनीवेयर। ऑल, नेक्स्ट सेंटेंस है, ज्वेलरी, pearls and corals weighing how much, 20, कितना वे कर रहे हैं, 20, they, jewelry, pearls, corals weighing 20 are posted using Indian currency। इसका मतलब क्या है गाइस, व्हेन यू आर ट्रांसपोर्टिंग ज्वेलरी ई वे बिल नहीं चाहिए, रिस्की हो जाएगा इफ एवरीवन नोज यू आर ट्रांसपोर्टिंग ज्वेलरी। अगर आप पर्ल्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या कोरल्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो नहीं चाहिए ई वे बिल। अगर आप वेइंग के लिए भेज रहे हो, मतलब आपके आपका जो सामान आप भेजने वाले हो उसका वेमेंट करा रहे हो, वेमेंट मतलब guys these are very heavy things, so sometimes you can't wait yourself, you have to send it somewhere to wait, तो उसके लिए आपको वहां वेमेंट तक जाने के लिए अगर वो 20 किलोमीटर तक है तो ई वे बिल नहीं चाहिए, पोस्टेज के लिए ई वे बिल नहीं चाहिए, एंड करेंसी अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए ई वे बिल नहीं चाहिए। दिस इज अ शॉर्टकट फॉर लर्निंग ऑन विच गुड्स ई वे बिल आर नॉट रिक्वायर्ड। Don't by heart it, learn these 2 lines and you'll be sorted. This line is already given here. This line is already given here. And that brings us to the end of this chapter. Let's look at the questions from this chapter. 1 second. All right, guys. The chapter details, the questions are here before you. Let's do this really well. Tax invoice must be issued by supplier, every taxable person, ये every है guys, every supplier, कैसे every supplier tax कैसे collect कर सकता है, नहीं, every taxable person, registered person not paying tax under composition scheme, all of the above। guys कौन tax invoice issue कर सकता है, every supplier definitely not, every taxable person definitely not, registered person not paying tax under composition scheme, yes, this is the right answer। Next, law permits collection of tax on supplied effective prior to registration but after applying for registration। मतलब आपने registration के prior can you collect tax, again guys 1st November को आप
you've crossed that threshold limits. You applied on 20th November and you got registration on 23rd November. So in the intervening period, does law permit you to collect tax? No, it does not permit you unless you revise the tax invoices. Yes, but only on intrastate supplies. ये तो wrong है. Yes, but only on intrastate supplies. No, ये भी wrong है. Yes, on all supplies if revised invoices raised within 1 month. This is the right answer. You can issue tax invoices, but you have to revise those invoices within 1 month from the date in which you are registered. Let me know, guys. Answer them with me. Answer them with me, please. A bill of supply can be issued in case of interstate and intrastate. A bill of supply can be issued in case of intrastate and interstate. Exempted supplies. Exempted पे bill of supply होता है. Supply to unregistered persons. Both of the above. None of the above. Guys, a bill of supply can be issued in case of interstate and intrastate. अगर आप unregistered person को बेच रहे हो, let's say you go tomorrow and buy a mobile phone, just because you are unregistered, will they give you a bill of supply instead of tax invoice? No. अगर आप unregistered हो, supplies to unregistered person, let's say tomorrow, one second, looking at the questions. Question number 3A, excellent. Pritesh, good answer there. Guys, supplies to unregistered person, just because you are unregistered does not mean that they will issue a bill of supply, they will issue a tax invoice to you. So answer is only A. Next, an invoice must be issued. Guys, an invoice must be issued at the time of removal of goods, section 31. On transfer of risks and rewards, on receipt of payment of supply, earliest of the above dates. Only one looks very familiar, at the time of removal of goods or at the time of delivery of goods. So 4A is the right answer. Guys, question number 3, Rakesh explaining it for you. Rakesh, tomorrow you like a car and you go to buy the car, and Rakesh, you are unregistered. Will Hyundai say, I will not charge you GST because you're unregistered? No, they will still charge you GST. Only thing is you can't take ITC of it. Alright, so supplies to unregistered persons here. So we don't care whether the person who's buying it is unregistered. If the supplier is registered, he will charge you tax. So bill of supply is only in this case, that is exempted supplies. Alright. Guys, a continuous supply of good requires one of the following. A continuous supply मतलब of goods है. तो goods के लिए कौन सा section है? 31, 1, 4 and 7. उसमें भी 1 नहीं है, 7 नहीं है, continuous के लिए 4 है. The goods must be notified. नहीं, notified का तो कुछ नहीं है. The contract for supply lasts for a minimum of 3 months. Guys, ये months का goods में नहीं है, months का only service में, continuous service में months है. The supply is made by a means of a wire, cable, pipeline or other conduit. Not necessary. Pipe से हो सकता है, pipe के otherwise भी हो सकता है. The supplier invoices the recipient on a regular or periodic basis. Answer is D. The supplier invoices the recipient on a regular or periodic basis. Guys, 3 months ka please remember, 3 months is only for supply of services. Only when it's continuous supply of services 3 month requirement is there. यहाँ पे requirement नहीं है. Answer should be D. Let me just check. Why D is the right answer? That's right. Let's look at the 6th one, guys, please. Everyone, 6th one. The time limit for issue of tax in case of continuous supply of goods. Guys, goods है 31.1, 31.4 और 31.7. 31.4. उसमें time limit क्या है? At the time of issue of statement of account where successive accounts are involved. At the time of receipt of payment, the payments are received prior in issue of accounts on a monthly basis or as and when demanded. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. It's only between 1 and B. At the time of statement of account where successive accounts are involved. At the time of receipt of payment, इस payment is received prior to issue of accounts. Answer is B. यहाँ पर payment भी है, account भी है, whichever is earlier. All right, next one, guys. In case of goods sent on sale or approval basis, invoice has to be issued. Guys, sale or approval basis, 31.7. Either you approve it or within 6 months of removal, I will have to issue the invoice. I can't wait for you forever. They've given the answer
as A at the back. 1 second. So that's a mistake, guys. This is the right answer. Successive payments or successive accounts, whichever is earlier. Let's go to that section. If you go to that section, section 31.4, you will see it's successive payments or successive accounts, whichever is earlier. So answer should be B. All right. Next one, while sending the goods, another invoice has to be issued by the recipient while rejecting the goods. ये तो पूरा गलत है. When the recipient accepts the goods or 6 months from the date of removal, whichever is earlier, this is right. When the recipient accepts the goods or 3 months नहीं 6 months है. आप अप्रूव कर लो, नहीं तो 6 months के अंदर I will be forced to issue an invoice to you because that's the due date under section 31.7. Supply of service है, it has ceased, cessation हो रहा है. Then invoice कब तक issue करना है guys? 31.2, 31.5, 31.6. Cessation is 31.6. 31.6 बोलता है अगर cessation हो रहा है तो जिस दिन cess हुआ है या उसके पहले आपको invoice issue करना पड़ता है. 30 days का टाइम लिमिट यहाँ पे नहीं है. Invoice has to be issued at the time of cessation. Yes. All right. Next, the tax invoice should be issued within dash date of supply of service. अगर कुछ नहीं बोला गया है, then 31.2 says कि 30 days में आपको issue करना है, and financial services के लिए 45 days. Next, important है guys ये बहुत important है. A person who has applied for registration can provisionally collect tax till registration is approved. On applying for registration, if he has applied for registration within the prescribed time, no, you cannot collect tax. Neither collect tax nor claim input. ये भी नहीं लग रहा है right answer. Issue revised invoice and collect tax within 1 month. Yes, this is the right answer. Revised tax invoice within a period of 1 month. Guys, wake yourself up. For an increase in tax or taxable value, a debit note for GST purposes should be issued by the supplier. Yes. For increasing the value, क्योंकि पहले QVT कम था, उसको increase करने के लिए debit note issue करना पड़ता है by the supplier. Option नहीं है. Definitely you have to issue a debit note. That debit note is linked to the invoice. The receipt voucher जब एडवांस मिलता है तब receipt voucher देते हो. I have received your advance. So receipt voucher must contain details of goods and services, invoice reference, full value of supply, none of the above. Guys, आपको advance मिला है. How do you know full value of supply? ये तो मालूम ही नहीं है. Invoice reference कैसे दोगे? अभी तक advance मिला है. Only details of goods and services. Only A is the right answer. All right. Question 3, again 1 second. Question 3. All right. A bill of supply for interstate and intrastate. Okay. Guys, bill of supply आप कब issue कर सकते हो? जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तब बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, बिकॉज आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते. जब आपके गुड्स एग्जेम्प्टेड है तब आप इशू कर सकते हो, बिकॉज आपको टैक्स कलेक्ट नहीं करना है. या फिर आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो, या फिर आप अनरजिस्टर्ड हो, तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड की बात ही नहीं हो रही है. तो कैन यू इशू अ बिल ऑफ सप्लाई in case of exempted supplies? Yes, you can. So a bill of supply can be issued in case of interstate and intrastate exempted supplies. Yes. So first वाला looks like the right. Second वाला देखते हैं. When you make supplies to unregistered person, guys, ऐसा कोई requirement नहीं है. Rakesh, if you today go to Pinnacle classes and you say I am unregistered, don't charge me GST. No, but we don't care. We are registered, guys. If the supplier is registered, he will charge you GST. If today you go to Samsung Mobile and you say I want a mobile but I will not pay GST because I am unregistered, that is illogical. That is not right, because if Samsung is registered, they will charge you GST. If you are not registered, then you can't take ITC. That unfortunately you can't take, and that's the reason, guys, when you go buy a movie ticket, GST लगता है उस पे. When you go buy anything, उस पे GST लगता है. That's the reason answer is A, exempted supplies. That brings us to the end of this chapter, guys. Good job, good job. Whoever is here attentive, I really appreciate the efforts. Is going to definitely pay off. It's 5:46. I'm just going to put a poll in front of you, guys. I'm just putting a poll in front of you. Oh, there's no poll today.
Thank you so much, Rakesh. Really, really appreciate the compliment. One second. Guys, just putting a small poll before you. Answer it in the next 1 minute while you take a break. All right, just launching a poll, guys. Tell me what your answer is. Launching a poll, 1 second. Unfortunately, there is no option because I don't have an option there. I have to continue, and you guys also will have to continue. Unfortunately or fortunately, we will have to do this well. I'm with you, and I'm going to make sure that you do this really well. So take a 2 minute break. We come back and we go to the next chapter, which is return chapter. There also there are some shortcuts how to do that chapter. Guys, I want to do exemption as well, but trust me, if I start exemption, it's going to be a very big chapter. Hence, I want to finish everything before we actually do that. So the next chapter, which we immediately dive into, is returns chapter. Returns and payments are the only two chapters left, but trust me, after that returns को 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. सेम चीज पेमेंट को भी 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. उसके बाद लेट्स डू एन एग्जामिनेशन आरटीपी और एमटीपी, and let's see how well we can do the examination RTP MTP. Be with me while we do that. So let's kill these two chapters and let's do IMTP RTP in just about 2-3 minutes from now.
Thank you guys. I'm reading all the comments and I really appreciate it. For today's session and yesterday's session, I'm going to send you a Google link and you can give your feedback there. I really appreciate honest, good, really nice feedbacks on my Google. So I'm going to send you links, but that's going to happen tomorrow. I have your email addresses. I'll send you an email just and link with the link so you can upload feedback there. All right, guys, 2 more minutes and we start and we look at the next chapter, which is called returns in just about 2 minutes from now. Guys, at the end of the session, I just want to tell you that whenever you're revising GST or whenever revising IDT or for that matter DT also, and if you have any questions, WhatsApp me, just leave an audio note and I will reply back. You know the drill, you've done this before with me. All right, guys, I'm back. I'm back here. I'm closing the poll. All right. Guys, just a second, and I'm going to start off with the next chapter. All right, just 1 second. MCQs can be on the sheet. Next chapter we can choose is either payment of tax or returns. Let's do returns first. All right. Guys, returns also, there are some shortcuts to remember that. So be with me while we do returns really, really well. I'm putting something on the screen for all of y'all. All right. Everyone, all eyes on the screen here. All eyes on the screen here. This is Vijay Sales. So please confirm applicable of case study in November exam. Case studies are not applicable for your exams. Guys, trust me, learn the basic sections really well, like 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, like 9.1, 9.2, 9.3. Learn the basic sections really well. Look at the amendments in the end. In fact, for the amendments, just once you cover the entire portion, look at the amendments and you'll be sorted. Just 1 second. Don't worry, Rakesh. We'll look at the mock paper right now in some time from now. Guys, quickly on the screen, 15 minutes to each of these chapters and we are sorted. All right. First is this Vijay Sales is supplying ACs. Vijay Sales is supplying ACs. It's supplying to registered people. It's supplying to unregistered people.
It's supplying to everyone. So please give your contact number further out if possible. Then only I will, Rakesh, I will give it. Just give me some time. These chats are distracting me, guys. Everyone now eyes on the screen, please. So registered people को also they sell ACs. Unregistered people को also they will sell AC. Of course, no one will be spared. Everyone will be chargeable to GST. Now let's say Vijay Sales for this month had sold 10 air conditioners. So that's 1 lakh worth of air conditioners. And on that 12% GST. So 1 lakh 12,000 rupees. Now this is the outward supply. Guys, this is the outward supply of Vijay Sales in the month. 10 AC sold. Now a registered person does not care. He's going to sleep very peacefully in the AC in his house. But this registered person wants to take income tax credit. Let's say out of the 10 ACs, 5 ACs are bought by registered person and 5 by unregistered person. And this registered person is waiting because he wants to take ITC. So for that, he is dependent on Vijay Sales because there's a matching concept. Vijay Sales will upload a return and we will call this return GSTR1. That's the first one. GSTR1 will be uploaded by Vijay Sales and it's 1 उसका due date is 10th. 10 में भी 1 है, GSTR1 में भी 1 है. Link it together. So by the 10th of the next month, that is 10th of October, he will have to give all the outward supply ka details and he will have to give invoice wise details. If there are too many invoices, यहाँ पे तो 10 ही invoice होंगे. अगर दो बहुत सारे invoices हैं, then he will put it in Excel and he will upload that Excel. But point is, right now the procedure is not important. The form number is important. GSTR1 gives outward supply का details. क्या क्या सप्लाई किया and वो 10th of October तक. ये सितंबर में सप्लाई हुआ है. What is the time of supply of this? Let's say the time of supply is September. So by 10th of October, he will upload this GSTR. And जैसे ही upload करेगा, उसमें then एक और GSTR form होगा, which is called GSTR 2A, and जिसमें registered persons जो भी है, उनके details match हो जाएंगे. तो registered person will want to take credit and whatever GSTR1 में upload होगा. Let's take an example of GSTR1. GSTR1 में आएगा AC supplied to registered person. Registered person का GST आएगा and उसका amount आएगा. Let's say एक AC है 10,000 रुपए का और 10,000 रुपए के बाद 1200 rupees is the GST. So 600 CGST, 600 IGST. And now because Vijay Sales has uploaded this ITR on the 10th or by the 10th, you can start taking the ITC. Actually, you can take the ITC even before that, no problem. But this matching will happen because you will claim ITC of 600 plus 600 and this will be matched against the GSTR1 and government will know that you are saying the truth. All right. This is the first GSTR1 is the first document. Now, next is GSTR2. उसका ड्यू डेट आफ्टर 10th है, 15th है. But GSTR2 is for the inward supplies. कि आपको क्या क्या इनवर्ट सप्लाईज हुआ है वो GSTR2 में जाता है, बट ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. उसका ड्यू डेट इज 15th. But the main one, guys, is GSTR3, which had inward also plus outward also, पूरे मंथ का हिसाब किताब. बट अनफॉर्चुनेटली 3 अभी तक आया नहीं है, तो उसका एक मिनी बीटा वर्जन आया है. GSTR3P. दिस ऑल्सो इज अ मंथली रिटर्न. दिस हैज टू बी फाइल्ड बाय द 20th of October एंड इसमें बोलते हैं मैंने इतना इनपुट लिया, उस पे जीएसटी है लेट्स से 10,000, मैंने इतना आउटपुट सप्लाई किया, उस पे जीएसटी है 12,000. So I will take a credit of this 10,000 against this 12,000 and balance 2,000 I have to pay by 20th October.
So guys, we've learned GSTR1, which is the first one, by the 10th, GSTR2 by the 15th, and GSTR3B, which is the main one, guys. The main return, monthly return, is GSTR3B, which is to be filed by the 20th of the next month. By the 20th of the next month. All right. Now let's move ahead. Let's move ahead. तो ये हो गया, ये GSTR1 है, GSTR3 भी है. Now let's see one special person, non-resident taxable person. Guys, remember this man? He went to 5 countries: Denmark, Sweden, Netherlands, 2 more countries, France, Germany, and then he came to India. ये 5 countries मैं jokingly नहीं बोल रहा हूँ, एक reason है इसका. He came to India, he participated in an exhibition, he took a registration. बस एग्जीबिशन 10 दिन की थी, उसने 10 दिन एग्जीबिशन में बेचा सामान एंड वापस चला गया अपनी कंट्री. He is a non-resident taxable person. We can't harass him by too many formalities. So इसके लिए एक simple सी formality है, which is called GSTR5. And that's why I kept repeating this non-resident taxable person has come from 5 countries. GSTR5 एक simple formality है, ये रिटर्न भी मंथली है. तो जिस मंथ में, गाइस, जिस मंथ में उसने ये एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, लेट्स से सितंबर में किया, उसके नेक्स्ट मंथ में उसको जीएसटीआर फाइल करना है. फाइल. और डिटेल्स मत, और डिटेल्स अभी नहीं, अभी आई गिव यू वेरी फ्यू डिटेल्स बिकॉज दिस अदरवाइज गेट्स रियली कंफ्यूजिंग. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स. जीएसटीआर1 10th तक, जीएसटीआर3 भी मंथली है अगेन 20th तक. Non-resident taxable person is a very important man, but we don't want to disturb him, and hence for him there is only one GSTR right now, which is GSTR5. वो तो चला गया वापस 10 दिन में, तो उसको एनुअल रिटर्न कुछ नहीं भरना है. ही इज अ वेरी बिजी मैन, ही इज अ फॉरेन non-resident taxable person. All right. Then you remember one more guy, the composition scheme guy. The composition scheme guy, we have to make his life also simple. Guys, every quarter, he will pay on whatever sales he's done. Let's say April, May, June. So April, May, June, July, August, September, October, November, December, and Jan, Feb, March. ये 4 quarter है. Every month, every quarter के end में, so April, May, June, by 18th July, by 18th October, by 18th Jan, and by 18th April, ये 4 quarterly payments करने हैं उसको. How many payments? 4 payments. And at the end of the year, he has to file a return on the 30th April under GSTR 4. So easy to remember. 4 quarters. 4 and 4 quarters. Please remember 4 and 4 quarters. Just trying to do all the simple people first. The simple guy is this guy. Composition scheme. हर क्वार्टर में पे करेगा, हर क्वार्टर में पे करेगा by the 18th of the next month. एंड जब पे करेगा, गाइस, जब पे करेगा, दैट इज कॉल्ड GSTR 08. बट वो नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज GSTR 4. ये उसका रिटर्न जाएगा बाय द 30th April. तो देयर आर 2 फॉर्मेलिटीज व्हिच ही हैज टू डू, पर ज्यादा नहीं है इसके लिए, बिकॉज यू हैव टू मेक हिज लाइफ सिंपल. ही इज अ कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर, यू हैव टू मेक हिज लाइफ सिंपल. सो अंडर GSTR 4 बाय 30th April at the end of the year, and 4 quarters में इसके लिए number is 4. Composition scheme number is 4. 4 quarters he has to make payments. So we will not wait till 30th April for the payments. Payments जल्दी आ जाएंगे अपन को, बट एक लास्ट में इसको स्टेटमेंट फाइल करना है, GSTR 4 का रिटर्न फाइल करना है by 30th April. So this is done with composition scheme. This is done with non-resident taxable person. All right. Let's do some more. All right. गाइस, ये GSTR 3B जो है, ये जो 3B है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट बेसिकली टेल्स यू योर एंटायर हिसाब किताब फॉर द मंथ. मंथली इनपुट आउटपुट जो भी बैलेंस है वो पे करना है, वो सब GSTR 3B से जाता है. ऑलराइट, नेक्स्ट
Next, let's do the first return. Guys, the first return is filed when? On the 1st of November, GSTR1 frequency is monthly, but if your turnover is up to 1.5 crore, then it's quarterly. We'll add some more layers to this. But guys, next I'm looking at first return. Guys, what is this first return? You became liable to register on the 1st November. You applied on the 20th November for application you made on the 20th November, and within 3 days and 23rd November you got registered. So please tell me what's your effective date? Effective date is 1st November. You will issue revised invoices from 1st November to 23rd November. You know this period. 1 to 23rd you will issue revised invoices. And guys, जो इस पीरियड का रिटर्न है, that is called your first return. इसका section is very simple to remember. Guys, you remember the deadline or the limit for goods? आपको 1st November पे what threshold did you cross? 40 lakhs का threshold. So this first return का section is section 40. Section 40 is the first return का section. All right. So first return done. Do it in parts, guys. First return done. NRTP के लिए return done. GST 5. He comes from 5 countries. Composition scheme के लिए return done. GST 4. GST R. GST return 4. GST return 5. GST return 3B. GST return 1. R is for return. All right. Next. Guys, annual return. Every year once you need to file your annual return. Guys, annual return only once every year file करना पड़ता है, and that is under section 44. Section 44 says you have to file your annual return, and ये कब तक फाइल करना है? इसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल डेडलाइन है. आपका ईयर खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर 1920 है आपका ईयर. That gets over on 31st March 20. उसके बाद you have a comfortable deadline till 31st December to file your annual return. But there are 3 people to whom this annual return does not apply. I'm just taking you to those 3 people and the short form. I am not counted. In this annual return, there are 3 people who are not counted. I am not counted. For this annual return, N is non-resident taxable person. I told you, he तो goes away very fast. So he will not file annual return. Casual taxable person, जो दिल्ली से बॉम्बे आता है एग्जीबिशन के लिए, तो उसको बॉम्बे के लिए या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का टैगलाइन देते हैं. एग्जीबिशन खत्म हो गया, क्या एनुअल रिटर्न फाइल करना है? नहीं, वो तो सिर्फ दिल्ली में जो रजिस्ट्रेशन है उसका रिटर्न फाइल करेगा. एंड जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है ISD, हु इज दिस गाय? सीए फाइनल में पढ़ेंगे, बट अभी आप याद रख लेना, इसको एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है. So I am not counted for annual return. There are 3 people. Inputs, ये बाहर मत करना गाइस, सेंटेंस याद रखना. I am not counted. Input service distributor, non-resident taxable person, and casual taxable person. I am not counted. These 3 people are not counted for annual return. And guys, annual return is my favorite return because it's my favorite number, GSTR 9. बट यहाँ पे गाइस कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को एनुअल रिटर्न के लिए आई एम नॉट काउंटेड नहीं बोला है. I is ISD, N is non-resident taxable person, this is CTP, casual taxable person. तो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को भी एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा, बट दैट इज अंडर GSTR 9A. So there are 2 numbers. One is GSTR 9 and the next number is GSTR 9A. But 9 is my favorite number and hence annual return becomes my favorite return. And this return ka deadline is 31st December of the next year. Of course, year खत्म होने के बाद ही 31st December उस तक आपको annual return भरना है, section 44.
Some more details, guys. We'll add more layers, but right now, whatever we learned, GSTR1 is a monthly return, but 10th October you will file it. But if your turnover is less than 1.5 crore, then you can file it quarterly. GSTR3B is the main one, which is a summary of your entire hisab kitab of your entire month. It is to be filed by the 20th of the next month. Section 40 is when you cross the 40 lakh threshold, first return. Guys, 40 lakh threshold नहीं 20 lakh भी हो सकता है, 10 lakh भी हो सकता है, but just to remember, when you cross that threshold, 40 is the first return. Annual return is section 44, which is GSTR 9, my favorite number, 9 and 9. So annual return is my favorite number. By 31st December, 9 is for everyone, 9 is for composition scheme. 3 people are not counted in this. I am not counted. ISD, NRTP and CTP are not counted for annual return. All right. Bus ho gaya, guys. I want to close my business. I want to shut my business. So I applied for voluntary cancellation. Just 1 second, guys. All right. Now, both ho gaya. I'm applying. Okay, I have a question. Aditi is asked. So even for composition scheme annual return, yes, annual return deadline is 31st December. But guys, इन सब की deadlines बहुत बार change होती है, बहुत बार extension मिलता है. For GSTR बहुत extensions मिलते हैं because बहुत time site is hanging or the details are not proper, so you get a lot of extensions. So don't worry about the deadlines. सिर्फ थोड़े बहुत के लिए एकदम sure है. Like GSTR 3B का 20th है, वो याद रख लो. बिकॉज GSTR1 का जो 10th है वो बहुत टाइम एक्सटेंशन मिलते हैं, बहुत कॉमनली मिलते हैं. GSTR9 एंड 9A के लिए 31st December है, दैट्स एनुअल रिटर्न. ऑलराइट guys, next please focus on the screen one more time. I'm very tired of my business. I don't want to run my business. I want to voluntarily cancel my registration. So I say I want to my registration to be cancelled from 29 September. But by the time the income tax officer verifies my cancellation application, etc., and he gives me cancellation, the order comes on 15th October. So then, after cancellation, within 3 months, I have to file my return under section 45. And this is called GSTR number 10. GSTR 10, guys, GSTR 10. GSTR 10 is for the final return. First return, and now we are at final return. First return, and now we are at final return. Final return is section GSTR 10. अगर आपने वॉलंटरी कैंसिल किया या आपका एओ ने कैंसिल करवा दिया, but 3 months from which date? They give you good amount of time. So later off, either the event of cancellation or the order of cancellation, whichever is later, because they want you to patiently file a return. Return के लिए बहुत अच्छे timeline दिए हैं. Hence, it's either 29 September or 15th October, whichever is later. So 15th October is later. उसके बाद 3 months मिलता है, तो November, December, Jan. By 15 Jan, you should file this final return in GSTR 10. I hope you're okay with the final return. Question आ सकता है final return पे. Guys, number इतना important नहीं है. Form number is okay, but these details are important. Later कब तक file कर सकते हो, that is important. Next, remember bodies like UN, United Nations Organization, or embassies, they are given special status. So when they buy inputs, of course they will also pay GST on the inputs. So they apply for a number and they don't get a registration number, they get a unique identity number. And this UIN helps them to take a refund.
क्योंकि गाइस यूएनओ एम्बेसी पे जीएसटी चार्ज नहीं होता. But when on the inputs, let's say the UNO wants to buy ACs, of course Vijay Sales will charge them. So जो GST वो पे करते हैं inputs पे, if UNO comes to me for services and I provide them services, of course I will charge them GST. So when they pay on the inputs, they pay GST. Of course they would want a refund of that, and that refund के लिए they have to file a return, which is a refund return. और कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ refund होता है. is GSTR 11. जो पे किया था वो वापस मिल जाएगा. 1 रुपया पे किया था, 1 वापस मिल जाएगा. 1 लाख पे किया था, 1 वापस मिल जाएगा. पूरा रिफंड मिल जाता है हमको अंडर GSTR 11. So GSTR 11 is only and only for UNOs and embassies or those people who hold unique identity numbers. You file this return and you get a refund. You file this return and you get a refund of the taxes paid. All right, let's look at it. Let's look at it from here. Assessee is required to estimate his tax liability on a self-assessment basis. One person's return has a bearing on the other who purchased goods from him, her, it. मतलब विजय सेल्स अगर रिटर्न फाइल करता है टाइम पे तो मैच होगा एंड मेरे लिए हेल्पफुल होगा if I am especially claiming ITC. The return process has not been streamlined yet. बहुत सारे procedural aspects हैं which are very very bad, but you don't have to worry about that from an exam perspective. All the returns under GST have to be filed electronically, and you can use XML utilities. XML utilities basically means Excel help ले सकते हो. GST सुविधा providers and application सुविधा providers, application support providers help you even file returns. Returns कहाँ पे भरते हो? Online gst.gov.in पे returns भरते हो. GSTR 1 is for outward supplies to be filed by 10th. How do you remember it? 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है. For small taxpayers up to 1.5 crores, you can file it quarterly also. Invoice wise details देना पड़ेगा आपको अगर सामने वाला registered है, और अगर interstate कर रहे हो और more than 2 लाख है तो भी आपको invoice wise देना पड़ेगा. This is similar to revised invoice. वहां पर भी ऐसा ही था, आपको revised invoice individual invoices issue करने पड़ेंगे. बट अगर आप interstate कर रहे हो और 2 लाख के ऊपर है, 2.5 लाख के ऊपर, तो उसमें भी आपको इंडिविजुअल करने पड़ेंगे. मतलब आप कंसोलिडेट कर सकते हो अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड. अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो आप उसको आप कंसोलिडेट भी कर सकते हो, बट अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो वो आईटीसी मांगेगा. अगर आईटीसी मांगेगा तो आपको आईटीसी इंडिविजुअल इनवॉइस वाइज इशू करना पड़ेगा. ओनली HSN कोड एंड नो डिस्क्रिप्शन. गाइस कोई भी रिटर्न में HSN कोड ही डालना पड़ता है. यू डोंट हैव टू राइट द डिस्क्रिप्शन बिकॉज अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा. आप रिटर्न को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिटर्न फाइल करते हो, लेट्स से सितंबर का रिटर्न, अभी सितंबर चल रहा है, एंड सितंबर का रिटर्न आई फाइल बाय द 20th October, एंड देन ऑन द 25th October आई फाइंड अ मिस्टेक और आई फाइंड एन ओमिशन, तो कैन आई रिवाइज दिस रिटर्न? नो गाइस, इनवॉइस these returns cannot be revised. तो जो ओमिशन आपको 25th October में मिली वो आप नेक्स्ट मंथ भी रिटर्न फाइल करोगे ना 20th November को, उसमें डाल देना. एक अलग टेबल होता है अमेंडमेंट टेबल, उसमें आप डाल दो. अगेन आई रिपीट दिस, सितंबर मंथ का रिटर्न है, कब तक फाइल होगा? 20th October तक मंथली रिटर्न GSTR 3B. 1 सेकेंड. On the 25th of October you noticed a mistake in this. Can you go back and change it, or can you go online and change it? Sorry, because guys, ये return का impact दूसरे लोगों पे पड़ता है. In this return, the impact is not just on you but also on other people, and hence you cannot revise an invoice in the next month's invoice. मतलब अक्टूबर का invoice कब जाएगा, का return कब जाएगा? 20th November. तो नवंबर के invoice में you can amend it in the November invoice. एक अमेंडमेंट का सेपरेट कॉलम होता है, उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हो, बट यू कैनॉट. ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है गाइस. All right. The time limit for rectification is September return और annual return. Alright, इसको अपन आगे थोड़ा देखते हैं, ये कौन से रिटर्न के बारे में बात कर रहा है. We'll see it in some time. Guys, GSTR 1
has to be only filed monthly. Remember, by the 10th of the next month. But there are two exceptions where it can be filed even before the month ends. What are the two exceptions? अगर मेरा business close हो रहा है, तो then I will not wait for the 10th of the next month. And अगर I'm a casual taxable person, remember casual taxable person को registration लेना पड़ता है, and that registration is valid either for the time period they have specified or 90 days. अगर वो खत्म हो रहा है, तो then within 7 days I have to file. मतलब for two people they can file it even before the month ends. One is when the business is closing, and one if you're a casual taxable person and your period of registration is expiring. In these cases, you can file it even before the month ends. GSTR 2A, I told you, जो भी आप GST R1 में डिटेल्स डालते हो एंड उसमें सामने वाले का डिटेल्स रिफ्लेक्ट होगा GSTR 2A में. मतलब आपने डिटेल डाला आउटवर्ड सप्लाई का, और आपने डाला यू सप्लाइड इट टू सौरभ मुत्था और यू सप्लाइड इट टू समवन एल्स, तो सामने वाले को मालूम पड़ता है, स्पेशली व्हेन दे आर रजिस्टर्ड, ओनली व्हेन दे आर रजिस्टर्ड, सामने वाले को मालूम पड़ता है कि हाँ मैचिंग हो गया है. दैट इज GSTR 2A. और GSTR 2A लॉजिकली कब होगा? आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ GSTR 1. लॉजिकल है गाइस. GSTR 1 में विजय सेल्स ने डाला दैट दे हैव मेड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ ACs टू माय फर्म and my firm is registered. So then once this is filed, GSTR 1 is filed, they will automatically be created GSTR 2A, जिसमें मुझे इंटीमेशन आ जाएगी कि ये मैच हो गया है. GSTR 2, which is detail of inward supplies, is to be filed by 15th of next month. So GSTR 1 के लिए 10th 1/1. GSTR 2 is the next one, the 15th, and then GSTR 3B, which is the 20th. So guys, 10th को एक return, 15th को एक return, 20th को एक return. Life is very busy. Life is very busy for people who file GST returns. All right. But GSTR 3 अभी तक notify नहीं हुआ है. GSTR 3B चल रहा है, beta version. All right. GSTR 4 किसके लिए है guys? कौन पे करता है 4 quarters? Composition scheme, उसके लिए फाइल करना है. एंड उनको एट द एंड ऑफ द ईयर 30th अप्रैल तक ये फाइल करना है, प्लस उनको एक और GSTR 9A भी फाइल करना है बाय 31st दिसंबर. GSTR 5 किसके लिए? 5 कंट्रीज कौन घूम के आया? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. ये मंथली है, बाय 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ पे फाइल करना है, और विद इन 7 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ बिजनेस. गाइस, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन आया, उसको GSTR 5 भरना है. लेट्स से ही फिनिशेस बिजनेस टुडे in September, तो within 7 days from the closure of business or the 20th of next month, अगर वो business continue कर रहा है तो 20th of next month, अगर business close कर रहा है, इंडिया में वापस जा रहा है वो, तो then within 7 days from closure of business, मतलब they will not wait too much for him. All right. You can file the current month's returns. Guys, अगर मैंने सितंबर मंथ का रिटर्न नहीं भरा अक्टूबर में, तो अक्टूबर का I cannot file in November. मतलब I have to file every return for the next return to be filed. अगर सितंबर का रिटर्न विच इज टू बी फाइल बाय 20th अक्टूबर मैंने फाइल नहीं किया, तो मैं अक्टूबर का रिटर्न विच इज टू बी फाइल इन 20th नवंबर नहीं कर पाऊंगा. सो सीक्वेंस में जाना पड़ेगा आपको. फर्स्ट रिटर्न इज सेक्शन 40. हाउ विल यू रिमेंबर इट? व्हेन यू क्रॉस 40 lakhs turnover, you will have to get registered, and when you get registered, you will have to file your first return. First return is for the period during you become liable to register, that is 1st November, to you obtain registration, that is 23rd November. That is the first return. Annual return is section 44. My favorite number, GSTR 9 and GSTR 9A. But 3 लोग are not counted. I am not counted. ISD is not counted. Non-resident taxable person and casual taxable person are not counted in this. Final return is section 45. Final return is GSTR 10 when 3 months में फाइल करना है. 3 months of what? Either the date of cancellation or order of cancellation, whichever is later. UN etc को 1 GSTR 11 फाइल करना है, only for refund. And next important है ये गाइस, आपको फाइल करना था रिटर्न GSTR 3B. कब तक फाइल करना था?
20 अक्टूबर तक, आपने फाइल किया 25 अक्टूबर को, क्या ये एनुअल रिटर्न है? नहीं, ये तो मंथली रिटर्न है। तो फी इज 100 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 5000। तो फी 100 रुपीज पर डे मतलब 500 रुपीज लग जाएगा, बिकॉज डिले हो गया है 5 डेज का। सो फॉर मंथली रिटर्न द डिले इज there's a fee of 100 rupees per day up to, I've written my mistake 10,000 but यहाँ पे 5,000 है। Guys, you can change it, it's 5,000 here। एंड अगर एनुअल रिटर्न मतलब बड़ी मिस्टेक कर ली आपने, एनुअल रिटर्न अगर आपने डिले कर दिया तो पेनल्टी पर डे की तो 100 ही है, बट जो मैक्सिमम है दैट इज 0.5% ऑफ टर्नओवर। गाइस, ये बड़ा नंबर हो सकता है। 0.25% ऑफ टर्नओवर कैन बी अ बिग नंबर, सो बी केयरफुल। एनुअल रिटर्न में ज्यादा पेनल्टी है, ज्यादा फी है। एंड नेक्स्ट सेक्शन लास्ट इस, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, सेक्शंस कौन से इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट रिटर्न, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, GSTR 3B return. These are the important returns. Section 48 says GST practitioner. Guys, tomorrow if you become a CA, you can also register and become a GST practitioner. My partner in my CA firm is a GST practitioner. He is registered at GST website as a GST practitioner, and he can do everything for my clients. Whatever my clients authorize him to do, whatever our clients authorize him to do, he does all of that. Like any change in registration, any filing of returns, any paying of taxes, जो भी उन्होंने ऑथराइज किया है वो कर सकता है। एंड उसके लिए उसका सेपरेट लॉगिन है, उसके पास एक सेपरेट लॉगिन है एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। ऑलराइट, important last 3 points are important, let's read them. There is no mechanism of filing revised return. गाइस, एक बार आपने रिटर्न भर दी है 20 अक्टूबर को, लेट्स से आपने भर दी रिटर्न, तो आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। देन क्या कर सकते हो? You can in the next return you can amend it whenever you notice it। let's say notice आपको मिस्टेक या ओमिशन आपको नोटिस किया नेक्स्ट मंथ में, जिस मंथ में नोटिस ओमिशन में नोटिस किया, लेट्स से 25 नवंबर को आपने ओमिशन नोटिस किया है, आप थोड़े सप्लाई से डालना भूल गए, तो आपने 25 नवंबर को नोटिस किया है, तो उसका उस मंथ का रिटर्न कब जाएगा? 20 दिसंबर को। तो उस रिटर्न में यू कैन अमेंड इट, बट अगर कुछ अमाउंट पेएबल है तो यू हैव टू पे इट विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट, no rectification is allowed after the due date for furnishing the return for the month of September or the relevant annual return। और मतलब I'll give you an example। Let's say on 29 September और let's say September का रिटर्न I filed it on 20th October। Great. Can I revise this return? No, you cannot revise this return। So on the 25th of November, if I find a mistake pertaining to this month, तो ऑन द 20th दिसंबर जो मैं रिटर्न फाइल करूंगा उसमें मैं अमेंडमेंट कर सकता हूं। एक कॉलम है अमेंडमेंट का, उसमें मैं अमेंडमेंट कर सकता हूं। लेट्स से आई फॉरगॉट टू पुट अ सब सेल, तो मैं यहां पे डाल सकता हूं एंड आई हैव टू पे द इंटरेस्ट, आई हैव टू पे द फी, आई हैव टू पे द टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट। बट लेट्स से नवंबर में मैंने नोटिस नहीं किया, दिसंबर में भी नहीं किया। If I don't notice it and after 2 years if I notice, can I now amend? No, you can't, because no rectification is allowed after, guys, ये ईयर खत्म हो जाएगा 31 मार्च को, ये ईयर खत्म हो जाएगा। उसके बाद सितंबर का रिटर्न फाइलिंग डेडलाइन इज 20 अक्टूबर, या आपका रिटर्न फाइलिंग डेडलाइन, आपका रिटर्न फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर, लेट्स से एनुअल रिटर्न आपने फाइल कर दिया अगस्त में 8 अगस्त को, तो whichever is earlier is the last day you can rectify। अगर इसके बाद कुछ मिस्टेक मालूम पड़ती है, then sorry, your chance is gone, you can't rectify after that। So please understand, can you revise a return? No chance, you can't revise the return। If you find any error or omission in the next return, you can make the changes or you can add those details। But if you find those omissions or errors after 2 years, can you revise it? No chance,
The last date for revision, the last day for doing this rectification in the next months is the September or the return filing, whichever is earlier. This guys is similar to ITC का credit का time period. This is similar to ITC का credit का time period. September month का due date 20th October or return filing, whichever is earlier. Guys, when you file the return, let's say 20th October, when I file the return, I have to pay the tax. Whatever takes tax I have to pay, I have to pay it. Let's say मेरा input tax rate था 10,000 का, output था 12,000 का और पूरा adjust हो गया, तो मुझे जो 2,000 है वो पे करना पड़ेगा. If I don't pay this, this will be an invalid return. Please understand, you in direct tax में if you file a return without paying self assessment tax, that's considered as a valid return. But indirect tax में if you file your return without paying tax, it's considered an invalid return. Devansh, sounds very difficult, but what I'm going to do next, guys, now what I'm going to do next, I'm opening up some MTP and RTP for you guys. First, let's do some questions from MTP and RTP. I'm just going to open some MTP and RTP for you guys. Just be with me. Everyone, all eyes on the screen. All eyes on the screen while we do this. Very, very important. This will tell you how much you know of what we've done. All eyes on the screen, guys. This is your ICAI RTP for November 20. The first question is on your screen. The first question is on your screen. Saloni, if you're here, buy one, get one free is a question which is here. Let's tackle this. PTL Private Limited is a retail store of merchandise located in 25 states and union territories in the country. So many states, guys. Great. For the purpose of clearance of stock or merchandise and to attract customers, PTL Private Limited launched a scheme of buy one, get one free. But guys, buy one, get one free, don't think that it's free without consideration. It is with consideration. Only thing is, दोनों का consideration एक में ले लिया है. For the same type of merchandise, for instance, one shirt is to be given free with one shirt. For saving costs, PTIL Private Limited directly purchases merchandise from the manufacturers. So this is PTL. It buys some goods and it has outward supply also. तो input भी है, outward supply भी है. And because it's registered in so many locations, etc., I think it will be registered as a normal and not composition scheme. In the month of May, in order to save employee costs, PTL Private Limited purchased a Tempo Traveler worth 12 lakhs with seating capacity of 25 persons, including driver, for transportation of its employees. Guys, I'm straight away jumping. क्या इस पे ITC मिलेगा? VAM. It's a motor car. Is it for GST? Goods के लिए नहीं है, selling के लिए नहीं है, training के लिए नहीं है, passengers for hire के लिए नहीं है, employees के लिए है, but फिर भी मिल जाएगा because it's more than 13 people. So इसके ऊपर जो भी GST है वो मिल जाएगा. I'm assuming the question and I'm answering it already. So I'm just putting a tick mark here. इस पे ITC मिल जाएगा. I hope everyone's with me. Further, for ensuring the well-being of its employees, PTL Private Limited voluntarily obtained health insurance. Guys, health insurance पे ITC blocked है. Unless there is a compulsion in the law, but यहाँ पे compulsion नहीं है, you voluntarily obtained it, तो इस पे ITC नहीं मिलेगा. I'm assuming the question, guys. The premium of 1,500 per day has been paid by the company for 100 employees. Good, you paid the premium, but इस पे आपको ITC नहीं मिलेगा. So ये part is for ITC. This part is for ITC.
दिस इज इन द मंथ ऑफ मे. इन द मंथ ऑफ मे कौन सा आईटीसी मिलेगा? ट्रक पे मिल जाएगा, टेम्पो पे मिल जाएगा, सॉरी, बट इस पे इंश्योरेंस पे नहीं मिलेगा. नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट. इन द मंथ ऑफ जुलाई, Mr. Raghav, a customer. So there is a customer and his name is Mr. Raghav. Filed a lawsuit in the court against the company for not supplying goods of the value of 1 lakh. PTL Private Limited engaged Mr. Ram, an advocate. Guys, उसने एक राम करके एडवोकेट को एंगेज किया फॉर लीगल सर्विसेज. PTL engaged Mr. Ram, an advocate, to represent it in court for an agreed consideration of 25,000. Now, I'm drawing the diagram here. Guys, I'm drawing the diagram here. There is Ram, who's providing legal services to PTL Private Limited. Supplier is this, recipient is this. RCM में आएगा if the, I'm looking at the questions. So when we know that seating capacity is about 13, we don't need to check GTA, SGST please, and employee or passengers are correct. Priyank, absolutely right. All right. But guys, this 13 and above should only be for motor cars. Airplane and vessels के लिए नहीं है, only for motor cars है. All right. Guys, again, Ram is providing these legal services, so they are the recipient. Check recipient, are they big? Are they a business entity or are they registered? I know they are a business entity. So hence RCM में tax लगेगा. Reverse charge mechanism section 9(3). अमाउंट बहुत छोटा है, 25,000 है. 25,000 पे गवर्नमेंट को टैक्स पीटीएल भरने वाली है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. As per the terms of contract, Mr. Ram issued an invoice on 5th July. However, consideration was not paid till February. Guys, यहाँ पे time of supply देखना पड़ेगा. Are you ready to do time of supply? Time of supply for services, section 13. This is RCM, so section 13(3). Shortcut. Recipient paying in 31 entry entirely. बट ये तो गुड्स के लिए था, तो सर्विस के लिए क्या है, आर निकाल दो, 31 का 61 कर दो. सो पेइंग in 61 entirely. Great, Nancy, perfect. Paying in 61 entirely. All right. So payment कब हुआ है? Let's put the date. Consideration was not paid till February. Guys, payment हुआ ही नहीं है अभी तक. Invoice कौन से डेट पे हुआ है? 5th July. 5th July से 61 days लेना है. Guys, 5th July से 61 days. I'm just taking a rough estimate here. 5th July से 61 days, तो पूरा जुलाई, then पूरा अगस्त, basically 2 months ahead. तो let's say 4th September. और डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एंट्री ऐसा कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पे, तो डेट ऑफ एंट्री भी नहीं है मेरे पास और पेमेंट भी नहीं है मेरे पास. So earlier of these three, the 4th September will be the time of supply. I hope you understood this, guys. It's not necessary they will give you all the details. Sometimes like entry is not given only, payment is not given only, but payment बोल दिया कि किया नहीं है अभी तक. All right. Are we ready for the questions? They are saying that all the amounts above are excluding taxes. मतलब ये 25,000, मतलब ये 12 लाख, इस सब पे टैक्स इंक्लूड नहीं है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड रेट्स आर वेरी सिंपल. CGST रेट 9% है, SGST रेट 9% है. For what? For all transactions which are intrastate. Tempo के लिए the rates are 14% and 14%. So tempo के लिए high rate है, तो only tempo के लिए high rate है. Let's look at the questions, guys, and let's really do well here. Do really well here. Please be with me while we do the questions. With respect to buy one get one offer, which of the following statements is true? It will not be considered a supply since there is no consideration. No. There is of course consideration. एक का तो पैसा भरोगे ना, and that price is actually for both. Supply of item for which consideration is charged is a supply under section 7 of GST Act
while supply of the other item free of cost is not a supply. This could be the answer. Let's see. These are two individual supplies where a single price is charged for the entire supply. That's right. Since a single price is charged, the same will always be taxed as a mixed supply. This could also be the right answer. These are two individual supplies where a single price is charged for the entire supply. Their taxability will depend on whether this is a supply, is a composite supply or a mixed supply. All right. Guys, are these naturally bundled? No, they are not naturally bundled. It's not like mobile and charger. मेरे को एक शर्ट के साथ दूसरा शर्ट पहनना जरूरी नहीं है. So they're not naturally bundled. So looks like the answer is C. These are two individual supplies where a single price is charged for the entire supply. That's right. And since a single price is charged, guys, the same will always be charged as a mixed supply. Always तो नहीं होगा, because always, this word always is puzzling me. It cannot be always, because sometimes it cannot be, it can be composite also. Let's look at the B answer again. Supply of item for which consideration is charged as a supply while the other is free of cost. No, ये वाला भी नहीं लग रहा है, right? I think the answer, I'm just going to read it once again. The first sentence is the same. Their taxability will depend upon whether the supply is a composite supply or a mixed supply. In this case, it looks like a mixed supply because it purposely mixed. It's not natural 10. So answer should be C. This always word is confusing me. Sometimes like mobile and charger, you pay one price for both mobile and charger. So it should not always अगर नहीं होता तो definitely this was the answer. But still, I think C will be the answer. We'll see it ahead. But looks like C is the answer. For this one, if it comes in MCQ, then you don't have to write any explanation. But if it comes in a descriptive kind of question, then you will have to give a reason. Let's check the answer, guys. I'm very curious to check the answer. 1 second. Is the answer also given here? Just let me check. Suggested answer 1 is D. 1 is D. So yes, because it is always, this is not the right answer. I had a doubt. Their taxability will depend whether its supply is a composite supply or mixed supply, but here it's a mixed supply. But yes, the taxation will depend upon whether it's composite or mixed supply. So answer is D. Let's look at the next one, guys. Excellent question. Excellent question. For the month of May, what is the eligible input tax credit on the first one and on the second? The first is a tempo traveler, 12 lakh, and वो इंट्रा-स्टेट है गाइस, वो इंट्रा-स्टेट है तो 14% and 14%. 12 lakh का 14%. If someone can tell me what is 12 lakh का 14% and put it in the chat box, please. And for health insurance, it should be nil. So for the second one, it should be nil. 168k and 168k. Thank you. So the answer, guys, is this one. Answer is B, because health insurance का कुछ नहीं मिलेगा. Thank you everyone. Health insurance का कुछ नहीं मिलेगा तो nil nil, and CGST SGST is 1,68,000 1,68,000. Absolutely the right answer. Next, which of the following statement is true in respect of services of advocate availed by the company? Guys, who has to pay the tax? PTL will have to pay the tax. CGST, let's calculate only. 25,000 है. And that is also intra-state. कैसे मैं assume नहीं कर रहा हूँ guys, यहाँ लिखा होगा, एग्जाम में लिखा होगा. यहाँ पे लिखा होगा ये इंट्रा-स्टेट है. 1 second. All right. So we are assuming otherwise. All right. Anyway, let's see. 25,000 है, उस पे 14% CGST, 14% SGST. Guys, can someone calculate 25?
1000 पे 14%, I think 2250 ही है. So 2250 is the right answer. Is payable by Mr. Ram? No, it's not payable by Mr. Ram. So जो payable by Mr. Ram है वो निकाल दो ऑप्शन में. So बचे दो options. CGST of 2250 and SGST of 2250 are payable by PTL Private Limited. ITC avail thereon is to be added to the output tax liability with interest as consideration along with tax if not paid within 180 days of the issuance of invoice. And next one is CGST and SGST on advocate services are payable by PTL Limited. The condition of payment of consideration along with tax of 180 days does not apply. Guys, I told you, you need to make payments within 180 days. But उसके तीन एक्सेप्शन थे. When कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो क्यों पे करना है, या मैंने अगर थर्ड पार्टी को पे कर दिया तो why I have to pay विजय सेल्स. एंड द थर्ड कंडीशन वाज अगर आरसीएम में मैं तुमको टैक्स भर रहा हूं तो why you concerned with विजय सेल्स को पैसा मिला या नहीं. एंड दिस इज आरसीएम, सो 180 डेज का ऑप्शन नहीं लगेगा. आंसर इज सी. नैन्सी सर आईजीएसटी होता तो एक ही रेट देते. यस आई एग्री नैन्सी, कंप्लीटली राइट. हियर सर 9% on 25k is 2250. 1 second, so let me see the rates guys. Rates क्या दी हुई है? Sorry, my bad. Rates are 9%, 9%. It's my bad. I calculated it. Tempo का rates लगा दिया, sorry मैंने. It should be 9%, 9%. All right. This is called the lag at the end of the day, but I'm really enjoying my lecture, guys. I really have a lot of fun here today. Rates are given and written that all transactions are intrastate. Good, Shivam, thank you so much. All transactions they have written are intrastate. Yes, guys, all transactions are intrastate. They have given it here. I told you they will give it here. Thank you, Shivam. Good observation. Very keen even at this hour. I really appreciate that. All right. Guys, please understand वो 180 days का condition नहीं लगेगा because this is RCM. RCM पे या अगर consideration नहीं है या third party को दे दिया है तो वो 180 days का नहीं लगेगा. That's the end of the first. That's the end of the first one. Let's go to the second sum. Everyone, all eyes, all attention on the second sum. Mr. Kumar started an interior designing practice. So here is Mr. Kumar. He's a supplier. What is he supplying? Services. इस सर्विसेज के लिए टर्नओवर या फिर 20 लाख होता है पूरे इंडिया में या फिर 4 स्टेट्स नो मगजमारी ऑफ टैक्स नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा 10 lakhs होता है. Just saying, I don't even know what the question is. His turnover up to the month of March was 12 lakh 50. On 30th June, his turnover exceeded 20 lakh and reached 20 lakh 5,000. Mr. Kumar applied for GST registration as a regular taxpayer on 15 July. Again, guys, when did he become liable? 30th June को the event occurred. कौन सा event? That crossing of 20 lakhs. So he became liable on 30th June. Within 30 days, he had to apply for registration. उसने कब apply किया? 15 July को. So he is within 30 days. Great. Registration was given to him on 25th July. थोड़ा late मिला. Actually 377 days में मिल जाता है. But effective date कौन सी होगी? 30th June. Because he has applied within 30 days. ये registration का है. Section 25 tells you this procedure. Let's see the question. अच्छा आगे भी है. आगे भी है. So till now we know the effective date is 30th June. All right. On 16th July, he entered into a contract for designing the flat of Mr. Sham. The service was completed on 22nd July and Mr. Kumar issued an invoice on the same day of rupees 6 lakh. All right. Just bifurcating it. Guys, this looks like a slightly complicated question. Be with me. We do it well. On 16th July, I'll have to go a little back and forth, unfortunately. Can I draw the diagram here only 1 second? Yes, this would be better.
Guys, on the 30th June, he became liable for registration. He applied for it on the 15th July, which is great, within 30 days. And he got the registration on 25th July. So this is the effective date. Now let's put the dates. On the 16th of July, so somewhere here, that is 16 July, he entered into a contract for designing the flat of Mr. Sham. The service was completed on 22nd July. मतलब बीच में, यहाँ पे बीच में एक सर्विस किया है उसने 6 लाख रुपीस का. Can he issue a tax invoice? No. But can he issue a revised tax invoice? Yes, he can. He can issue a revised tax invoice कब तक? 25th July से 30 days के अंदर अंदर. All right. Let's go ahead. On the 5th of July, Mr. Kumar purchased some capital goods amounting to 4,50,000. यहाँ पर 5th of July. He got some input. Input left hand side पे लिख लेते हैं guys. 5th of July को उसको कुछ input आया. क्या input लिया है उसने? Capital goods लिए हैं. कितने के? 4,50,000 के. I'll just write it well. On the 5th of July, he bought capital goods worth 4,50,000. And from 25th July to 31st July, so 4,50,000 का capital goods है, that's all. Next transaction. From 25th July to 31st July, he availed services amounting to 1,70,000 for the purpose of completing the service. मतलब एक और input है, एक और input है, वो कब है? From 25th July to 31st July. It does not matter. एक और input है, input मैं left hand side पे लिख रहा हूँ, और वो input क्या है? Service का input है of 1,75,000. Guys, दोनों inputs पे आपको credit मिल सकते हैं as long as you are using it for the purpose of business. You are registered. Yes, he is registered. He is using it for the purpose of business. तो आपको इस month में, जुलाई में शायद credit मिल सकते हैं इन दोनों चीजों के. Let's go ahead. The next month. Now guys, we are in August. The next month, Mr. Kumar got another contract for interior designing of Mr. Ram, which he accepted on 2nd of August. The service was completed on 6th of August and the invoice was issued on 7th of August for 5 lakh. Payment was received on 29th August. जब इतनी सारी details दी होती है, तो I definitely know it's time of supply. So August month में और कुछ हुआ है? August month का मैं यहाँ पे details डाल देता हूँ guys. ये क्या है? Interior designing है, तो it's service. Service is under section 13. And this is not FCM. Sorry, this is not RCM. This is FCM. तो 13.2. 13.2 बोलता है, if the invoice was issued on time, then invoice or payment, whichever is earlier. And the invoice was issued late, then provision or payment, whichever is earlier. Let's see invoice time पे है कि नहीं. 1st of August को कुमार को कॉन्ट्रैक्ट मिला था. 2nd of August को उसने एक्सेप्ट किया था. यूजलेस डेट, यूजलेस डेट्स, नो प्रॉब्लम. सर्विस कंप्लीट कब की थी? 6th of August. मतलब प्रोविजन का डेट क्या है? 6th August. एंड यू नो गाइस, सेक्शन 31(2) says कि 30 डेज में इनवॉइस इशू होना चाहिए. तो इनवॉइस कब तक इशू किया? टाइम पे हुआ है कि नहीं? इनवॉइस वाज इशूड ऑन 7th of August. तो परफेक्ट, इनवॉइस टाइम पे इशू किया है. तो इनवॉइस को देखेंगे या पेमेंट को देखेंगे, व्हिचएवर इज अर्ली. पेमेंट कब हुआ है? पेमेंट हुआ है 29th August को. किसके बुक्स में? वो सब अभी दिया नहीं है तो करेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं. सो प्रोविजन को हटा देंगे बिकॉज यू हैव टू इनवॉइस ऑन टाइम. सो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्ली. सो इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई इज 7th August. I hope this is clear. We've already solved the question before the questions have come in. I hope you're okay with the 7th of August. Let me know if any doubt here. All values are excluding taxes unless specifically mentioned. Mr. Kumar makes only intrastate outward supplies. यहाँ पर भी क्लैरिफाई कर दिया, सारे इंट्रास्टेट है, मतलब CGST SGST इक्वली लगेंगे. And all purchases are also intrastate. मतलब all transactions are intrastate. IGST आएगा ही नहीं. Rates of tax are 9%, 9%. In relation to the above, let's try and answer, guys. All ready for the answers? Please be with me.
In relation to the above, answer the following questions. The effective date of registration of Mr. Kumar. Guys, effective date कौन सी थी? 30th June. So effective date is 30th June. Answer is A. Mr. Sham can issue a revised invoice till which date? उसको जब registration मिला उसके 30 days के अंदर अंदर 30 days के अंदर अंदर guys, if you calculate from July, 30th day should be 23rd of August. One second. 26th July, so you have to calculate, sorry. So 30th day is 25th of August. So he can issue a revised tax invoice. Anyway, September तक तो जाएगा ही नहीं. If your exam में confused, don't try and calculate, guys. September तक तो definitely जाएगा नहीं 30 days. October तक भी नहीं जाएगा. So answer is D. Next. Eligible input tax credit available with Mr. Kumar for the month of July. Excellent. Guys, input tax के लिए दो है. जुलाई में, this month is July month. उसमें दो चीज ली है inputs. एक है कैपिटल गुड्स लिया है और एक सर्विस ली है. Can we calculate input tax credit? 4,50,000 पे 9%, 9%. Can someone help me with that? And 1,75,000 पे 1,75,000 पे also 9%, 9%. So this is 4,500. CGST is 4,500. And this is also 4,500. And 1,75,000 पे 15,750. Thank you so much. All right. 15,750, 15,750. Let's see. ऐसा कोई आंसर है क्या? Input tax credit available with Mr. Kumar for the month of July. All right. The answer isn't coming the right one. Let's see. कहाँ पे we are going wrong? One second. Guys, just one second. So he's taking capital goods and he's taking service inputs. तो service inputs पे तो definitely मिलेगा. For capital goods because नहीं दोनों पे मिलना चाहिए. So 4,500 plus 15,750 is 56,250. Perfect. So 56,250 and 56,250 we have the right answer. Nancy, दोनों पे मिलेगा because दोनों आपके registration date के बाद में है. Guys, what if अगर पहले होते तो Nancy your answer would have been right because पहले होते तो capital goods पे नहीं मिलता. But because registration date के बाद है, effective date के बाद है, तो दोनों पे मिलेंगे. All right. Let's look at the next one. The time of supply. We guessed the question right, guys. Time of supply क्या है? 7th August. If instead of opting for regular scheme, Mr. Kumar opts to pay tax under section 10(2)(a, guys, 10(2)(a वो मालूम है 3% वाला composition scheme for other than restaurant services, for other than traders and manufacturers, अगर वो scheme use करते हैं तो उनकी tax liability क्या होती? Please remember guys, ये scheme कौन use कर सकता है? Any service provider जिनकी लास्ट ईयर का aggregate turnover is not more than 50 lakhs. अगर ये opt करता, you cannot take ITC. You cannot take any ITC if you are using this method. And then जो भी तुम supply करोगे in the month of July, उस पे आपको 3% चार्ज करना पड़ेगा. तो जुलाई मंथ में क्या सप्लाई हुआ है? गाइस, जुलाई मंथ में आपने एक ही सर्विस सप्लाई की है 6 लाख की. 6 लाख पे 3% and 3%, which is 18,000 and 18,000 आपको आगे पे करना पड़ेगा आपके पॉकेट से. You can't even charge the customers this.
So answer is 18,000, 18,000. And guys, इसके conditions सुन लो. You cannot charge it to the customer. You cannot even claim ITC. All of them is gone. That's it. Then the next summary. Very, very tired. It's 7:04. Really tired, but we will still try and see how much ever we can. Oh, it's a long, too many of these things here. It's going till question number 15. All right, so what do we do now? Guys, I want suggestions from people. What do we do now? Because I am actually really exhausted for the day. Guys, what we could do is, if everyone agrees, I'm going to put a poll here for that. If you all want, we can do something which I'm pulling a poll for. Just 1 second. Just give me a second, guys. Um, I'm unable to put a poll here. So when RTP given case-based question, then in exam will definitely come. Please confirm. Rakesh, there is no case-based question. Tell me a please case-based question here. There is no case-based question here. So don't worry about that. CA final में पूछेंगे case-based question. I'm definitely 100% guaranteed case-based question at inter level नहीं आए. Alright, guys, my suggestion is I will record a session for exemption and I will give it out to y'all. I will post that link for the RTP, MTP. Try and do it on your own. I am confident because I can give it to you guys here. I can in fact upload the RTP and MTP here. I've converted it also. 1 second. Guys, in the handouts, please look at the handouts. I'm adding two more things here. 1 second. वो केस बेस अच्छा केस लॉ बेस नहीं केस बेस यस ऑफ कोर्स केस बेस आ सकता है राकेश आई थॉट केस लॉ बेस नहीं आता है ऑफ कोर्स केस मतलब दे विल गिव यू डिटेल्स एंड दे विल वांट यू टू आंसर इट्स नॉट केस बेस यस बट व्हाट्स द डिफरेंस इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन alright guys I've uploaded two more documents the MTP and the RTP have a look at them the answers are also given if you have any doubts you can always reach out to me and the amendment section sorry the exemption chapter and एक और chapter बच गया है payment का chapter those chapters I will try and record it and upload it if you get the time please have a look at it if you don't get the time then wherever you're studying from do it well from there so we've almost covered about 80-85 see exemptions is not the end of the world थोड़े important exemptions है वो मैं starting में record कर दूंगा वो listen to it and you can go for it don't worry exemption if you don't know and the rest 9-10 chapters if you know well you are good to go you will score really well so अगर exemption नहीं किया अभी तक don't pressurize yourself जो 5-6 main heads है like healthcare like entertainment and like education ये सब main जो heads है वो कर लो so whatever we've done over these 2 days are the subject to amendments or they were up to date Shiva most of the amendments were taken care of but what I would suggest you is now that we've done so much take an amendment sheet and just go through that amendment sheet so you will be able to do this really well now that we spent 2 days discussing all of it ज़्यादा changes नहीं है but amendment अगर है तो now it will register in your head even better also sir can we please get the recording of today's lecture yes today's lecture and yesterday's lecture recording will be available I will share the link with you guys so please tomorrow is the day when I will send a consolidated not tomorrow actually day after tomorrow is the day when I send consolidated link to all of y'all who've registered I have your email addresses and I will send a link to y'all for this purpose that's all the time that we have today unfortunately but guys we've done a lot we've covered almost about 9 chapters with questions with details with understanding and with shortcuts trust me you will go places if you do this really well amendments payment का chapter is a very small chapter वो तुम अभी भी कर सकते हो later on
Amendment का जो chapter है, my suggestion will be look at the 5 6 main amendment sectors and do those sectors and then forget it and go confidently in the exam. Unless you've done everything, don't try and do too many new things in this month. Revise what you already know and do really well of things you already know. Also, for another batch, which is based in Delhi, I'm doing a DT crash course as well in the next coming week. Again, that will be spread over 2 days in a similar matter. So let me know if you guys are interested. I will post about it on Instagram and on WhatsApp, and you can register for that as well. But that's not particularly for Bombay people, that's for a Delhi batch. But we could also join in that batch. Same way on GoToWebinar, we're going to have 2 sessions there. So let me know. I will post it online and you guys can register there. Guys, it's been good. Trust me, you guys know a lot of IDT already. 9 chapters completely killed. 10 chapter is payment. इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें बच गई है. Like someone had asked me about Rule 43 that we missed out on. I would probably do one more amendment on the construction companies. Now construction companies have got a better amendment. So there are some amendments. If you spend about 1 hour, 1.5 hour, and read those amendments, you'll be good to go and go for the exam. So you all are really, really good. Be confident and attempt the exam really well. If you have any doubts till your exam day also, guys, reach out to me, send me a voice note and I will reply back. You have my numbers, you have my contact details. And I assure you, only thing you should not do now is do too many new things. Whatever you've done, keep revising it. Thank you so much for that. Whatever you've done, keep revising it and you will be really, really good to go. At inter level, that's all that is needed. Revise again and again. Don't get into too many minor concepts which you don't understand. Don't start study them afresh. And from whatever I understood from the question, which was so many of them, I think you guys are really smart and you will go places. All the best. Thank you so much for this. And all of y'all, focus on what you know, revise, 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 and revise even more. I'm going to post about the DT lecture soon. And if you're interested, you all can also join for that crash course in case we don't reach the limit for the Delhi people. That's about it right now. Have a good night, guys. And I will share the links of these really soon. I've uploaded the RTP MTP converted into Word already in case you want to download it. Thank you so much and all the best. I'm ending it here. I'm ending it here. Thank you guys. Thank you so much for these messages. Yes, I will share the recording as well. Anytime and always. Thank you. Signing off right now. Thank you guys.